एजेंसी जो 50+ हो गए उनको भी और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अगर सांस ही सही नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत है आदमी को, ठीक है, क्योंकि उसी से जीवन चलता है, आदमी अपना उसी से स्वस्थ रहता है, फिट रहता है। तो थोड़ा गवर्नमेंट उसमें ध्यान देना चाहिए। अगर वो सही, अभी तो दिवाली आई भी नहीं, दिवाली आएगी तो अब कितना क्या बढ़ेगा प्रदूषण का स्तर, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार को अभी से इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। Switching tracks from work from home to work from jail. That's what the Aam Aadmi Party is saying, that if their chief of the party, Arvind Kejriwal, is arrested by the Enforcement Directorate in the liquor case, he will remain the chief minister and they will seek permission to hold cabinet meetings in a jail if needed, is what Delhi's minister Atashi had to say. She went on to say that the people of Delhi have elected him as the chief minister and he should remain the chief minister. Mr. Kejriwal was summoned for questioning by the Enforcement Directorate, which is probing the alleged money laundering angle in the liquor scam on the 2nd of November. He skipped that questioning and predicted that he would be arrested soon. He was earlier questioned by the CBI earlier this year in the month of April. Let's just listen in to what Atishi had to say. चाहे कितने दिन भी मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे, दिल्ली के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है, वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे। दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं देंगे। That was Atishi there saying that the people of Delhi have elected him as the chief minister and he'll continue to do so and be so even in jail. With that, we're sitting in a short break. Lots more coming up on the other side. फ्रेंड्स, इन दिस सेगमेंट मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं अबाउट योर गैजेट्स. यू नो, योर डिवाइस माइट बी एक्सपोज टू सम क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज, जिसके बाद में आपका डेटा, आपका इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करके रखा है उस फोन में, वो सब गलत हाथों में जा सकता है. अभी ऐसा ही कुछ हुआ व्हेन द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम फॉर इंडिया एक एडवाइजरी इशू करती है एंड वो बताती है कि मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड, टॉकिंग अबाउट एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 12L एंड साथ में एंड्रॉयड 13 भी, ये कुछ क्रिटिकल इश्यूज को पोज कर रहे हैं. देयर आर सम मेजर सिक्योरिटी फ्लॉज और इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि गूगल एक अपडेट इशू करेगा और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बाद में उस अपडेट को अपने अपने डिवाइसेस में पुश करेंगे एंड आपके पास जब वो अपडेट आए तो आपको उसे इंस्टॉल करना है. और आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके फ़ोन का जो डेटा है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने फ़ोन में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है वो कहीं गलत हाथों में चला जाए, कोई आपके फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल कर ले, कोई एक मलिशियस ऐप आपके फ़ोन में आ जाए. तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए द फर्स्ट स्टेप that you can do and you have to do is to update your devices. So make sure आज के बाद keep it like a regular habit. Once in a while, sometimes तो आपको notification खुद से मिल जाएगा, but if it doesn't come, once in a while, every 15-20 days, normally just check for updates for all your devices. For example, if you have a camera, अब आपने एक बार एक कैमरा खरीदा है जो 2 साल आपको हो चुके हैं उसको खरीदे हुए और आप 2 साल से इस कैमरा को यूज़ कर रहे हैं and you're just using it like normal, यू नेवर नो, क्या पता उसके लिए एक नया फर्मवेयर अवेलेबल हो जहाँ पे उस कैमरा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो गई हो या उसके अंदर कुछ नए फीचर्स मिल गए हो. इफ़ यू जस्ट कनेक्ट दैट कैमरा विद कंप्यूटर एंड वहाँ पे अगर आप चेक करते हैं फॉर अ न्यू सॉफ्टवेयर, हो सकता है आपको एक नया सॉफ्टवेयर मिल जाए और आपके कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड हो जाएं. सो जस्ट एज अ नॉर्मल हैबिट, do it with all your gadgets, once in a while, every 3 weeks, every 4 weeks, to make sure that you get the latest features. At the same time, you are completely saved from all these critical issues because आप ही को काम करना पड़ेगा, वो इंस्टॉलेशन का बटन आप ही को दबाना पड़ेगा. Nobody is going to do it for you. It's your gadgets and I mean you need to protect them yourself. A cup of hope, a cup of joy. Can India Welcome
back. Chief Minister Ashok Gehlot has filed his nomination papers from Sadarpur seat of the Jodhpur district on Monday. This is seen as a Congress stronghold, with Mr. Gehlot winning from the seat in all elections since 1998. He received 63% votes in the 2018 assembly elections. हमने एक बहुत अच्छा कैंपेन देखा था हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में, पूरी पार्टी साथ दिखाई देती थी। यहाँ पर होगा एक साथ सब सारे राजस्थान के नेता एक साथ एक मंच पर, एक ही नेता, सब एक मंच पर, आप और सचिन पायलट साथ सभी एक मंच पर है। वहाँ पे खड़गे जी भी हैं, वहाँ पे राहुल गांधी भी हैं, वहाँ सोनिया गांधी भी हैं। देखिए हमारे यहाँ सब एक मंच पर है। बीजेपी में बिखराव है, हमारे यहाँ नहीं है, वहाँ बिखराव है। विपक्ष में रह के चुनाव लड़ना आसान होता है या सत्ता में रह के चुनाव लड़ना आसान होता है? 18 में आप विपक्ष में थे तो आप चुनाव जीत गए, आपकी सरकार बन गया, मुख्यमंत्री बन गए। अब आप सत्ता में रह के चुनाव लड़ रहे हैं, और आप जब सत्ता में रह के चुनाव लड़े तो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है गहलोत साहब। आप ठीक कह रहे हो, पर एक ये भी देखना पड़ेगा आपको, इस बार जो है, इस बार माहौल दूसरा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ केरला का। केरला में 76 साल में लगातार एक बार लेफ्ट एक बार कांग्रेस जीतती आई है, उनका गठबंधन होता है। वो हमारे 30 साल की परंपरा चली पड़ी है, वह 76 साल थी। कोरोना के अंदर अच्छा काम किया सरकार ने, इस नाम से सरकार को रिपीट किया जनता ने, वहाँ की जनता ने इस बार केरला के अंदर। तो हमने तो केरला में काम अच्छा हुआ कोरोना का, हमारे यहाँ भी उससे कम नहीं हुआ, अच्छा हुआ। हमारा भीलवाड़ा मॉडल तो WHO तक पहुँच गया। जी, आपके तो एक बार खुद प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी। प्रधानमंत्री ने तारीफ उनको भी करनी पड़ी, WHO ने तारीफ करी, और हिंदुस्तान भर में तारीफ हो रही है। शानदार मैनेजमेंट किया, ऑक्सीजन ने किसी को मरने नहीं दिया, इलाज शानदार हुआ। और उसके अलावा जो 25 लाख बीमा हम लेके आए हैं, मान लीजिए हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं 5 लाख बीमा होता, वो भी 25% जनता के लिए होता है। हमारे यहाँ गरीब अमीर सबके लिए बीमा कर दिया राजस्थान के अंदर, एकमात्र राज्य राजस्थान है। राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हम लोगों ने। तो आप सोचिएगा कि हमारी जो स्कीमें हैं, एक के बढ़ एक, कई क्षेत्र में हम लोग नंबर 1 है। और तो आर्थिक विकास दर में देश के अंदर बड़े राज्यों में जो है नंबर 1 तो है आंध्र प्रदेश, और नंबर 2 राजस्थान है 11.04% GDP, और उत्तर भारत में नंबर 1 हम लोग हैं, राजस्थान है। तो हमने वित्तीय प्रबंधन करके दिखाया है, तब जाके 30 स्कीम लेके आ रहे हैं। महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ये राज्य जनता जो है वो कई बार मोदी जी को बोलती है तो कई बार आपको भी कहती है। देखिए, तो जनता तो जनार्दन है, उनकी बात सबको माननी पड़ती है। पर देखिए, इनकी जो मेन तो पेट्रोलियम समझ लीजिए आप, सेक्टर जो है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तब क्या रेट हो गई थी, 112 रुपये तक चली गई थी, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतें। तब तो समझ में आती थी कि भाई महंगा पेट्रोल डीजल है। इनके वक्त में आधा हो गया, उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, कम नहीं किया। और इंटरेस्टिंग बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जो एक्साइज ड्यूटी बेसिक होती है, उसमें हिस्सा राज्यों का होता है, उसको तो कर दिया जीरो के बराबर कर दिया, मैंने बहुत कम कर दिया। और एक नया लगा दिया स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस 3। उसमें हिस्सा राज्यों का नहीं होता है। लूट मचा रही इन लोगों ने, जनता समझती नहीं इन बातों को। तो समझाइए ना, चुनाव में समझा नहीं, बात है, ये समझाते हैं हम लोग। चुनाव में है, अभी समझाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में समझाते भी हैं, हमारा फर्ज बनता है। पर ये बताऊँ मैं आपको कि ये तमाम जो है उसमें हिस्सा नहीं होता राज्यों का, उसमें हिस्सा खाली केंद्र का होता है। तो पूरा केंद्र ले रही है रेवेन्यू, उससे अपना काम चला रही है। एक आखिरी सवाल, इसके बाद मैं जानता हूँ आपको वक्त ज़्यादा हो रहा है, अगले मुख्यमंत्री आप ही होंगे जीते तो? इसमें कोई शक मैं शुबा जब तो नहीं? शुरू में कह चुका आपको, मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ। मुझे पार्टी ने इतना विश्वास किया मुझ पर, और सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, उसके बाद पहला फैसला उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का किया था जी, 98। तो मुझे अगर विश्वास करके 98 में मुख्यमंत्री बनाया, तो मेरी ख्वाहिश तो ये रहेगी कि भाई 2 बार हम जिता नहीं पाए, चाहे मोदी जी की हवा चल गई हो एक बार, 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट का बदनामी करा के लोकपाल लेके आएंगे, अन्ना हजारे साहब को बैठा दिया,
सब काम इन्होंने किया, RSS बीजेपी ने किया उस वक्त में, और मोदी जी हवा चला दी, जीत गए वो, हम लोग हार गए बुरी तरह से। उसके पहले भी कुछ कारण ऐसे रहे कि मैं उन कारणों में नहीं रहना चाहता, पर उस वक्त भी शानदार हमने काम किया था। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि भाई सोनिया गांधी जी ने मुझ पर विश्वास किया पहली बार 98 के अंदर, तो आज कम से कम मैं एक बार उनको सरकार आके दिखा दूँ, बस ये मेरी ख्वाहिश है। विनिंग नोट पे जाना चाहते हैं आप? इसलिए मैं जो है चाहूँगा किसी भी तरह से मैं दिन रात काम करूँ, जो कुछ मैंने संभव था 5 साल मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मैंने कोरोना के वक्त में, 350 उसके अंदर खाली कोरोना के लिए थी, 500 ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और पूरे 200 MP MLA हमारे पार्टी में बीजेपी सब मिला करके सबसे मैंने 22 घंटे बात करी, धर्मगुरुओं से बात करी, एक्टिविस्ट से बात करी, NGO से बात करी। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, मेरा ये नारा था, और वही हुआ। मतलब तो मैंने बहुत बारीकी से उसकी मैनेजमेंट किया, ढूंढवाए लोगों को, जो ठेले वाले थे, ठेले बंद हो गए क्योंकि लोग लॉकडाउन में बंद थे, तो घर पे वो क्या खाएं। जो लोग रात दिन सो जाते हैं, स्टेशन पर सो जाते हैं, रन पे सम जाते हैं, ढूंढा के 35 लाख लोगों को उनको मैंने DBT करवाई, बैंक में खाते खुलवा करके। कलाकार तो घर में बैठे हुए, कला कौन देखे उनको 15,000 रुपये मैंने भेजे, तो हर एक चीज़ को मैंने खुद ने देखा उस वक्त में। तो आप बनेंगे ना मुख्यमंत्री? ये सब हाईकमांड और कांग्रेस विधायक दल तय करता है, और मुझे उसमें विश्वास है बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद NDTV से बात करने के लिए। Okay, so we're coming towards the end, और ये है मेरा फेवरेट सेक्शन, guys, you know about it. It's Ask TG, जहाँ पे आपके सवाल होते हैं, मैं जवाब देता हूँ। तो let's see इस हफ्ते हमारे पास में क्या क्या सवाल आए हैं, because I am ready with all my answers. Hi TG, which mobile brands should we buy to support PM Modi's Make in India initiative? Okay, I'll tell you something very honestly. Any phone in the market, when you see the label that it is made in India or assembled in India or something like that, go ahead, get it. That's my honest answer. आज अगर कोई फ़ोन बनता है इंडिया में, तो हम देखते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स इंडिया से आते हैं, कुछ कंपोनेंट्स इंडिया के बाहर से भी आते हैं, और हम विद टाइम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स इंडिया से आने शुरू हो जाएं. बट दिस नंबर is very difficult, you know, to go to 100%, because ये बहुत ज़्यादा मुश्किल एक प्रोडक्ट है जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स काम में आते हैं. Sometimes the protocol might not be supported. Sometimes this USB port is not sufficient to give you a display output. तो आप उस केस में Chromecast को यूज़ कर सकते हैं to cast your screen. I would say that would be an easier option. And if you can give more details about the exact model of tab that you're using, या फिर आप किस तरीके से रन करना चाह रहे हैं, I might give you some more insightful information. But as of now, I would say not all devices have the ports designed the same way. Sometimes the functionality is limited. तो आप ज़रूरी This is NDTV, and you're watching NDTV 24/7. Welcome, you're watching Good Morning India, and today the month-long assembly elections have begun with polling in Chhattisgarh and Mizoram. So the elections are underway, polling is underway, and this kickstarts the 5 state assembly elections. We'll be getting you all the details, and our reporters
will be bringing you all the latest from the ground, and they're spread out there across Chhattisgarh, where 20 seats are polling today, and in Mizoram. Let's take a look at the headlines we're tracking. A semi-final battle ahead of 2024 Chhattisgarh, the first phase of elections. Today, 20 of the 19 seats are polling, while Mizoram votes in a single phase. It's a multi-cornered contest in the northeastern state. The Mizoram Chief Minister Zoramthanga is the first to arrive at the polling booth to cast his vote, but fails to cast the vote due to EVM malfunctioning. He's going to cast his vote again after 9:30. In Chhattisgarh, one Jawan of the CRPF CoBRA Battalion injured in an IED blast triggered by Naxals. This is in Sukma. The Jawan was deployed for election duty. And a bold move by the Congress party in Telangana. Congress Chief Revant Reddy will contest against Chief Minister KCR from the Kamareddy Assembly constituency as the Congress released its third list last night. The Aam Aadmi Party says even if Chief Minister Arvind Kejriwal is arrested by the ED, he will remain the Chief Minister. They will even seek permission to hold cabinet meetings in jail. Finally, big measures announced for Delhi's air pollution crisis. The odd-even scheme will come into place, but after Diwali, and schools will be shut till the festival except for classes 10 and 12. And according to the Gaza Authority, the death toll has now crossed 10,000 there, while Israel leader Netanyahu finally says that Israel is open to a little pauses in the war. All right, so let's get you details as polling is underway in Mizoram and in Chhattisgarh. In Chhattisgarh, it's the first phase today with just 20 out of the 90 seats polling today. The second phase in 10 days, while in Northeast is Mizoram. All 40 seats go to the polls today. Let's go across to our reporters now for more. Sunil joins us from Chhattisgarh and Ratnadeep there from Mizoram. Sunil, first to you, there's already been a report of some violence this morning, and one Jawan of the CRPF was even injured in an IED blast. Any more such reports? And this is and the seats that are polling today are in the Maoist infested areas. That's right, Gargi, and where the Maoists have actually has made a very categorical statement that they must boycott the election process, appealing to polling people not to participate, to voters as well as political parties. But what we are getting from reports is so far there have been no incidents, and let's keep our fingers crossed at that. And voting has started. Much will depend because these are in far-flung areas, and these are extremely remote areas. Some places which I visited yesterday, extremely difficult to travel across the state because connectivity is a huge issue. Despite the fact that they have been affected, development hasn't taken place in those areas, and it's in that context that it's unfortunate that there has been an incident from the Chhattisgarh police, but so far I think there is a huge presence of paramilitary forces across those Maoist affected districts, nearly 12 of them. And voting has started at 7 o'clock, will end early at 3 p.m. To ensure that those who have participated are taken back to safety. So that entire process has definitely started, and right now I'm here in Rajnandgaon, where the former Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Dr. Raman Singh, is contesting. This will be for the 5th time. And he's definitely, hoping that he could be the Chief Minister again. There has been brisk polling here, and as you can see, the lines continue. I'm not going to ask them like I did the earlier bulletin, but definitely many of them are talking about the issue of development as well as various other concerns that they face that you have heard from the people themselves.
That's right, Sunil, and a lot of announcement of welfare measures by both parties. This is something the Congress has been doing, of course, and in Chhattisgarh we've also had these Modi guarantees that have been talked about ahead of elections. So both parties really playing up that aspect. That's right. This Modi guarantee is a big turnaround. In fact, the Prime Minister himself promising from Durg when he was campaigning to say that they will be extending for the 80 crore poorest of the poor, free ration scheme for another 5 years. These are, some of the concerns that people have been talking about, that when you're in, the fifth largest economy, and yet there are these social inequalities. And that's the reason why we saw in Chhattisgarh promises galore. And even though many people have been talking about freebies to be stopped, but there has definitely been clearly a focus amongst the people to seek for those benefits. So we saw the no less than the BJP make a turnaround and promise gas cylinders at 500 rupees. The fact that MSP will be 3,100, prompting the Congress to even better that to 3,200, promise free education to its citizens here, and the list goes. And ultimately, as you saw, many people really don't believe in these promises. They really actually look at what they feel is an important issue for them today as they go to vote. All right. Thanks so much for that, Sunil. We're also joined by Anurag, who's in South Bastar, near a polling station. On your way there, Anurag, tell us where you are and tell us also about, the key issues ahead of these elections. And in this particular area, in this phase where 20 seats are going to the polls and 12 of them in the, Naxal-affected areas. Gargi, you will be really jealous of me if I can show you the visuals of these green paddy fields, and my camera person, if we can just pan it down to the pond here. I'm on my way to Lohandiguda. Rizwan, bhai, if you can just pan the camera there and make Gargi jealous of where we are. And we are on our way to Lohandiguda, Gargi. Remember, this is the place where few years back, Congress made a poll promise that they will return back the land which was given to the mega steel plant of Tatas, and that was returned back to the tribals. And Congress made a poll promise about that. So we are on our way to Lohandiguda, which is also the ancestral village of the PCC chief Deepak Baj. So we will try and connect with Deepak Baj because he's supposed to, cast his poll vote there in Lohandiguda. So it is of very, in Chhattisgarh politics, it's of much importance, tribal areas and the land here, because now the Congress is also making an issue about this NMDC plant, which is in Nagar-Nar near Jagdalpur. And these people, you can see these people, these tribals, they are also going to cast their votes. The areas here a bit difficult to reach to the polling station. Somewhere the polling stations are 7 to 8 kilometers away from their village, so they're going all the way to cast their votes. And we will also be joined by the PCC chief few minutes later. Gargi? All right, Anurag, so we'll, leave you so you can make your way to the, polling booth and get the interviews from the leaders. But let's go across to Ratnadeep now for more. And Ratnadeep, we came to you right at the start of polling and we saw the Chief Minister Zoramthanga was there to cast his vote bright and early. He's all set to cast the first vote, but it seems the polling machine, it malfunctioned and he was unable to cast his vote. First, tell us about that. That's right. In fact, we are at the same polling station. This is Ramlung Primary Government School, and there are 3 polling booths. So one of the polling booths, Zoramthanga was the first person to turn up before 7 o'clock, and we did bring those visuals. And as he entered to cast his vote, the EVM malfunctioned. So he was told that it will take some time. So he excused himself and he has gone back to his official bungalow. And we are told that he would come here within a short time and cast his vote
vote. Now, clearly, right from the morning, you can see there was a huge turnout in these polling booths. Remember, the total electorate in Mizoram is not very much. There are only 8,57,000 voters, and in urban constituencies like this one, which is Aizawl North 3, each of the polling booths will have about only 2,000 voters or so. So therefore, people usually turn up in large number. You can see some senior citizens here. But we would also like to show you one important aspect of the Mizoram elections and the electioneering process, which is the involvement of the church even in the polling process. And they are the volunteers of the Mizo People's Forum. It is a church-backed election watchdog, and they have been monitoring the election process, the electioneering process. There were some ground rules set in terms of how the political parties will campaign, and all the political parties abided by them. And today here also their volunteers are here. They're helping the election commission to make sure that there is no crowding outside the polling station, that everybody gets a seat to seat and and cast their vote when their turn comes. We would like to talk to one of their volunteers here to understand how they actually function. Sir, if I can get your name. My name is Mr. Ruala. You are a member of the Mizo People's Forum. This is the local unit here. So tell us how you are an election watchdog. You keep oversee the election. So what were your duties during the campaigning, and now what is your duty? My duty is the people, voters will come here to cast vote peacefully, and no problem. This area, everything is peaceful. So to keep peacefully. So there you are, this gentleman who is a MPF volunteer, which is a church-backed election watchdog, clearly saying that their main mandate is to make sure that there are peaceful elections and people come out, they can peacefully vote. Remember, Mizoram is one of the most peaceful state, not only in Northeast but in the entire country. Ever since the Mizo Accord of the 80s, violence and insurgency had come down, but in 2003 the elections were marred by violence, and after that the church stepped in with the help of the civil society. They formed the Mizo People's Forum, which kind of controls how the campaigning would take place, and even the polling process, and even in the counting process their volunteers would be part of making sure that there is no violence. This is how they're helping the election commission conduct a very smooth, free and fair election in Mizoram, a kind of a model perhaps for other states in the country to follow. But talking about elections here, the polling process has been a bit rather slow, but that does not, we have seen people waiting for hours. In fact, here, sir, if I can speak to you, you have been waiting for a long time, but I did see, there is a lot of enthusiasm among people, and people are ready to wait and cast their vote. How important is this election for the people of Mizoram? For the election, for this selection of our representative, it's very important for the 5 years terms for our representative of these people. It's very important to us. And what you're looking forward to in terms of the issues that you have, or what should your new government do for you? What are the priorities? What should be their priorities? I don't know that. Okay. Are you a first-time voter? No, this is my second time. Voting second time. So did you follow the campaign of the political parties? Yeah. They were able to catch your imagination? Yeah, I hope so. And what do you hope, what kind of a new government you are looking forward to? Like corruption-free, who compromise our hope, all that. So there you are, a young voter, clearly saying that they need a corruption-free government, they need good governance. That has been the moot point of the people we have spoken to. In fact, you can see here one of the lady volunteer of MPF, showing the way which side the voters should go. So this is a very interesting way how
the polling process is also overseen by the church-backed body. This just goes to show the significance and the importance of church in Mizoram politics, and how what the church kind of wants, or how the church influences the influence of the church becomes a major factor in every election. That's right. Thanks so much, Ratnadi, for joining us there and, getting us all those voices as well. And hopefully the Chief Minister, Zoramthanga, is going to be able to cast his vote after 9:30, given that he was there bright and early, yet the machine malfunctioned. Well, now to talk more about the elections, as this month of elections, of assembly elections, has begun today. We're joined now by Amitabh Tiwari, political strategist and commentator, and Madhavan Narayanan, a senior journalist. Thank you so much both for joining us. Amitabh Tiwari, first let's talk about Chhattisgarh and 20 seats going to the polls today. The Congress has been fairly, optimistic ahead of elections, and they've been quite, their faith there in their very energetic Chief Minister Bhupesh Baghel. Yeah, so of these 20 seats which are going to polls, the Congress had won 17 in 2008. So it had swept. 12 seats are from the southern region, the Bastar region, which is Naxalism affected, and 8 seats are from the central region, where also the BJP had led. Now, in the southern region is a Congress stronghold, because Congress had won this even in 2013 when it had lost the elections to BJP. 11 of the 12 seats in the southern region are ST reserved seats, and the Adivasis have been backing the Congress here for a long time now. Now, this time the issues could be comeback of nationalism, because we've seen some incident already happening there. Religious conversion, a natural anti-incumbency. So BJP needs to make some gains here if it wants to make the contest close. Now, if we see, woman voter is the X factor in Chhattisgarh, because the women voter outnumber men. The women turn up in more numbers than men. And Chhattisgarh is the state which has the highest number of women MLAs in the country. Both the parties have given 15% tickets each to women in Chhattisgarh. So this is going to be a fascinating contest where BJP would want to make some gains, because it had lost big time last time in 2018. Right, and Congress hoping to retain that, tribal vote in these areas. And Amitabh Tiwari also, what we were discussing with the reporters, there is this, competitive promises being made to the electorate, while the BJP initially, has hit out at this ravery politics, as they call it. Now you do have the Prime Minister's guarantees, Modi's guarantees that are being talked about ahead of the Chhattisgarh elections. Some would say you can't help it in assembly polls. That is the way to go. Yeah, see, so it is also a manifesto versus manifesto. It's also a battle of the state Labhartis versus the central government Labhartis. So BJP is hoping that the central government Labhartis would back the BJP in a state election. That rarely happens. Now, farmers are the most important voters in Chhattisgarh, because the lives of 80% population depend on them. And Bhupesh Baghel's policies of bonus on paddy procurement, farm loan waivers, and free electricity have been a hit with the populace. That's why we see the BJP coming up with a 3,100 rupee per quintal procurement of paddy, 10,000 rupees per year for agricultural laborers. But a rupee received today is much more valuable than a rupee received or will be received in future, because it comes with star terms and conditions, risks and uncertainties. So somehow the Congress has been able to come up with schemes which have impacted positively the lives of the farmers, which could be the kingmakers in the rest of the regions when they come to polls. Right. Madhavan Narayanan, your comments first on Chhattisgarh, elections. The Congress has this seen as a younger, energetic Chief Minister in Bhupesh Baghel, and, they're quite confident of, repeating the government here. Yes, Gargi, I think Amitabh has pretty much laid out some of the details, granularity in the whole election. But let me give you the bigger picture so that we really understand what's going on. The BJP's traditional planks of national security or Hindutva do not run at all in Chhattisgarh, because the minority population, including both Muslims and Christians, is less than 4%. The Congress has always had a strong
play wherever there is a strong pluralistic narrative in which tribals play a major role. So 30% of Chhattisgarh is tribals, and therefore to that extent that is important. Also, we need to remember that, although your correspondent was going gaga over the greens of the paddy fields, Chhattisgarh is also the red zone, not just because of the Naxalites, but also because it has had issues related to mining and exploitation of minerals, and whether big business gets the share of the minerals. What does it mean for forested areas where community rights of lands are being encroached upon? All these are areas in which the Congress has historically played a stronger role from the left side of the political spectrum, wooing the Adivasis. To that, if you add the fact that a bulk of the farmers that Amitabh spoke about are small and marginal farmers, there is a natural economic bias there towards the Congress. The important point to remember is that, although Prime Minister spoke against freebies or raveries, as he called them, he's also the coiner of the term Labharti into the Indian political lexicon. So there is a lot of self-contradiction in this kind of narrative. But the important thing to remember is that Chhattisgarh politics is about social and economic issues in which caste census has been added as a sauce to the entire chaat masala that is already there. So the important thing is, it is an economically focused elections in which Bhupesh Baghel has a strong incumbent advantage because he's been going broke on economic populism. So populism, it is handout versus handout. And therefore, we'll have to see whether there is an anti-incumbency mood or, and the last but not the least, let me mention the Mahadev app related that scandal. was going to be my next question. And Anurag, when you're talking about tribal, issues and projects, he did speak about that as well, how there was a promise last time around against the Tata project and the land would be returned to the tribals. But yes, let's talk about the Mahadev app controversy and the ED case. And how do you think, as is having any sort of resonance with the electorate? We've had the opposition leaders and chief ministers all hitting out over ED action. Yeah, I think it's important to remember that this came, strangely enough, it's too much of a coincidence to believe that the Enforcement Directorate would hit on this issue just with 4 days to go before the polling. Therefore, there is a certain strong political flavor in which there is no judiciary involved. So it's all about trying to swing the fence sitters to see if the BJP can come to closer to the voters on that front. I am sitting far away. I don't think it, but it really matters. But it's important to remember that Bhupesh Baghel is also talking about coal mining related irregularities in which the BJP is the target. And in fact, I was joking somewhere that Dr. Raman Singh, who's also former chief minister, and Bhupesh Baghel, even they look alike and talk alike in many ways, although they are in opposing parties. They even dress alike. So it's going to be a 19-20 ka election from the issues point of view. But if there is a silent wave somewhere, which is a part and parcel of Indian politics, which I've covered for decades, it's different. But waves tend to be anti-incumbency, but there is absolutely no sign of any anti-incumbency wave in Chhattisgarh. All right, that's interesting. And in let's talk about Mizoram as well. And there, Zoramthanga is going to be hoping that there's no anti-incumbency there. And that state has anyway always had this 10 years. They keep voting back their government. So twice, that's what they'd be hoping on. But it's very interesting. It's a multi-cornered contest, as they say. You have the Zoram People's Movement, this young party. The Congress is hoping to do better. This was their last bastion. And you've got the Aam Aadmi Party also in the fray. So Madhavan Narayanan, first to you, your comments. Well, I think the important elephant in the room is that increased tribal awakening in the northeast, and Manipur has sneezed and therefore Mizoram has caught a cold. Therefore, what is happening is that people are aware of local tribal rivalries and tribal displacement, and there are issues related to, Myanmar is also playing a role, because in Myanmar also tribals have been, affected by the rise of the military government, and Manipur and Mizoram are close to the border, and the Kuki-Mite violence that has happened in Manipur has sent a signal that tribals have to guard their rights very carefully. And since there has been a narrative that Mite support from the central government means
Hindutva is making inroads into the northeast, which is predominantly tribal in orientation with a dash of Christianity. In fact, Rajiv Gandhi, when he was a prime minister, signed the peace accord with Mizoram, Laltenga, but at that time he was accused of playing pro-Christian politics by the BJP, and therefore the religious divides do form a part of the politics. But the overwhelming thing to note are two things. The youths are waking up to their own identity, and tribal identity is being zealously guarded in so many ways. And therefore, regional parties are emerging as a major force. Earlier, there used to be regional chieftains being endorsed by the BJP or Congress. Right. Now they've got a certain, what I call a political sovereignty of their own, where they, last week's remark by the current chief minister, Zoram that he would like to distance himself from the BJP in some way is very significant, because earlier there used to be the rubber stamp tribal leaders. Now the tribal leaders are no longer. What happens after the election results is also something where, we again see. Northeast has always been a place for horse trading of some kind or the other. Absolutely, with a lot of, unfortunately, that's with an alphabet soup of that's something that we groups. have seen. And, the Congress has been making much of the fact the Prime Minister didn't go and campaign there. But yes, Amitabh Tiwari, your comments on the elections in Mizoram. See, there is some natural anti-incumbency against the MNF, but there is also likely to be a division of votes, as Madhavji has said, between the ZPM and the Congress-led alliance. So while there are tribal rivalries, ethnic rivalries, there is also this Hindu versus Christianity element which has entered the contest in Mizoram, but the Hindus are in a minority there. The part which you mentioned about the small base of the voter base, it's only 21,300 per assembly is the vote base, and 20 out of 40 seats in 2018 were decided on a victory margin of less than 1,000 votes. So it's a very close election. It can go any way. Post-poll alignments are going to be the key, as most of the surveys are saying that the assembly could be a hung situation, and there is where the Congress might see a hope, because it seems very difficult for the Congress and the MNF, which have been at loggerheads or the main players for so many years, to form a post-poll alliance, more so when MNF is part of the NDA. The BJP has no stake, and with the MNF also saying clearly that they won't be sharing a stage with the Prime Minister if he comes to do campaigning, the BJP has chosen to stay away. However, both are contesting. BJP is also contesting separately. On some 22 seats, yes. On 23 seats, but BJP is not in play, and it would not want a Congress-led government to be installed in Mizoram like in Telangana. Because see, the narrative of the entire election of these 5 states is Congress is today in power in 2 states and BJP in 1. Now the Congress needs to win 3 states to create a mahal or an environment in its favor, and it sees Mizoram as one of them. But the third party is likely to spoil its chances. All right, when we talk about the semi-final, as we in the media have been portraying these assembly elections, well, thank you. I'm out of time. Thank you so much, Amitabh Tiwari and Madhav Narayanan, for joining us on the program. And we'll continue to bring you all the very latest as elections are taking place in Chhattisgarh, the first phase of polling underway, and in Mizoram. Do stay with us. घर पे जाके तुम गूगल कर लो, मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो. दिस इज समथिंग दैट वी डू ऑन अ डेली बेसिस. मतलब हम सभी गूगल यूज करते हैं, हम सभी विकिपीडिया पे यूज करते हैं, बट डिड यू नो कि गूगल एक्चुअल में गूगल नहीं होना चाहिए था, वो होता गूगल. वहां से एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से गूगल बन गया. अब हुआ ये जब स्टार्ट हुआ पूरा गूगल का आइडिया, आई टोल्ड यू पहले के एपिसोड में दैट द फर्स्ट नेम वाज बैकरब. अब बैकरब से नाम जब चेंज करना था तो द फाउंडर्स ऑफ गूगल, लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू टर्म, और उनको एक टर्म मिलती है गूगल. गूगल का मतलब क्या होता है इन मैथमेटिक्स? इट्स 1 नंबर 1 फॉलोड बाय
100 zeros. तो आइडिया ये था कि अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम एक साथ दिखाने वाले हैं, इट क्लियरली सिग्निफाइज द वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. तो वहां से दिमाग में वर्ड आ गया गूगल. लेकिन जब डोमेन खरीदने गए तो उस टाइम पे गलती से GOOGOL की जगह GLE टाइप हो गया और वहां से बना गूगल, जो आज हम सभी डेली बेसिस पे यूज करते हैं. बट डिड यू नो it was a spelling mistake that ended us with Google. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right and center. Conversations that get to the core of the debate. And there's too much talking but very little being said. Too many voices but hardly any being heard. You turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. From breaking news to in-depth analysis. Covering the latest developments across politics, business and technology. Bringing you stories that shape our nation and the world. अक्सर ऐसा होता है कि आपके फोन के स्क्रीन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. मे बी यू आर ऑन अ वेब पेज, या मे बी यू आर रीडिंग अ बुक लेट्स से, या अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, कई बार बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. समटाइम्स इट्स दिस लेजी फीलिंग, या समटाइम्स इट्स मोर कन्वीनियंट कि अगर कोई आपको वो सब चीज़ें पढ़ के सुना दे. लेट मी गिव यू अ टेक टिप. आपके फ़ोन में एक इनबिल्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू स्पीच का. Either you are using Android or iOS, फर्क नहीं पड़ता. Welcome back. Let's get you the latest from Telangana. An interesting development. The Congress on Monday night has fielded its Lok Sabha MP and Telangana Chief A. Revant Reddy against Chief Minister and BRS Supremo KCR. The Congress move to field Reddy, a firebrand leader, is seen as a bold move to send a strong message to the electorate about the party's stand against the BRS. Telangana Congress Chief Revant Reddy otherwise filed his nomination papers today from Kodangal. But he has been saying, and yes, the Congress has been saying that he is going to be taking on the Chief Minister KCR in Kamareddy. KCR himself has, in fact, his original seat is Gajwel, where he is being challenged by BJP leader Itela Rajender, who happened to have been working as minister in KCR's cabinet and was moved away and subsequently won by-election in Huzurabad. He is going to be challenging the chief minister as a second seat in Gajwel. So you have these top heavy, these leaders, the top leaders, whether it is KCR or Revant Reddy, the Congress chief, or Itela Rajender, who is a big leader of the BJP, all of them fighting in 2 seats, and KCR facing challenge from top leaders in both Gajwel as well as Kamareddy. So the third list has other interesting highlights. What I must point out is that the Congress was meant to have talks with both the CPI and the CPM and try to get some seat adjustments so that they don't split the anti-incumbency vote. But those talks did not seem to go very well. The CPM had in fact gone ahead and announced its own list of candidates. But this evening, after filing his nomination, Revant Reddy went to the CPI office and had talks, and subsequently it is now understood that possibly they'll be giving them one Kottagudem seat and also allow them to and also promise them 2 MLC seats after the election. So in that sense, that anti-incumbency is taken care of, splitting the anti-incumbency. But 2 other names which are announced for Vanaparthi and Boath, those names have Mohammad Shabir, otherwise from Kamareddy, is now being fielded from Nizamabad Urban. Thank you, Uma, for getting us all those details. Telangana's Congress chief pitted against the chief minister there. With that, we'll sit a short break. Lots more coming up on the other side. This show isn't just about news from the southern states. It's one that looks at the rest of India and the world from a diverse South India point of view, because NDTV has always taken the southern view seriously. The Southern View with Veera Raghav, only on NDTV 24/7.
NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. Technology तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे हर रोज हर हफ्ते अब आपके और पास. Go beyond the now. When it comes to sports, we set the ball rolling. Because we have our eyes on the ball. Because we want to get you the best. Latest updates, top interviews, and analysis from around the globe. Election in 5 states, 679 seats, over 16 crore voters. A crucial semi-final before 2024. NDTV brings you the politics, the promises, the stories and backstories, every twist and turn of 5 high-stake battles. When it comes to elections, India trusts NDTV. फ्रेंड्स, इन दिस सेगमेंट मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं अबाउट योर गैजेट्स. यू नो, योर डिवाइस माइट बी एक्सपोज टू सम क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज जिसके बाद में आपका डेटा, आपका इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करके रखा है उस फोन में, वो सब गलत हाथों में जा सकता है. अभी ऐसा ही कुछ हुआ व्हेन द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम फॉर इंडिया एक एडवाइजरी इशू करती है एंड वो बताती है कि मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड. Welcome back. Let's get you a check on the pollution levels here in the national capital. They are on a rise, but there's been a tad bit of an improvement this morning. However, Delhi's Environment Minister Gopal Rai has said that the odd-even formula will start to take place as far as Delhi is concerned. It will be implemented from the 13th of November to the 20th of November to curb the pollution problem. This is the 4th time that the odd-even formula is being implemented in Delhi, but it's the first since 2019. Does it really work? Has it really worked in the past? Well, according to reports, the odd-even formula hasn't worked so far. Now, the need to extend that odd-even formula beyond the 20th of November will be reviewed according to the Environment Minister Gopal Rai. That will be reviewed later. The overall air quality remained in the critical category on Monday itself with 471 points as far as the AQI levels are concerned. But this morning we've seen some improvement there where the air quality is just under 400 points. However, various areas of Delhi, 18 stations out of the 35 stations here in the national capital have reported pollution in the severe category or above 400 points. Now, Delhi government orders all school classes except classes 10 and 12 that are preparing for their board exams, except for those, every other class will be held online till the 10th of November. In view of the GRAP Stage 4 measures that are being implemented in order to tackle the pollution problem, under the final stage of the pollution control plan, the state government has announced a work-from-home policy for 50% of the government staff till the next orders. MCD has deployed 52 mechanical road sweepers to carry out sweeping. Their frequency and timings have also increased. 225 water sprinklers as well as 20 anti-smog guns. All these measures have been in place over the last few days, but restrictions of stage 1, 2 and 3 that continue even now. Additional measures have now kicked in. Those includes construction and demolition activities have been banned for now. That includes roads as well as bridges and power lines. The entry of vehicles are restricted. Only CNG, electric and BS6 compliant vehicles from other states will be allowed into Delhi. When we talk about Gurugram, they've also suspended classes from nursery to 5. When it comes to Faridabad, there 2 children from class 1 to 5 from today, the classes have been shut. There were about 17,000 incidents when it came to the Parali burning or the farm fires burning as far as the state of Punjab is concerned in a matter of a month. Out of which, in the last 8 days, we've seen more than 13,000 incidents of farm fires taking place in the last 1 week alone. Let's just get you some of the voices and how people are reacting to the pollution problem.
यहाँ पे आजकल पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि काम काज में भी दिक्कत हो रहा है और बच्चों के स्कूल्स में बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पहले 1 से 5 तक का स्कूल को बैन किया, उसके बाद अब 6 से 10 तक का स्कूल को बंद किया। और मैं स्कूल में ही जॉब करती हूँ तो मेरे को तो बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि स्कूल बंद है तो हमारी सैलरी नहीं मिलेगी और पॉल्यूशन इतनी बढ़ती जा रही है। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और दिल्ली में तो ऐसे ही पॉल्यूशन हर दिन ज़्यादा होता है और इस पॉल्यूशन की वजह से तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। गवर्नमेंट को जो है, कोर्ट को जो है ऑर्डर देना चाहिए, मतलब जो खेतों में जो पालियाँ जला रहे हैं उसके वजह से दिल्ली NCR में जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि पाली ना जलाए या उन पर जुर्माना लगाएं। तो ये तो सरकार की मजबूरी है ना ऑर्डिनेंस 1 करना। अगर पोल्यूशन ना हो तो ऑर्डिनेंस 1 की जरूरत ही ना पड़े। जैसे कि जिनके पास एक गाड़ी है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है उनको दिक्कत आएगी, या ऑफिस जाना है उनको दिक्कत आएगी। हम लोग रोज़ सुबह सुबह वॉकिंग करते हैं लेकिन इतना दिक्कत हो रहा है वॉकिंग मतलब टहलने में कि सांस लेने में, सांस छोड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसमें थोड़ा गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट हो या मोदी जी हो या केंद्र में जो भी बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं, सब लोग दिल्ली में रह रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चलो अभी तो हम लोग यंग लोग हैं, जो गार्जियन लोग हैं, गार्जियनशिप जो 50+ हो गए उनको भी और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अगर सांस ही सही नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत है आदमी को, ठीक है, क्योंकि उसी से जीवन चलता है, आदमी अपना उसी से स्वस्थ रहता है, फिट रहता है। तो थोड़ा गवर्नमेंट उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो सही, अभी तो दिवाली आई भी नहीं, दिवाली आएगी तो अब कितना क्या बढ़ेगा प्रदूषण का स्तर, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार को अभी से इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। Switching tracks from work from home to work from jail. That's what the Aam Aadmi Party is saying. Even if Arvind Kejriwal, their chief and the Chief Minister of Delhi is arrested by the Enforcement Directorate in the liquor case, he will remain the Chief Minister and they will seek permission to even hold cabinet meetings in the confines of jail if needed, is what Delhi's Minister Atashi had to say. She says Mr. Kejriwal was summoned for questioning. He has been the Chief Minister of Delhi. He's been elected by the people and he'll remain our Chief Minister. Let's just listen in to Atishi. चाहे कितने दिन भी मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे, दिल्ली के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है, वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे। दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं देंगे। Well, switching tracks now to Karnataka and the shocking murder of senior geologist in Bengaluru. The Bengaluru police have arrested a driver for the murder of the Karnataka government officer who was found dead at her residence. The driver, an on-contract government employee for the past 5 years, has confessed. He said he killed her because she had sacked him 10 days ago. She was stabbed to death while her husband and son were away to Shivamoga. The murder of a senior geologist in Bengaluru has sent shockwaves throughout Karnataka. Pratima KS, who was recently promoted as the Deputy Director of Geology and Mines Department of Karnataka, was found with her throat slit on Sunday morning. The cops formed 3 investigation teams and recorded an arrest on Monday, her former driver Kiran. One person who worked as a driver with her previously and who was removed from work last couple of months ago might be the person who traced the accused at Malay Mahadeshwar Betta in Chamarajnagar limits, from where he was brought. On being questioned, he had agreed, he had confessed to having murdered the person. For now, this is what has come out. Any new thing that comes out also, we'll definitely look into that. With no forced entry, no screams heard by neighbors, no valuables stolen, the needle of suspicion pointed to a known assailant. But what could have motivated Kiran to commit the crime, and why was he fired by Pratima? 32-year-old Kiran worked as a contract driver in the same department for 8 years. Kiran was working as Pratima's official driver for the last 4 years. He was sacked 2 months ago for divulging details of her movement to quarry owners. He was allegedly paid to give details of Pratima's movements. Pratima had complained about the driver to her higher authorities.
Given the high-profile nature of the case, the question is, was he acting alone? Police are investigating if there was a larger conspiracy. Kiran had reportedly waited for Pratima to return from work, and he claims that he came into her house and begged her to reinstate him. When she refused, he claims he killed her in a fit of rage with a weapon that was in the house. As per police sources, we hear that the prime accused Kiran was mentally disturbed after having lost his job and ran into frequent fights with his family members due to financial instability. We also hear that the police tracked Kiran's whereabouts through the mobile signal and finally zeroed in on him to find out that he could have perhaps led to Pratima's death. With camera person Govind, Pratibha Raman in Bengaluru for NDTV. Switching tracks to Nepal, the Nepal earthquake has taken many lives, and NDTV's Tanish Punjabi and Rajesh Gupta have gone to take stock of the situation from the epicenter and report on the human cost of this tragedy. Heartbreaking stories of death and despair deep inside Jajarkot, the epicenter of the Nepal earthquake that took over 150 lives. In the Rawat village of Jajarkot, houses lay in ruins. People clearing this rubble told NDTV that 6 family members living in this house died on the night of the earthquake. Urmila lost 2 of her children. Like Urmila, 6 members of Hasti Kumari's family died on one single night, the night of the earthquake. 5 of them were children. बीच में बहू सोए थे बच्चे के साथ एक बार मैंने उनको मादमा सारमा छोरा 4 जना म उतापट्टि 3 बाँच्यौं 2 गइन् 5 पछाडी कोठामा सुत्या थियौं हामी केही थाहा छैन. The Behri Nadi, which flows alongside the whole Jajarkot area, is a testament of this whole tragedy and is carrying the tears of those who lost their loved ones. With camera person Rajesh Gupta, Tanish Punjabi for NDTV. Thank you, Tanish, for getting us that report. But that was leaving into a very short break. News and updates will continue on the other side. A cup of hope. A cup of joy. Can India lift it at home after 12 years? We will follow their journey through the length and breadth of the country. Through every twists and turns. On Turning Point, on NDTV 24/7. Okay, so we're coming towards the end और ये है मेरा favorite section, guys. You know about it. It's Ask TG, जहाँ पे आपके सवाल होते हैं, मैं जवाब देता हूँ. तो let's see इस हफ्ते हमारे पास में क्या-क्या सवाल आए हैं, because I am ready with all my answers. Hi TG, which mobile brands should we buy to support PM Modi's Make in India initiative? Okay, I'll tell you something very honestly. Any phone in the market, when you see the label that it is made in India or assembled in India or something like that, go ahead, get it. That's my honest answer. आज अगर कोई फ़ोन बनता है इंडिया में तो हम देखते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स इंडिया से आते हैं, कुछ कंपोनेंट्स इंडिया के बाहर से भी आते हैं और हम विद टाइम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स इंडिया से आने शुरू हो जाएं. बट दिस नंबर
is very difficult, to go to 100% because ये बहुत ज़्यादा मुश्किल एक product है जहाँ पे बहुत सारे components काम में आते हैं. Sometimes the protocol might not be supported. Sometimes this USB port is not sufficient to give you a display output. तो आप उस केस में Chromecast को यूज़ कर सकते हैं to cast your screen. I would say that would be an easier option. And if you can give more details about the exact model of tab that you are using या फिर आप किस तरीके से रन करना चाह रहे हैं, I might give you some more self information. But as of now, I would say not all devices have the ports designed the same way. Sometimes the functionality is limited. तो आप ज़रूरी नहीं है कि उस displays का output ले पाएँ बाहर. You can use a wireless solution that way. Hi, Technical Guruji. Is there any way at all to track my kids' smartphone usage? Yes, very easy and it's very important as well. आपको ये काम करना चाहिए. Any phone, iPhone हो या Android phone हो, सभी में आपको screen time का option मिल जाता है. अलग-अलग नाम से आपको मिलेगा. But yes. Welcome back. News from Rajasthan, and Chief Minister Ashok Gehlot has filed his nomination from Sardarpura Assembly constituency for the upcoming assembly elections in Rajasthan. Sardarpura is seen as a Congress stronghold, with Mr. Gehlot winning from the seat in all elections since 1998. He received 63% votes in the assembly elections held in 2018. हमने एक बहुत अच्छा कैंपेन देखा था हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में. पूरी पार्टी साथ दिखाई देती थी. यहाँ पर होगा एक साथ सब सारे राजस्थान के नेता एक साथ एक मंच पर. एक ही नेता, सब एक मंच पर. आप और सचिन पायलट साथ सभी एक मंच पर है. वहाँ पे खड़गे जी भी हैं, वहाँ पे राहुल गांधी भी हैं, वहाँ सोनिया गांधी भी हैं. देखिए हमारे यहाँ सब एक मंच पर है. बीजेपी में बिखराव है, हमारे यहाँ नहीं है. वहाँ बिखराव है. विपक्ष में रह के चुनाव लड़ना आसान होता है या सत्ता में रह के चुनाव लड़ना आसान होता है? 18 में आप विपक्ष में थे तो आप चुनाव जीत गए, आपकी सरकार बन गई, आप मुख्यमंत्री बन गए. अब आप सत्ता में रह के चुनाव लड़ रहे हैं और आप जब सत्ता में रह के चुनाव लड़े तो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है गहलोत साहब. आप ठीक कह रहे हो, पर एक ये भी देखना पड़ेगा आपको. इस बार जो है, इस बार माहौल दूसरा है. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ केरला का. केरला में 76 साल में लगातार एक बार लेफ्ट एक बार कांग्रेस जीतती आई है. उनका गठबंधन होता है. वो हमारे 30 साल परंपरा चली पड़ी है. वह 76 साल थी. कोरोना के अंदर अच्छा काम किया सरकार ने. इस नाम से सरकार को रिपीट किया जनता ने, वहाँ की जनता ने इस बार केरला के अंदर. तो हमने तो केरला में काम अच्छा हुआ कोरोना का. हमारे यहाँ भी उससे कम नहीं हुआ, अच्छा हुआ. हमारा भीलवाड़ा मॉडल तो WHO तक पहुँच गया. जी, आपके तो एक बार खुद प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी. प्रधानमंत्री ने तारीफ उनको भी करनी पड़ी, WHO ने तारीफ करी और हिंदुस्तान भर में तारीफ हो रही है. शानदार मैनेजमेंट किया, ऑक्सीजन ने किसी को मरने नहीं दिया, इलाज शानदार हुआ. और उसके अलावा जो 25 लाख बीमा हम लेके आए हैं, मान लीजिए हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं 5 लाख बीमा होता, वो भी 25 मिनट जनता के लिए होता है. हमारे यहाँ गरीब अमीर सबके लिए बीमा कर दिया राजस्थान के अंदर. एकमात्र राज्य राजस्थान है. राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हम लोगों ने. तो आप सोचिएगा कि हमारी जो स्कीमें हैं एक के बढ़ एक, कई क्षेत्र में हम लोग नंबर 1 है. और तो आर्थिक विकास दर में देश के अंदर बड़े राज्यों में जो है नंबर 1 तो है आंध्र प्रदेश और नंबर 2 राजस्थान 11.04% GDP. और उत्तर भारत में नंबर 1 हम लोग हैं, राजस्थान है. तो हमने वित्तीय प्रबंधन करके दिखाया है, तब जाके 30 स्कीम लेके आ रहे हैं. महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ये राज्य जनता जो है वो कई बार मोदी जी को बोलती है तो कई बार आपको भी कहती है. देखिए, तो जनता तो जनार्दन है, उनकी बात सबको माननी पड़ती है. पर देखिए इनकी जो मेन तो पेट्रोलियम समझ लीजिए आप सेक्टर जो है. तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तब क्या रेट हो गई थी, 112 रुपये तक चली गई थी मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतें. तब तो समझ में आती थी कि भाई महंगा पेट्रोल डीजल है. इनके वक्त में आधा हो गया. उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, कम नहीं किया.
और इंटरेस्टिंग बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जो एक्साइज ड्यूटी बेसिक होती है उसमें हिस्सा राज्यों का होता है, उसको तो कर दिया जीरो के बराबर कर दिया, मैंने बहुत कम कर दिया। और एक नया लगा दिया स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस 3। उस पर हिस्सा राज्यों का नहीं होता है। लूट मचा रही इन लोगों ने, जनता समझती नहीं इन बातों को। तो समझाइए ना, चुनाव में समझा नहीं बात है, ये समझाते हैं हम लोग। चुनाव में है, अभी समझाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में समझाते भी हैं, हमारा फर्ज बनता है। पर ये बताऊँ मैं आपको कि ये तमाम जो है उसमें हिस्सा नहीं होता राज्यों का, उसमें हिस्सा खाली केंद्र का होता है। तो पूरा केंद्र ले रही है रेवेन्यू, उससे अपना काम चला रही है। एक आखिरी सवाल, इसके बाद मैं जानता हूँ आपको वक्त ज़्यादा हो रहा है, अगले मुख्यमंत्री आपके होंगे जीते तो? इसमें कोई शक शुबा तो नहीं? शुरू में कह चुका आपको, मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ। मुझे पार्टी ने इतना विश्वास किया मुझ पर, और सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, उसके बाद पहला फैसला उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का किया था जी, 98। तो मुझे अगर विश्वास करके 98 में मुख्यमंत्री बनाया तो मेरी ख्वाहिश तो ये रहेगी कि भाई 2 बार हम जिता नहीं पाए, चाहे मोदी जी की हवा चल गई हो एक बार, 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट का बदनामी करा के लोकपाल लेके आएंगे, अन्ना हजारे साहब को बैठा दिया, सब काम इन्होंने किया, RSS बीजेपी नहीं किया उस वक्त में, और मोदी जी हवा चला दी, जीत गए वो, हम लोग हार गए बुरी तरह से। उसके पहले भी कुछ कारण ऐसे रहे कि मैं उन कारणों में नहीं रहना चाहता, पर उस पर भी शानदार हमने काम किया था। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि सोनिया गांधी जी ने मुझ पर विश्वास किया पहली बार 98 के अंदर, तो आज कम से कम मैं एक बार उनको सरकार आके दिखा दूं, बस ये मेरी ख्वाहिश है। विनिंग नोट पे जाना चाहते हैं आप? इसलिए मैं जो है चाहूँगा किसी भी तरह से मैं दिन रात काम करूँ, जो कुछ मैंने संभव था 5 साल मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मैंने कोरोना के वक्त में, 350 उसके अंदर खाली कोरोना के लिए थी, 500 ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और पूरे 200 MP MLA हमारे पार्टी में बीजेपी सब मिला करके सबसे मैंने 22 घंटे बात करी, धर्मगुरुओं से बात करी, एक्टिविस्ट से बात करी, NGO से बात करी। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, मेरा ये नारा था, और वही हुआ। मतलब तो मैंने बहुत बारीकी से उसकी मैनेजमेंट किया, ढूंढवाए लोगों को, जो ठेले वाले थे, ठेले बंद हो गए क्योंकि लोग लॉकडाउन में बंद थे, तो घर पे वो क्या खाएं। जो लोग रात दिन सो जाते हैं, स्टेशन पर सो जाते हैं, रन बेसम रहते हैं, ढूंढा के 35 लाख लोगों को उनको मैंने DBT करवाई, बैंक में खाते खुलवा करके। कलाकार तो घर में बैठे हुए, कला कौन देखे उनको 15,000 रुपये मैंने भेजे, तो हर एक चीज़ को मैंने खुद ने देखा उस वक्त में। तो आप बनेंगे ना मुख्यमंत्री? ये सब हाईकमांड और कांग्रेस विधायक दल तय करता है, और मुझे उसमें विश्वास है बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद NDTV से बात करने के लिए। घर पे जाके तुम गूगल कर लो, मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो। दिस इज समथिंग दैट वी डू ऑन अ डेली बेसिस। मतलब हम सभी गूगल यूज करते हैं, हम सभी विकिपीडिया पे यूज करते हैं, बट डिड यू नो कि गूगल एक्चुअल में गूगल नहीं होना चाहिए था, वो होता गूगल। वहां से एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से गूगल बन गया। अब हुआ ये, जब स्टार्ट हुआ पूरा गूगल का आइडिया, आई टोल्ड यू पहले के एपिसोड में दैट द फर्स्ट नेम वाज बैकरब। अब बैकरब से नाम जब चेंज करना था, तो द फाउंडर्स ऑफ गूगल, लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू टर्म, और उनको एक टर्म मिलती है गूगल। गूगल का मतलब क्या होता है इन मैथमेटिक्स? इट्स 1 नंबर 1 फॉलोड बाय 100 zeros। तो आइडिया ये था कि अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम एक साथ दिखाने वाले हैं, इट क्लियरली सिग्निफाइज द वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तो वहां से दिमाग में वर्ड आ गया गूगल। लेकिन जब डोमेन खरीदने गए तो उस टाइम पे गलती से GOL की जगह GLE टाइप हो गया, और वहां से बना गूगल, जो आज हम सभी डेली बेसिस पे यूज करते हैं। बट डिड यू नो it was a spelling mistake that ended us with Google. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right and center.
Conversations that get to the core of the debate. And there's too much talking but very little being said. Too many voices but hardly any being heard. You turn to a show. This is NDTV. And you're watching NDTV 24/7. Hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Gargi Rawat. Currently voting is taking place for the first phase of assembly elections in Chhattisgarh and in the single phase polls in Mizoram. Our reporters will bring you all the latest. This kickstarts the 5-state assembly election for this month. Well, let's take a look now at the headlines we're tracking. So it's the semi-final battle ahead of the 2024 elections. In Chhattisgarh, the first phase of elections, 20 of the 19 seats are polling. Mizoram is voting in the single phase. There's been 9.9% turnout till 9 a.m. in Chhattisgarh. In Mizoram, the turnout has been 7.7% till 9 a.m. The Mizoram Chief Minister Zoramthanga failed to cast his vote. He was the first one there at the polling booth, but there was EVM failure. He will cast his vote again now. In Chhattisgarh, one Jawan of the CRPF CoBRA Battalion was injured in an IED blast triggered by Naxals in Sukma. He was deployed for election duty. In Telangana, a bold move by the Congress. Congress Chief Revant Reddy has been nominated to fight the election from the Kamareddy Assembly, taking on Chief Minister KCR as the Congress released its third list for Telangana. Aam Aadmi Party says even if Arvind Kejriwal is arrested by the ED, they will continue to work from jail. He will remain the chief minister. They'll even hold cabinet meetings in jail if needed. And the odd-even traffic scheme is going to come back in Delhi, but only after Diwali due to the pollution crisis. Schools are also shut except for classes 10 and 12. And in Gaza, the Gaza Authority says over 10,000 people have died so far in the Israel attacks and airstrikes, while Netanyahu has said that Israel is open to little pauses in the war. Well, those are the headlines we're tracking, but now some breaking news coming in from Bihar, where Anganwadi workers have gherao or attempted to gherao the Bihar Vidhan Sabha over their demands. In fact, just let's get up those visuals. The police using water cannons to disperse the protesters. You can see how the water cannons are being used against the Anganwadi workers who are protesting there and demanding better conditions, better pay. So Anganwadi workers gherauing the Bihar Vidhan Sabha. They're protesting in the state capital Patna and gherauing the Vidhan Sabha, demanding better conditions and for their work. So Anganwadi workers protesting and water cannon being used against them. Anganwadi workers are protesting there in Patna, and water cannons, however, being used against them. And there you can see they have gheraoed, or they've attempted to gherao the state assembly, and many of them turned out in their red and white saris, a part of their uniform. So they've turned out there in their red and white. And quite a visual to see the Anganwadi workers, protesting. They are the forefront of local health in rural parts of the country, and it's running Anganwadi centers and ensuring nutrition and medication to women and children. But now protesting in this manner in Bihar, and look at the way the water cannon is being used against them.
Well, we will try and get you more details of that. But now going back to our main news story of the assembly elections that are taking place. And the assembly elections across 5 states have begun today. And voting taking place in Mizoram, where it's a single-phase election in Mizoram. And in 20 of the 90 constituencies in Chhattisgarh. And this marks the beginning of the exercise, which is being talked about as a semi-final before the general elections. This whole month, we're going to be seeing elections taking place in Madhya Pradesh, in Rajasthan, Telangana, and today Mizoram elections are taking place in the first phase of Chhattisgarh. In Chhattisgarh, there has been some violence, unfortunately. 12 of the 20 seats that are going to polls today are in the Maoist belt, and one Jawan of the CRPF CoBRA Battalion has been injured in an IED blast which was triggered by Naxals. This was in Sukma, Jawan deployed for election duty. So, as we said, in Chhattisgarh, it's 2-phase elections, while in Mizoram, it's a single phase and a multi-cornered contest. In Mizoram, with several parties, you have contesting the elections there. Chhattisgarh is just the BJP, mainly the BJP versus the Congress. But in Mizoram, you have the ruling Mizo National Front, which is hoping to return. Chief Minister Zoram Thanga was there right in the morning to cast his vote. However, the machine malfunctioned and he had to return to cast his vote. Then you have the young Zoram People's Movement, so another regional party there, and which is even being touted as a possible kingmaker when the results come, because given it's so multi-cornered, you have the Congress also in the fray. Remember, Mizoram was their last bastion that they lost to the Mizo National Front. So they're hoping to make inroads and make a comeback. The BJP had got just 1 seat the last time around, and this time Zoram Thanga has in fact distanced himself from the BJP, given the troubles that have been taking place in Manipur. But the BJP would be very keen not to have the Congress make any inroads here. NDTV's Ratnadeep spoke earlier to Mr. Zoram Thanga. Well, the problem in Myanmar, and then refugees and problem from Manipur and from Bangladesh. And here it will be a big plus factor for my party, the MNF, because these people, whether they are from Burma, from Manipur, or from Bangladesh, they all have faith if the MNF form the government here in Aizawl. And therefore, in order to comfort them, in order to give them shelter, in order to give them food and shelter. So it needs MNF government here. That would be one of the biggest plus points in my coming election. Sir, how positive you are, because of the opposition parties out here, ZPM, are also saying that they are also strong and they are going to make from the government out here? Well, I have a full confidence that we will be able to form the government with an absolute majority. You are saying that unemployment has been a major issue of concern here in Mizoram, and you have failed in meeting it in the last 5 years. How you like? Well, because of the COVID, not only Mizoram, the whole will suffer a lot. It's a matter of survival for the whole world. Here in Mizoram, it's rather a miracle that we can maintain and fight most successfully among other states in India. Unemployment certainly is there, but we have overcome quite a lot of these through different paths and through the government jobs also. You have been targeted by the opposition, particularly on the SEDP program. What do you like to say on that? Well, SEDP, one of the biggest obstacles for the success of the opposition people. It was the biggest point, a plus point for the MNF. That is why they targeted and criticized me of my introduction of the SEDP. Sir, almost all political pundits have predicted that it's going to be a hung assembly this time. How do you see your party from henceforth? Like, will you go into a coalition if required from the government? Well, it will not be a hung assembly. It will be an MNF government. I have a full confidence in that. Will BJP dare?
All right, so that is what Zoramthanga has to say, that of course everybody is speculating that it will be a hung assembly. Let's now talk about Chhattisgarh, and let's listen into former Chhattisgarh Chief Minister, who was Chief Minister thrice there in the state, BJP's Raman Singh, and he hit out at Bhupesh Baghel over the Mahadev app scandal. बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। महादेव ऐप तो खुली किताब है और इसमें कोई अपराधी ना बचे, सभी अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो इतना ही। Well, let's go across to our reporters now. And Sunil, we just heard Mr. Raman Singh, bringing up that Mahadev app issue as well. And this is, the phase today that's polling 20 seats and the tribal areas in the Maoist affected areas. And this is an area where the Congress did very well the last time around, getting 17 of the seats. And we've seen also that the kind of promises they've been making to the tribal population, that is something that resonates in this area when it comes to, big projects versus land of the tribals. That's right, Gargi. It's an issue, of course, which they have been talking about in terms of development. You heard Dr. Raman Singh, who's contesting here for the 5th time, wanting to make a political point on the issue of corruption. They have been using that, apart from a host of other issues, to make a political campaign against the Congress. So it's clear that both the Congress and the BJP are in direct contest, unlike in the other states where you have seen triangular or four people, for example, in Manipur, which is going today. And here this is a direct contest between the Congress and the BJP, and really a battle of votes for whether development or whether corruption. These are the issues that are really going to matter most for the people as they continue to cast their ballot here in Rajnandgaon. Right, and Sunil, so far the turnout has been 9.9% till 9 a.m. So, how do we view that? And we also know that, the Maoists had warned people not to come out. There's already been one incident of an IED blast. Well, I think, we'll have to really look at the numbers closely, particularly in the Maoist affected areas, because there the polling percentage is usually extremely low. It's very super sensitive areas, and that fear of violence is definitely something that, is uppermost in the people's mind, because these pamphlets have been put in all Naxal affected areas. But definitely, if it's 9.9, then it's very, very good. But that will be an overall figure, Gargi. We will have to, look at the polling booths where those have been affected. But definitely, polling started on a brisk note in most of those 20 assembly constituencies. And as you rightly pointed out, no stone has been unturned this time round. The use of drones, the use of the paramilitary forces, nearly 60,000 of them being deployed here in the 20 Naxal affected districts to ensure that there is a large presence of paramilitary forces and people do not fear and come to vote in this important election of ours, which is really a democratic festival in many ways. All right, Sunil, thanks so much for joining us. With that, let's go across to Ratnadeep now. And Ratnadeep, the turnout has been 7.7% in Mizoram till 9 this morning. There's a lot of speculation, given it's such a multi-cornered contest, that it could be a hung assembly, in which case it's who is going to play the kingmaker. That's right. In fact, the polling process is actually being carried out in a rather slow pace at this moment. You can see behind me people waiting for hours right from the morning, but the turnout is going to be huge. Mizoram in the last election also had almost 82% turnout, and in this election we are getting a feeling that the turnout, at least in the urban areas, would match to what it was in the last election. In fact, a short while back, the Chief Minister Zoramthanga
Tiranga again came back to this polling station, which is under Aizawl North 3 constituency, to cast his vote. Remember, in the morning he came here as the first voter, but the EVM malfunctioned, and then he went to visit other polling stations, and then he came back. He had cast his vote. We did play out what he had to say, very confident of returning back to power. If he returns back to power, he will become the chief minister for the 4th time. But in his way, you have the young party ZPM, which has been able to catch imaginations of people. You can see here a lot of people here, and from young to old, everybody waiting for their scope. Women voters actually outnumber male voters in Mizoram, and that is one of the striking features of the elections. Ma'am, are you a first-time voter? Yeah. So there's a lot of enthusiasm among people here, and what is important to note is the fact that Mizoram always sees a peaceful election. From after 2003 elections, which were marred by violence, the church really stepped in. Remember, it is a Christian-dominated state with 87% voters being Christian, and the church formed the Mizo People's Forum, and it is a watchdog that right from the campaigning stage till polling and counting makes sure that there is no more problems. In fact, you can see there an EVM has come, which is going to be changed because of the faulty EVM, which created a lot of problems initially, and therefore there is a long queue waiting to cast their votes. In fact, the chief minister also had to return back, and now slowly the polling process is picking up momentum, and across Aizawl we are getting to hear that in every polling station you have the same scenes, a lot of people waiting in queues, and in a totally disciplined way they are coming out to cast their votes. This is a very unique style of voting in Mizoram. The campaigning, as you see, the campaigning was in a very unique manner, in which there is no use of loudspeakers or big festoons, banners, posters, and even during casting of votes, you don't see any sort of violence, or even the political party agents and the supporters are sitting beside each other. They might have different political opinion, but they're all together trying to cast their votes. All right, thanks so much, Ratnadeep. And yes, it's going very slow. People have been there since the morning, but as Ratnadeep telling us, the voting, however, has been very, very slow there. We'll return to you for more updates. And let's go back to Chhattisgarh, and let's listen into what Chief Minister Bhupesh Baghel said this morning. आपको बोनस दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई में कोई शुल्क नहीं लगेगा, केजी टू पीजी पहली कक्षा से लेके अब पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपको पढ़ाई में कोई खर्च नहीं होगा। उसी प्रकार से 35 किलो राशन सभी परिवार को मिलेगा, चाहे एपीएल हो, बीपीएल हो। 500 रुपया गैस सिलेंडर, जितने भी जिसके पास भी गैस कनेक्शन है, चाहे उज्ज्वला हो या दूसरे, सबको उसका लाभ मिलेगा। All right, Bhupesh Baghel, they're speaking about, the schemes that were announced earlier. We did hear Dr. Raman Singh as well, the former Chief Minister of Chhattisgarh during the BJP time. Well, to talk more about these elections, we're joined by Javed Ansari, senior journalist, and PK Nambiar, political analyst, someone who supports the BJP. And Javed Ansari, first you, the Congress very optimistic about coming back in Chhattisgarh with Bhupesh Baghel at the helm there, talking about the welfare schemes. The BJP, in fact, after criticizing, welfare schemes and reverie politics on the national front, when it comes down to the, assembly elections, they too have come out with their own guarantees. And it's not surprising political parties adopt positions depending on where they stand. This is BJP, for one, is a party that fights for every inch, every blade of glass. So if they believe that there are votes to be gained by talking of populist measures, they will do it. They will do it in the states and criticize at the center. And this is true of all political parties. Chhattisgarh is crucial for the Congress party, along with Chhattisgarh, Madhya Pradesh. These are two states where the Congress is hedging its bets, banking heavily on retaining power and coming back to power in Madhya Pradesh, retaining power in Chhattisgarh.
and they're hoping to spring a surprise in Telangana. How all this pans out, we'll only know for sure on December 3rd. But as of now, yes, a battle royal taking place in Chhattisgarh. Hopefully, the violence will be minimized, and polls, till the end of the day, we will see peaceful polling and people turning out in large numbers. Right. Congress also hoping to make a dent in Mizoram. That's something that everybody is, everybody speculating about this hung assembly and how it's going to go into this whole post-poll alliance and talk, and possibly Zoram People's Movement, being the kingmaker in that. And that this was a state seen as the last bastion of the Congress when they lost power then in 2018. Yes, but now there is the X factor. The party that is the weakest there has begun to form the government. So while we were focusing on Zoram Thanga and the other party, the regional party contesting there, the fact is that don't forget the BJP. The BJP sure, that's why I said it comes back to the post-poll, and that is where BJP is the strongest. And the BJP had only one member, and yet it managed to swing. And in these states, it's usually been seen that regional parties invariably align with the party that is ruling at the center. So therefore, I will not be surprised that BJP with even one seat or even half a seat may manage to be a part of the government, courtesy its friends in the different agencies. Right. PKD Nambiar, your comments on that, and the Congress has been, pointing out how the Prime Minister could not come to Mizoram given the situation in Manipur and the way people on the ground feel. Right, I think you're on silent, PKD. Good morning, Gargi. Javed Saab, good morning. The idea of Mizoram in this time, if you really look at it, that the BJP has changed its strategy, not just focusing on Narendra Modi as a front face everywhere. It was supported by the brand Narendra Modi, whether it is in Chhattisgarh or Madhya Pradesh. He has attended a large number of rallies and inaugurations and etc. before the election. I'm sure that they have left quite a bit of these things to the second round of rung of leaders, and plus the regional leaders in almost all across the 5 states. But having said that, look at the way the Mizoram is like this time around the ZPM's influence, because it is, as you said in the earlier these things, it's almost 90% of the population is Christianity, and the Christian bishops are supporting this particular movement, the new party, which is ZPM. So with these divisions, like 4 or 5 parties being active, both national parties, BJP and Congress is also active, along with the incumbent government and ZPM. So I think right, interesting that you're talking about the Prime Minister not going there, saying, oh, we've left it to the second rung of leaders. But let's go. I'm running out of time. I want to talk to you about Chhattisgarh as well. We heard Raman Singh earlier on, and he was talking about the Mahadev app. That's been a big talking point, at least in Delhi or in the national media. But do you think the ED and this corruption allegations is something that really matters on the ground? Gargi, this can go either way, because in the Mahadev app and etc. will not be working really well in the tribal areas for sure. And this election is 20 seats, which were almost 17 of them backed by Congress last time. And I don't know whether this app corruption case has come up very late in the election campaign. But it may not have that kind of an effect, but it can further have the effect in the coming 70 seats. And I think, and even if the BJP is able to get out of the 20 seats, even about 6-7 seats, that's going to be a big achievement. That will be in the helping the BJP to form the government or to have a tight fight. One thing I can tell you that initially all the poll pundits were talking about that Chhattisgarh is going to the Congress way. But I don't think that as the time is passing, as the election date has arrived today, I think it's a close, tight competition between the BJP and the Congress. And I hope, and remember one thing that even Javed Saab, you will agree that Chhattisgarh always had a tight competition between and with very thin margin. Last time was the only one
time that wherein there was a sweeping of the Congress. Almost 60 years. All right, we're going to have to leave it there. Thank you so much both for joining us on the program, and we'll continue to bring you all the latest developments. Elections are underway in Chhattisgarh and in Mizoram. Do stay with us. From breaking news to in-depth analysis, covering the latest developments across politics, business and technology, bringing you stories that shape our nation and the world. अक्सर ऐसा होता है कि आपके फोन के स्क्रीन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. मे बी यू आर ऑन अ वेब पेज, या मे बी यू आर रीडिंग अ बुक लेट्स से, या अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, कई बार बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. समटाइम्स इट्स दिस लेजी फीलिंग, या समटाइम्स इट्स मोर कन्वीनियंट कि अगर कोई आपको वो सब चीज़ें पढ़ के सुना दे. लेट मी गिव यू अ टेक टिप. आपके फ़ोन में एक इनबिल्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू स्पीच का. Either you are using Android or iOS, फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा. You just need to dig deep into the accessibility settings, और वहाँ से you can even customize the output speech options कि आपको किस स्पीड में वो स्पीच चाहिए, या फिर किस टाइप की आपको वॉइस चाहिए, और आप बड़े आराम से जो भी आपके स्क्रीन पे है वो सुन सकते हैं. Text to speech is a feature that reads digital text aloud. Words on a computer or other digital device can be converted into audio using this. कभी-कभी ये आलस के मारे आप करेंगे, कभी-कभी ये करेंगे आप कन्वीनियंस के मामले में, बट इट्स अ नाइस टिप टू फॉलो कि आप आपके स्क्रीन पे जो भी है वो सुन भी सकते हैं, बिकॉज व्हाट यू आर यूजिंग इज नॉट अ डम फोन, इट्स अ स्मार्टफोन, सो मेक यूज ऑफ इट. This show isn't just about news from the southern states. It's one that looks at the rest of India and the world from a diverse South India point of view. Because NDTV has always taken the southern view seriously. The Southern View with Veera Raghav. Only on NDTV 24/7. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt, and that's how I like to roll. टेक्नोलॉजी तो आप सभी के पास है, बट व्हाट यू नीड इज एवरीथिंग एल्स. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूं एनडीटीवी नेटवर्क पे, हर रोज हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When it comes to sports, we set the ball rolling. Because we have our eyes on the ball. Because we want to get you the best. Latest updates. Top interviews. And analysis. From around the globe. Election in 5 states, 679 seats, over 16 crore voters. A crucial semi-final before 2024. NDTV brings you the politics, the promises, the stories and backstories. Every twist and turn of 5 high-stake battles. When it comes to elections, India trusts NDTV. फ्रेंड्स, इन दिस सेगमेंट मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं अबाउट योर गैजेट्स. योर डिवाइस माइट बी एक्सपोज टू सम क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज, जिसके बाद में आपका डेटा, आपका इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करके रखा है उस फोन में, वो सब गलत हाथों में जा सकता है. अभी ऐसा ही कुछ हुआ व्हेन द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम फॉर इंडिया एक एडवाइजरी इशू करती है, एंड वो बताती है कि मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड, टॉकिंग अबाउट एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 12L एंड साथ में एंड्रॉयड 13 भी, ये कुछ क्रिटिकल इश्यूज को पोज कर रहे हैं. देयर आर सम मेजर सिक्योरिटी फ्लॉज
और इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि गूगल एक अपडेट इशू करेगा और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बाद में उस अपडेट को अपने अपने डिवाइसेस में पुश करेंगे एंड आपके पास जब वो अपडेट आए तो आपको उसे इंस्टॉल करना है। और आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके फ़ोन का जो डेटा है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने फ़ोन में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है वो कहीं गलत हाथों में चला जाए, कोई आपके फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल कर ले, कोई एक मलिशियस ऐप आपके फ़ोन में आ जाए। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए द फर्स्ट स्टेप that you can do and you have to do is to update your devices. So make sure आज के बाद keep it like a regular habit. Once in a while, sometimes तो आपको notification खुद से मिल जाएगा, but if it doesn't come, once in a while, every 15-20 days, normally just check for a It's a do-or-die battle for both the challenger and the defender, Mr. Kamal Nath and Shivraj Singh Chauhan, in this Madhya Pradesh election. A dyed-in-the-wool Congress leader who has worked with 3 generations of Gandhis is fighting the most crucial battle of his 4-decade-long political career. Today, I'm on campaign trail with former Madhya Pradesh Chief Minister, Mr. Kamal Nath. It's 7:30 a.m. and Mr. Kamal Nath is starting his day with his first public meeting. As the state gears up to go to polls, a quick stopover in Gwalior and then he's on to a chopper that will take him to Datia in North Madhya Pradesh. Datia is the constituency of Madhya Pradesh's controversial Home Minister Narottam Mishra, who has won the seat consecutively since 2008. का चुनाव आपके लिए कितना अहम है? हर चुनाव का अपना मायने होता है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। केवल एक कैंडिडेट या एक पार्टी का प्रश्न नहीं है और मुझे पूरा विश्वास मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि ये अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। 15 महीने के मुख्यमंत्री आप, मध्य प्रदेश की जनता ने जो आंकड़े दिखाए हैं वो जरूर ये बता रहे हैं कि आपके काम से बहुत खुश थे। मेरे पास 15 महीने की तो सरकार थी, पर 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया और मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त में हमने माफ़ किया। बिजली दी 100 रुपये 100 यूनिट, हमने पेंशन बढ़ाई, मैंने गौशाला बनाए, 1000 गौशाला जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं बने, मैंने बनवाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बार कांग्रेस जो एक फॉर्मूला लेकर के आगे बढ़ रही है, वो फॉर्मूला साफ तौर पे ये दिख रहा है कि महिलाओं पे खास फोकस है कांग्रेस का। ऐसा क्यों? महिलाओं पर हमेशा हमारा फोकस रहा है और हम चाहते हैं कि हर परिवार में उनकी क्रय शक्ति बढ़े, उनकी खरीदने की ताकत बढ़े और महिला सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए महिलाओं के लिए हमने कहा है अपने वचन में कि हम उनको 1500 रुपये महीने देंगे, उनको गैस सिलेंडर में राहत देंगे, क्योंकि ये एक महिला की बात नहीं है, महिला परिवार की रक्षक है। मेरा आपका सवाल ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां अभी आप जा रहे हैं उसकी क्या खासियत है? आज जो हम जा रहे हैं दतिया, ये मध्य प्रदेश की अत्याचार और भ्रष्टाचार की राजधानी है। यहाँ लोग गुलाम हैं और मेरा उनको संदेश होगा कि ये मौका है कि वो इस गुलामी से बाहर आए। कमलनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमलनाथ
In recent years, Madhya Pradesh has been high on Hindutva optics, from reciting Hanuman Chalisa at party headquarters to multiple temple runs. And the veteran Congress leader has jumped on the bandwagon. Mr. Kamal Nath, though, says his devotion cannot be seen as recent, as he had done the Pran Pratishtha of the 101 feet idol of Lord Hanuman in December of 2014. His first stop in Datia is Pitambara Peeth. While Mr. Kamal Nath finishes his prayers, we try to gauge the mood on ground. This is Narottam Mishra's constituency. With me, some people who had voted for the BJP in 2018. इस बार क्या माहौल है? मुझे लगता है इस बार बदलाव चाहती है जनता और इस बार 100% कमलनाथ जी आएंगे। 2018 में आप किसके साथ थे? बीजेपी के साथ। आप? कांग्रेस। 2018 में भाजपा के साथ थे? जी। तो इस बार? इस बार कांग्रेस के साथ। क्यों? क्योंकि हम जो चाहते थे, जो सोच के हमने उनको वोट दिया था, वो हुआ नहीं। क्योंकि व्यापम घोटाला और दुनिया भर की चीजें घोटाले को देखते हुए हमें लगता है कि इस बार कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। पटवारी भी हुआ। आपको क्या है? हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग पा रही, परेशान है, किसान है, हम खाद नहीं मिल पा टाइम पे, धान नहीं बेच पा रहे, मंडिंगन में 3 दिन 4 दिन डरे। The public meeting is in the heart of Datia. The rally venue is packed with Congress supporters and many new joinees. अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। जी हाँ, मैं राममिलन सिंह यादव, पूर्व किसान मोर्चा अध्यक्ष। मैं भारतीय जनता पार्टी का 40 साल से कार्यकर्ता हूँ। सन 89 से लेके आज तक का सफर रहा है। क्यों छोड़े? नरोत्तम का जो व्यवहार रहा है, यहाँ भाजपा खत्म होने जा रही है, दादापा चल रही है, भाजपा खत्म है। आपने भी पार्टी छोड़ी? आप भाजपा के हैं? जी, मैं पूर्व में मैंने रिजाइन दिया था 5 साल पहले। मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी और मैंने अब की बार पार्टी को ज्वाइन की है। और जिन्होंने ये गुंडागर्दी करी है, इसका इलाज कमलनाथ करना चाहते हैं। और प्रशासन से मैं कह दूं, प्रशासन और पुलिस से मैं कह दूं, ये जो बिल्ला बीजेपी का बिल्ला उन्होंने अपनी जेब में रखा है, कितनी जेब बचेगी उनकी मैं देखूंगा। Mr. Kamal Nath, you have been clocking 8 to 10 rallies a day, and of course, because elections are around the corner, I believe this has been your schedule for the last 3 years also. Well, it's not been that hectic all the 3 years, but I have been doing this at least for the last 6 months because public contact is very important, and people want me to come there. Sir, from the time that you took charge as the Madhya Pradesh Congress chief to now, क्या बदल गया है? कांग्रेस अब कहाँ पर है? कांग्रेस की स्थिति क्या है as an organization? Well, I've always said that the contest is not with the BJP alone. It is with the organization of the BJP. So I've spent all this time building the organization. Politics has become very localized. They want to know what is your team in every village. With having mandals and sectors who are there now in, I think, about 80% of the places. So they are the ones who really fight the elections. They are the ones, a person who's in the sector, who's got 3 to 5 booths, he knows the name of 100 people in every village. No block president or district president will know that. तो ये आप मानते हैं कि बीजेपी की इलेक्शन विनिंग मशीन है और उसको काउंटर करने के लिए आपने 4 साल में कांग्रेस को यहाँ पे खड़ा किया? ये मेरा प्रयास था और ये मैं सोचता हूँ कांग्रेस का संगठन खड़ा है और बीजेपी से उनके संगठन से पूरा मुकाबला करेगा। और कमलनाथ जी, जहाँ तक इस चुनाव की बात की जाए तो आप किस मुद्दे को सबसे अहम मानते हैं? मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता हुआ नौजवान बेरोजगारी से परेशान है।
हमारा दुखी किसान जिसके साथ अन्याय और जो आज खाद के लिए भी उसको भटकना पड़ता है, छोटे व्यापारी, ये सब हर वर्ग मध्य प्रदेश में परेशान है। और इसका परिणाम मैं सोचता हूँ 17 नवंबर को मतदान के दिन सामने आएगा। शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। आपकी काउंटर करने के लिए उन्होंने भी अपनी जो उनकी योजनाएं थी उसका रकम बढ़ाया है। उसके अलावा भाजपा ने अपने 10 MPs को ज़मीन पे उतारा है। तो ये भी माना जाए कि वो लोग भी ऑल आउट जा रहे हैं। इट्स एन इलेक्शन विच मस्ट बी वन फ्रॉम बोथ द साइड्स। इन्होंने 10 लोग जो इनके सांसद थे जिनको लड़ा रहे हैं, इन्होंने समझ लिया था कि इनकी ज़मीन फिसल गई है, इसलिए तो इनको भेजा। और मैं तो सोचता हूँ बीजेपी को अगर सबको दिख रहा है कि क्या हालात है मध्य प्रदेश में, बीजेपी को भी दिख रहा है। इस बार युवा चुनाव में किस मुद्दे पे वोट देगा? अपने 18 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं कर पाई है। पहले 80 रुपए की जो दाल थी मैम, तो आज वो 200 रुपए किलो हो गई है। 400 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए 1200 रुपए हो गया है मैम। बेरोजगारी बढ़ गई है। क्या इस बार माहौल है चुनाव में? 18 सालों से बहनों की याद नहीं आई। कुछ काम हुआ है यहाँ? नहीं, काम तो कमलनाथ जी ने बहुत किए हैं, जैसे बिजली का हुआ, रोड का हुआ। मैम नौकरी तो मिलती है मगर उसके लिए पढ़ाई के लिए डिमांड कर रहे हैं। इन्हें पढ़ाई भी अगर 10 भी पास होते तो ले रहे हैं। इस बार 100% है कि हम लोग श्योर है कि इस बार कांग्रेस आ रही है। क्यों? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को हमने देख चुके हैं। 18 सालों में बीजेपी को हम देख चुके हैं। जाम खाएगा बेटे? और ये क्या है? ये हाँ, ये हमारा मिनकी है। मिनकी नाम है इसका? मिनकी नाम है। सुभाष जी, इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? हमारा माहौल मैडम कांग्रेस का है। हमारा फुल पर 100% कांग्रेस की वोट डलती है हमारे यहाँ पे। क्यों? अब उन्हीं ने मतलब हमारे रोहना को दिल्ली तक पहुँचाया नाम। इस बार महिलाएं किसके साथ हैं? अरे दीदी, हमको ऐसे कोई वो नहीं है। हम ये जानते हैं कि जब समय आएगा जिसमें वोट दे दिए उसी में सही। अरे हमारी वोट तो कमलनाथ को जाएगी ना। The Congress announced 11 guarantees several months ago. Promises made to women, Adivasis, farmers, youth. Has he worked out the maths? We ask. Kamalnath ji, as the date arrives for polling, what are your concerns? What are your anticipation? क्या लग रहा है? Well, my concerns are to the extent BJP will use the police, will use the administration, and will use money to influence, to threaten the voters. That is the major concern of mine, because the BJP has lost the confidence of the people. Now, by threatening, by coercing, by purchasing, giving money to the voters, distributing liquor, which they are freely doing even now. ऐसा पुलिस, पैसा और प्रशासन का चुनाव मैंने कभी नहीं देखा। और जिस तरह बीजेपी डेस्परेट है, ये कुछ भी कर सकती है। हमारी भी तैयारी है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारा जो स्थानीय संगठन है, वो उससे मुकाबला करेगा। वो पैसे बांटने से रोकेगा, शराब बांटने से रोकेगा। कर्नाटका चुनाव में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक टेम्पलेट मिल गया और उससे पहले हिमाचल की जीत हुई कांग्रेस की, और वही टेम्पलेट यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, सेम प्लेबुक है। ये कोई टेम्पलेट यहाँ नहीं है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बहुत अंतर है, मध्य प्रदेश और हिमाचल में बहुत अंतर है। यहाँ तो 18 साल बीजेपी रही है। ऐसी स्थिति नहीं थी। ऐसी स्थिति ना हिमाचल में थी, ऐसी स्थिति ना कर्नाटक में थी। इंडिया की बात करें कमलनाथ जी, पूरा आप इंडिया की पार्टीज जो हैं, सपा, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, इस चुनाव में साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं? आपके खिलाफ भी बहुत सारे सीट्स में खड़े हुए हैं वो। हमने प्रयास किया था कि उनसे कुछ ना कुछ समझौता हो, सीटों पर नहीं, पर जहाँ वो
सीट मांग रहे थे वहाँ हमारे स्थानीय लोग नहीं मान रहे थे और उससे बीजेपी का फायदा होता। हम सबका लक्ष्य था बीजेपी को हराना, तो ऐसा कोई समझौता करें जहाँ बीजेपी जीते, ये समझौता नहीं हुआ। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है राज्य छत्तीसगढ़, वहाँ पर ईडी के रेड्स हुए हैं और ईडी के स्टेटमेंट में वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आया है कि उनको महादेव बेटिंग ऐप में कुछ फ़ायदा हुआ है। तो एजेंसी की बारे में अगर ये बात की जाए तो किस तरह से आप देखते हैं? ये छत्तीसगढ़ में ईडी किसी से कुछ भी लिखवा ले, अगर धमकी दें किसी को कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे, आपको गिरफ्तार रखेंगे और आप ये बोल दीजिए, वो बेचारा मजबूरी में बहुत कुछ बोल देगा। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस बिना स्टेट के फाइनेंस को स्टडी करते हुए अनाउंस कर रही है एक के बाद एक रेवड़ी, और ये रेवड़ी कल्चर जो है वो इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करेगा। भाजपा ने पिछले 5 महीनों में क्या क्या घोषणाएं करी हैं, क्या क्या पैसा बांटा है। इनको 18 साल बाद लाडली बहन याद आई और हमने जो कहा है हमने सोच समझ के। एक ट्रेंड है कमलनाथ जी कि ऑपोजिशन साथ में बैठती तो है, लेकिन जब इम्पोर्टेंट इश्यूज आते हैं जैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब का, तो बहुत सारे डिसकंटेंटमेंट और डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है? देखिए, ये बात तो सच है, सब अब चुनाव में व्यस्त हैं, अन्य प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, पर इस चुनाव के बाद मुझे उम्मीद है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर चर्चा करेगा, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि हम सबका लक्ष्य एक है कि बीजेपी को रोका जाए। कांग्रेस का चुनाव है या कांग्रेस की तरफ से बस कमलनाथ अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से आपने पार्टी को यहाँ पर अकेले अपने दम पे खड़ा किया है? हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, कांग्रेस का संगठन लड़ रहा है और क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ इसलिए ये बात आती है कि कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, पर इसमें सबका योगदान है। ग्वालियर में क्या होगा? ग्वालियर में 15 महीने पहले हम ग्वालियर महापौर का, मेयर का चुनाव जीते 35 साल बाद। तो ग्वालियर और ग्वालियर चंबल संभाग में मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। आपको लगता है आपकी सरकार 5 साल चल जाती अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नहीं करते जो उन्होंने किया? ये सौदा किया था, देखिए सीधे सौदा था। मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास विधायक आते थे कि आज हमें इतने पैसे मिले हैं, इतने पैसे मिले हैं। मैं कहता था मौज करो, मैं कोई सौदा करने वाला नहीं हूँ, आपको कोई पैसे नहीं देने वाला। सिंधिया बोलते हैं कि वो काले कौवे हैं, इसी से कांग्रेस डरती है। सिंधिया कुछ भी कहे, वो काले हैं, पीले हैं, लाल हैं, वो खुद जाने, मैं उस पर क्या कहूँ, कुछ भी कह देंगे। पहले बीजेपी के बारे में ये सब कहते थे, अब कांग्रेस के बारे में कहते हैं ये सब। ओबीसी किससे तरफ है? आप किसको देख रहे हैं अपने तरफ आते हुए? क्या नई कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, अपने देश में जातिगत मतगणना बहुत जरूरी है, जातिगत सेंसस बहुत जरूरी है कि सब साफ हो जाए कौन कितनी जाति के, कौन कौन है, कितने लोग हैं। इसमें किसी को संकोच क्यों है? और जहाँ तक आप पिछड़े वर्ग की बात करें, ओबीसी की बात करें, मैं तो कानून लाया था जब मैं मुख्यमंत्री था, इनको 27% आरक्षण देने का। तो क्या ये माना जाए कि 2024 तय है? 2024 अभी विधानसभा के चुनाव हो जाए, ये परिणाम बहुत कुछ तय करेंगे। पर एक बात हमें याद रखनी है कि मतदाता आजकल बहुत समझदार हो गए। वो ऐसी भावनाओं में जिसका उपयोग पहले किया था बीजेपी ने 2014 और 2019 में, उस भावनाओं में नहीं बहने वाले। किस तरह की भावना? राष्ट्रवाद की बात करने लग गए। पहले तो 2014 में परिवर्तन का कांग्रेस बहुत भ्रष्ट है, इस पर बात करी और तरह तरह के वायदे करे। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, जो बेरोजगारों की बात थी, जो गरीबों की बात थी, जो किसान क्षेत्र की बात थी, वो तो बात ही नहीं हुई। आप जब कॉमर्स मिनिस्टर थे तो आपने हमेशा प्रो इंडस्ट्री बात की है, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट बात किया है। आपकी पार्टी एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों हो गई? नहीं, हमारी पार्टी एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है।
ये कह देना कि हम एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम चाहते हैं कि उद्योगपति निवेश लगाएं, पर अगर कुछ ऐसे बातें हुई कि किसी उद्योगपति गलत कर रहा है, केवल आरोप लगाने से नहीं होता, अगर सही में उसने गलत किया है तो उस पर जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, क्या आपको लगता है ये इतना ज़रूरी है कि इसके बाद आप फिर मध्य प्रदेश छोड़ देंगे या फिर यहीं पे रह जाएंगे? नहीं, मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाला, मैं अपनी आखिरी सांस तक मध्य प्रदेश में रहूँगा, जो भी चुनाव का परिणाम हुए। फाइनल नंबर बता दीजिए। मैं नंबर के चक्कर में नहीं पड़ता, ये आपको नंबर पूछने हैं तो आप मध्य प्रदेश के मतदाताओं से पूछिए, वो आपको सही बात बता देंगे। लेकिन आपका एस्टिमेट तो हमेशा सही रहा है। मैं एस्टिमेट नहीं लगाता, मैंने कहा हम कंफर्टेबली जीतेंगे। Although he was appointed as the Madhya Pradesh Congress chief only in 2018, Mr. Kamal Nath's association with the state can be traced back to 1979. When former Prime Minister Indira Gandhi had described him as her third son who helped her take on the Morarji Desai-led regime. He first visited Chhindwara then. Today, as he makes a stop at his parliamentary constituency of 37 years, Mr. Nath has stories to share. Almost looks like an oasis of development. Yeah. You go on this ring road, you go on this, you haven't been on the ring road. इनको बोलना, I'll just tell Milani to send somebody. You've been to the driving school? No. Yes, I've been to the driving school. There is a Toyota showroom. All cars, everything, Hyundai, you name, they're all here. Because this has become the epicenter of economic activity in this area. And in 2019, you handed it over to your son. Well, I had to resign as an MP to continue as chief minister, so I then contested the assembly election, and he became the by-election, so he became the MP and I became the MLA. I had to be a member of the Legislative Assembly to be the chief minister. So how has the transition been from the father to the son? Well, he's working, but he moves around. Today he's in 2 other districts. What makes this constituency, you were saying that this is a constituency which has all the MLAs of the Congress party? All 7 MLAs. Yes, Every time you have been winning, No, but this time all 7 MLAs and the mayor. Some rounds of internal meetings and Mr. Kamal Nath is out again meeting those who have gathered at his home in Kamal Kunj. And then heads to another public meeting of the day. As he moves from one rally venue to another, sometimes on road, sometimes in chopper, his son Nakul, who won from the family bastion of Chhindwara in 2019, tries to visit constituencies his father may not be able to cover. क्या आपने कोई एक ऐसी constituency को देखा जहां पर आप उस पर ज़्यादा emphasis दे रहे हैं, क्योंकि if you want to lend a helping hand to your father's campaign? I am going wherever he tells me to go. Where he is not able to reach, I reach those constituencies. क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में। तो बाकी छिंदवाड़ा के बाहर का मध्य प्रदेश कैसा है? आज मैं 2 विधानसभा क्षेत्र में गया, हरदा और टिमरनी। वहाँ माहौल छिंदवाड़ा से भी ज़्यादा अच्छा है। तो मुद्दा क्या है? क्योंकि अभी CSDS NDTV का सर्वे आया, उसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे लोगों के दिमाग पर थे और सबसे बड़ा था डिसकंटेंटमेंट अमंग फार्मर्स। आज पब्लिक देख रही है कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा, इन्होंने महाकाल घोटाला किया। खुलेआम खाद और बीज की कालाबाजारी हो रही है, किसानों को अपने फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे, तो जनता परेशान है।
लेकिन जनता को केंद्र सरकार पर भी भरोसा है। केंद्र सरकार ने जनता के लिए क्या किया है मैं पूछना चाहता हूँ। ये लोग घोषणाएं करते हैं लेकिन कुछ होता तो नहीं है ग्राउंड लेवल पे। आप लोगों ने भी काफी घोषणा की है इस बार, 11 गारंटी की बात की जा रही है, तो उनकी घोषणा और आपकी घोषणा में क्या फर्क हुआ फिर? देखिए, पहले तो हमने घोषणा नहीं किया, हमने 11 गारंटी एवं 101 वचन मध्य प्रदेश की जनता से किया। और हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम झूठी घोषणाएं नहीं करते। माननीय कमलनाथ जी, आदरणीय दीपक सक्सेना जी, अनिल अहमद जी और बाकी के लोग यही रुक जाए स्टेज पे, बाकी के लोग ना चढ़े क्योंकि स्टेज हमारा थोड़ा स्टेज की व्यवस्था को देखते हुए। माननीय कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा की जनता से, लागड़ुआ की जनता से है। 42 साल पहले छिंदवाड़ा क्या था, आज क्या है? आपके प्यार और आपके विश्वास ने मुझे बल और शक्ति दी और इस बल और शक्ति से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। महिलाएं किसके साथ? जी देखिए, 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी बैठे थे और अब जब चुनाव जब पास में आ रहा है तब वो महिलाओं को प्रलोभन दे रहे हैं। 18 साल से बेटियों की, लाडलियों की और हमारी बहनों की, भांजियों की उनको याद नहीं आई। 15 दिन से हम लोग महीने भर से यही काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सबको यही जानकारी दे रहे हैं। कमलनाथ जी करेंगे सिलेंडर 500 रुपए, 500 रुपए हमारे बच्चों के लिए, हम उनके लिए है। जय जय कमलनाथ, जय जय हम उनके लिए। जोरदार ताली बजती रहे। कमलनाथ जी हमारे बीच में लागड़ुआ ग्राम में आप पधारे हुए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन होता रहे। When he lost his 15-month-old government to an internal rebellion by a Rahul Gandhi confidant Jyotiraditya Scindia, Mr. Kamal Nath did not rest. Instead, he chose to go back to the drawing board to establish the Congress party's structures. The question now is, how well oiled is that machine? Is this really ready to take on the election-winning machine of the BJP? An answer we'll know about only on 3rd of December. Thanks for watching. A cup of hope. A cup of joy. Can India lift it at home after 12 years? We will follow their journey through the length and breadth of the country. Through every twists and turns. On Turning Point, on NDTV 24/7. Okay, so we're coming towards the end और ये है मेरा favorite section, guys. You know about it. It's Ask TG, जहाँ पे आपके सवाल होते हैं, मैं जवाब देता हूँ। तो let's see इस हफ्ते हमारे पास में क्या-क्या सवाल आए हैं, because I am ready with all my answers. Hi TG, which mobile brands should we buy to support PM Modi's Make in India initiative? Okay, I'll tell you something very honestly. Any phone in the market, when you see the label that it is made in India or assembled in India or something like that, go ahead, get it. That's my honest answer. आज अगर कोई फ़ोन बनता है इंडिया में तो हम देखते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स इंडिया से आते हैं, कुछ कंपोनेंट्स इंडिया के बाहर से भी आते हैं और हम विद टाइम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स इंडिया से आने शुरू हो जाएं. बट दिस नंबर is very difficult, you know, to go to 100% because ये बहुत ज़्यादा मुश्किल एक प्रोडक्ट है जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स काम में आते हैं. Sometimes the protocol might not be supported. Sometimes this USB port is not sufficient to give you a display output. तो आप उस केस में Chromecast को यूज़ कर सकते हैं to cast your screen. I would say that would be an easier option. And if you can give more details about the exact model of tab that you're using या फिर आप किस तरीके से रन करना चाह रहे हैं, I might give you some more information. But as of now, I would say not all devices have the ports designed the same way. Sometimes the functionality is limited. तो आप ज़रूरी नहीं है कि उस displays का output ले पाएँ बाहर. You can use a wireless solution that way. Hi, Technical Guruji. Is there any way at all to track my kids' smartphone usage? Yes,
very easy and it's very important as well. आपको ये काम करना चाहिए. Any phone, iPhone हो या Android phone हो, सभी में आपको screen time का option मिल जाता है. अलग-अलग नाम से आपको मिलेगा. But yes, your phone has that option. You can not just track it, you can even put a limit to it. अगर आप चाहते हैं कि your kid should not be watching YouTube for more than 30 minutes a day. This is NDTV, and you're watching NDTV 24/7. Hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Gargi Raut. Coming up ahead, we'll get you all the election news as polling has begun in Chhattisgarh and in Mizoram, and this begins the month of assembly elections. Let's take a look at the headlines. Chhattisgarh first phase of elections underway. 20 of the 90 seats are polling, while Mizoram votes in a single phase. It's a multi-cornered contest in the state. So far, the turnout till 9 a.m. has been 9.9% in Chhattisgarh, 7.7% in Mizoram. Chhattisgarh voting in the Maoist affected areas, and one Jawan of the CRPF CoBRA Battalion was injured in an ID blast which was triggered by Naxals in Sukma. The Jawan was deployed for election duty. Aam Aadmi Party says even if Arvind Kejriwal is arrested by the ED in the liquor case, he will remain Chief Minister and that they will seek permission to hold cabinet meetings in jail if needed. And another polluted day in Delhi. Now the odd-even scheme will come into effect, but only after Diwali, while schools are shut except for classes 10 and 12. And the Gaza Authority says over 10,000 people have died in Gaza so far since the war began on the 7th of October. Over 4,000 children are among those killed, as Netanyahu says Israel is open to little pauses in war. Assembly elections across 5 states have begun today, with the voting taking place in northeast Mizoram and in the first phase of elections in Chhattisgarh, in 20 seats there. And this marks the beginning of something being, billed as the semi-final before the general elections in 2024. So first phase of elections in Chhattisgarh, 20 assembly seats are going to the polls, out of which 12 are in Maoist affected areas. And Mizoram, it's a single phase election. All 40 member assembly is voting in this single phase. Tight security in both areas, especially in Chhattisgarh, where over 60,000 security personnel are deployed, given that it is in Maoist affected areas. Now, a close contest expected in Chhattisgarh between the BJP and the Congress party. The Congress very confident of holding on to this state in the Hindi heartland, where it won in the elections, and in this particular phase it won 17 out of the 20 seats that have gone to the polls, while in Mizoram, it is being speculated that it could be a hung assembly. The contest is between the Mizo National Front, that's the ruling party, and Zoram Thanga, who this time has said he is not with the BJP, given the Manipur crisis. You also have the very young, the Zoram People's Movement, which has emerged as another regional party over there, and many speculating that a leader could play the kingmaker. The Congress also in the fray. Mizoram was their last bastion that they lost in the northeast, and BJP last time around won 1 seat, but one can imagine in the post-poll scenario, the BJP is going to be playing a very major role. Also, Aam Aadmi Party is in the fray, contesting a few of the seats this time around. NDTV's Ratnadeep sent us this report. Well, the problem in Myanmar, and then refugees and problem from Manipur and from Bangladesh. And here it will be a big plus factor for my party, the MNF, because these people, whether they are from Burma, from Manipur or from Bangladesh, they all have faith if the MNF form the government here in Aizawl. And therefore,
in order to comfort them, in order to give them shelter, in order to give them food and shelter. So it needs MNF government here. That would be one of the biggest plus points in my coming election. Sir, how positive you are, because all the opposition parties out here, ZPM, are also saying that they are also strong and they are going to make from the government out here? Well, I have a full confidence that we will be able to form the government with an absolute majority. Sir, almost all political pundits have predicted that it's going to be a hung assembly this time. How do you see your party from henceforth? Like, will you go into a coalition if required from the government? Well, it will not be a hung assembly. It will be an MNF government. I have a full confidence in that. Will BJP there as an alliance partner? BJP is not an alliance partner. NDA is there in the center. Here in the state, we don't have any alliance with BJP or any other party. Post-alliance, any chances, sir? Help sir? from BJP? Would you approach BJP? Should you need the help from BJP? So far, they have not approached us. We have not approached them. We are only a partner of the NDA in the center. Here in the state, we support the NDA even on issue based only. And Chhattisgarh are going to the polls in the first phase of elections. NDTV's Anurag sent us this report. So more than 60,000 security personnel have been deployed in Chhattisgarh for a peaceful election. We are in Jagdalpur and you can see the queue. The voters have already queued up to exercise their franchise. They're casting their votes inside. It's a peaceful place, Jagdalpur, and we will try and talk to some of the voters and we'll try to understand that what are the key issues for them. Ma'am, आपका शुभ नाम? ललिता। ललिता जी, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग वोट डालने जो आएंगे अंदर ईवीएम में बटन दबाएंगे? हम लोग को ये मुद्दा है कि हम लोग नगर निगम में काम करते हैं। ठीक है। हमारे पति, हम लोग तो 18-19 साल से काम कर रहे हैं। अभी तक का किसी का नौकरी नहीं हुआ है। एक परमानेंट नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। एक तो नौकरी होगा बोल के सभासा दिलाते हैं कि हमको जिता दो। कांग्रेस वाला बोलता है हमको जिता दो, बीजेपी वाला बोलता है हमको जिता दो, है ना। और भी जो है वो भी बोलता है हमको जिता दो, हम कर देंगे। लेकिन सब बोलते हैं लेकिन बोलते ही हैं, करता कोई नहीं, काम नहीं करता। आप लोगों की नौकरी परमानेंट नहीं हुई? 18 साल हो गया है। 18 साल हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया है, 25 साल वाले भी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। में नहीं रखे हैं, जो भी है ठेका में ही है और मिलता है 8,000 सैलरी। अच्छा, हम लोग कैसे खाएंगे? कुछ नहीं बढ़ आपका नाम मैम? शक्तिदीप। शक्तिदीप, आपकी भी यही समस्या है कि जी आपको मस्टर पर? हाँ जी सर, यही समस्या है। 300-400 लोग हैं। उनका भी सदस्य का हो जाना से ठीक रहता है। और आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम श्रद्धा है सर। आपके लिए क्या इश्यूज रहे? मेरे लिए स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य जी, यहाँ अच्छी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है बस्तर जिला में। है सर, पर डॉक्टर नहीं रहेंगे। डॉक्टर नहीं रहेंगे तो क्या ही कर सकते हैं बताइए। आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप लोग में से कोई? मैं फर्स्ट टाइम। क्या नाम है आपका? अंजुम। आप ही की तलाश थी मुझे। क्या इश्यूज हैं आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम वोटर्स जो यहाँ पर वोट करने आए हैं? एक्चुअली अभी तो मेरे को अभी कुछ महीने ही हुए हैं यहाँ आए, तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही है। पर यहाँ पे जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ये मेरी मदर इन लॉ हैं, ये लोग बोलते हैं। तो आई थिंक हमको ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो पहले से आके हमको क्या कहते हैं, पहले से आके हमको थोड़ा मोटिवेट करे या हमको बताए कि वो क्या करना चाहते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे? सुबह मुद्दा सर सबका जनता के हित में काम करे और छत्तीसगढ़ के विकास पे फोकस करे। अच्छा, नया रोजगार और शिक्षा ये सभी होना चाहिए। साथ में यहाँ पर बिजनेस के लिए भी थोड़े और ट्रैवल यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, यहाँ से आना जाना मुश्किल है। हाँ, रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड नहीं है रायपुर, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बहुत सालों से चल रहा है। अच्छा, आपका शुभ नाम? आदित्य। आदित्य, चलिए। So these are the basic core issues we have seen in the entire country. People still, they say that they vote for education, health facilities or employment, and these are the voters who are casting their votes in Jagdalpur, and they are obviously voting for their core issues. This is what at least they have said. In Jagdalpur, with camera person Rizwan Khan and Anurag Dwari for NDTV. And NDTV's Sunil Prabhu also spoke with the former Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh.
I'm joined by Dr. Raman Singh, who's contesting here from Rajnandgaon, who's just finished praying. So what were your wishes and prayers today? आज हमने भगवान से काली माँ के दरबार में आया, शीश झुकाया और काली माँ से प्रार्थना किया कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सुशासन देगा और शांति और समृद्धि विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आपने पूरा कैंपेन किया पूरा छत्तीसगढ़ में और भी करेगा, आपका क्या मुद्दा है इस बार से लोग? मुद्दा विकास का मुद्दा है, भूपेश बघेल का करप्शन का मुद्दा है, विकास को रोकने का मुद्दा है। और इस बार are you sure that you will be able to get a better majority in Rajnandgaon? 100% राजनांदगांव ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और आप लीड करेगा छत्तीसगढ़? इस बार सर्वाधिक वोटों से राजनांदगांव में पिछले 3 चुनाव से ज्यादा वोट से जीतेंगे। और एक आप मुख्यमंत्री बनेगा सर इस बार? अब ये तय विधायक दल होगा। क्या सर? विधायक दल की बैठक में तय होगा। So here you have it from Dr. Raman Singh, a very categorical statement in terms of the fact that what are the issues, and he is made it very clear that it will ultimately be the BJP MLAs who will decide who will be the chief minister. With camera person Kanal Patra, Sunil Prabhu, NDTV. आपको बोनस दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई में कोई शुल्क नहीं लगेगा, KG to PG पहली कक्षा से लेके अब पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपको पढ़ाई में कोई खर्च नहीं होगा। उसी प्रकार से 35 किलो राशन सभी परिवार को मिलेगा, चाहे APL हो BPL हो। 500 रुपया गैस सिलेंडर, जितने भी जिसके पास भी गैस कनेक्शन है, चाहे उज्ज्वला हो या दूसरे, सबको उसका लाभ मिलेगा। All right, well, to talk more about these key elections that are taking place, that are being touted. Remember, this whole month we have state elections that are being touted as a semi-final. We're now joined by senior journalist Aarti Jairat. And Aarti Jairat, it was interesting to listen to Dr. Raman Singh, who talked about also the corruption of Bhupesh Baghel. And Bhupesh Baghel was talking about the welfare scheme. So that really has been the focus of the Congress party, so much so that the BJP has also been talking about welfare. And this election that we've been saying, touted as the semi-final, and the Congress very confident about Chhattisgarh. Yes, I mean, the opinion polls, are giving that confidence to the Congress because they show the Congress having an edge in Chhattisgarh. Also, this is the first time that the BJP is fighting these state assembly elections, whether it's Chhattisgarh or Madhya Pradesh or Rajasthan. They're fighting without a face, without a chief ministerial face. They're fighting in Narendra Modi's name. So it's an interesting strategy by the BJP. They tried it in one Karnataka. That they've been using in the last couple of elections so the last time around, Raman Singh was the chief minister. Bhupesh Baghel, replaced him. So Raman Singh was the face. Shivraj Singh Chauhan was the chief minister. And, Vasundhara Raje was the chief minister. So they were projected as the face of the BJP in 2018. But this time, nobody is being projected. It is all about Narendra Modi. And Narendra Modi is asking people to vote for him. He's asking people to vote in his name. In fact, I think he wrote an open letter to the people of Chhattisgarh saying precisely that he wants them to vote for him. So it's a very interesting strategy that the BJP is employing. They tried this in Karnataka where it failed because the Congress had very strong regional leaders, local leaders who they projected, Siddaramaiah and Shiv Kumar. But I don't know. This is now we're moving from the south to the northern belt where, Modi is very popular. Opinion polls have shown him to be very popular, and the RSS has a very strong network, in Chhattisgarh, in the tribal belt, which is going to polls today. And, so it would be a very interesting fight. And I think that, although the opinion polls do show a lead for the Congress, there is a certain amount of anti-incumbency which is coming into play. So the Congress's lead is actually less this time, as projected by these polls, than the thumping majority they got last time.
So I think this particular round, which is taking place in Bastar largely, where the RSS network is quite active, and there is quite a lot of polarization between the Christian tribals and the non-Christian tribals. So this is actually quite a crucial phase, and if the BJP wants to take a lead, it has to do very well in this phase, to be able to be in the running for government formation in Chhattisgarh. Right, and let's talk about Mizoram as well, and that's another interesting. It's the first Northeast election after the troubles that we've seen in Manipur, and that we've seen the distancing by Zoram Thanga from the BJP. You also have the Zoram People's Movement there, and everybody is speculating of a hung assembly, and then whatever happens after post polls there. We've always seen BJP is very strong when it comes to managing those sort of partnerships, but the Congress hoping to do somewhat well, but again how well it'll do is anyone's guess, and the BJP will be very keen not to have any sort of alliance involving the Congress returning to the state. Yeah, no, in fact, Mizoram is very, very interesting because I think the shadow of the violence in Manipur hangs very heavy over the state and the current assembly elections. As you know, we saw something very unusual this time. Narendra Modi didn't address a single election rally in Mizoram. Now, ever since he became prime minister, he has campaigned for the BJP in every election, down to municipal polls. Certainly all state assembly elections and of course the Lok Sabha. But although he was scheduled to address an election rally in Mizoram, he did not go. And interestingly, nor did Amit Shah. And, perhaps they also realize that this, Manipur is hanging like a cloud over violence in Manipur is hanging like a cloud over Mizoram. And in fact, Zoram Thanga did make a declaration that if the PM comes to address a rally in Manipur, he will not share the dais with him. So I think, it will be very interesting to see how the Manipur issue plays out in Mizoram. Zoram Thanga is now sort of broadening it beyond Manipur to, Myanmar and Bangladesh, and talking about, how it's important because, the Kuki, Zo, Chin, these tribals have a kinship. And so he's saying that, Mizoram will offer shelter to all refugees belonging to these tribes because this is the kinship in Mizoram. But, so is the ZPM saying something similar. So, it's going to be very interesting to see how this whole Manipur issue plays out in Mizoram. I think maybe it'll, impact even the Lok Sabha polls. So, let's see. I mean, this is going to be quite a crucial election. Right, absolutely. And the Congress has been quick to point out about the Prime Minister not campaigning because of, the people on the ground, they said, were not in favor of the BJP and would, not be there or not support the Prime Minister. Sanjay Singh, your response to that, the Mizoram elections taking place, it's a multi-cornered contest and many are anticipating a hung assembly. See, in contrast to other 4 states which are going to poll, Mizoram, the electoral vote size in Mizoram is very small. Number of candidates contesting Mizoram election are also very small. But import of Manipur elections is very strong in terms of Indian polity and northeastern region as also on Indian society. These elections, of course, would be very closely watched. If you look at last assembly elections in Mizoram post-election things became far more interesting than the election itself. Will there be a repeat of that situation? Well, that would be known only after declaration of the results of these assembly elections. But yes, elections are very interesting there. And what Aarti said, I broadly agree with what she had said. Fact remains that Zoram Thanga for long has been the tallest leader known widely across the country. And but yes, during election time, we have seen new alliances form, and also seen withering away of old alliances. The alliance with BJP was
I think was a post-poll scenario understanding. The BJP had one MLA after those elections had happened last time. Yes, But one in government MLA. formation, of course, there was a great role of the BJP to play. It's part of NDA. And therefore, I think in terms of talking point for the opposition and for people at large, that again becomes very interesting. The Congress, of course, would try and regain its lost ground in Mizoram. Northeast, at one point in time, Congress was everywhere. Then regional parties came up. Regional parties, of course, are very strong. But the political stability which we have seen in Northeast for past decade, I think that stability was not there. Even if regional parties were there and those same parties were there, almost all same parties were there. That, I think, was a new factor with BJP chipping in, with alliances being formed. That would be put to test, I think. And lots of accusations of horse trading as well, you know, in Northeast elections. But also, Sanjay Singh, very quickly on Chhattisgarh, that's also, you know, the first phase of elections today, a state that the Congress seems very confident of. They're hopeful for Madhya Pradesh and Chhattisgarh and, you know, creating this mahal ahead of 2024. Today's election by itself, in Bastar region, 20 seats going to Bastar region, that's a Naxal infested area, as we know. So therefore, it's a challenge to security forces. Few days ago, there were incidents of violence, bomb being exploded, CRPF Jawan injured, a BJP leader killed. And therefore, these election Commission, in its wisdom and rightly so, has separated these elections from rest of the state. In last election, you're giving out the details of last assembly election, but after two by-election, Raman Singh is in the current assembly. Raman Singh is only BJP MLA from that particular region, out of 20 seats. Congress, right. I'm so sorry, Sanjay Singh. I'm going to have to interrupt you. The Prime Minister is addressing a rally in Chhattisgarh. This is for the next phase of elections, which will take place in 10 days. Thank you both for joining us. Let's just listen in to what the Prime Minister is saying. साथियों, आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव भी हो रहा है और अब तक जो मुझे खबर मिली है, बड़े उत्साह उमंग के साथ भारी मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि बिना डरे, बिना हिचके मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र का उत्सव है, हर नागरिक का उत्सव है। ये छत्तीसगढ़ के नए भविष्य के निर्माण का उत्सव है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालकर आपको छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार बनानी है। साथियों, भारत में हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 9-10 करोड़ के आसपास है, लेकिन आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस के लिए आदिवासियों का कोई वजूद ही नहीं था। उन्हें उनके नसीब पे छोड़ दिया था। कांग्रेस ने कभी आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जबकि भाजपा ने हमेशा आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। क्या कभी आपने भी सोचा था कि आदिवासी परिवार से निकली, गांव जंगलों में पैदा हुई, गरीब घर में पैदा हुई एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी?
आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर किसी को गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कांग्रेस ने उन्हें रोकने की, उनके अपमान की इतनी कोशिश की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदिवासी समाज की बहनों को ये सम्मान भाजपा ने ही दिया है। साथियों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे लगता था कि आदिवासियों के लिए पैसे खर्च करना मतलब गड्ढे में पैसे डालना, बर्बाद करना, यही उनकी सोच थी। लेकिन भाजपा ने जब भी आदिवासी हितों की बात आई, सरकार का खजाना खोल दिया, तिजोरी खोल दी। दोस्तों, भाजपा ने आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट, ये याद रखना भाइयों, याद रखोगे? ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बताइए, याद रखोगे? पक्का रखोगे? आपने मुझे जो काम करने का मौका दिया ना, इस सेवा काल है मेरे लिए, तो सत्ता काल नहीं है। मैं सत्ता में विश्वास नहीं करता, मैं तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूं और आपने मुझे सेवा का ही काम दिया है। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना। आप खुश हैं? आप खुश हैं? आपको संतोष हुआ? ये मोदी का काम है। आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, हमारे यहां गांव-गांव में अंग्रेजी वाली स्कूल तो है नहीं। गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जा नहीं सकता। और ये कांग्रेस के लोगों ने ऐसे नियम बनाए थे कि गरीब का बच्चा अगर अपने गांव की भाषा में पढ़ा है, अपने आदिवासी की भाषा में पढ़ा है, अपने राज्य की भाषा में पढ़ा है, तो वो बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था, इंजीनियर नहीं बन सकता था। क्योंकि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको अंग्रेजी आनी जरूरी है। देश आजाद हो गया, लेकिन इनके दिमाग में से अंग्रेजी का भूत नहीं गया। मुझे बताइए भाई, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पेट में दर्द हो रहा है, सर पे दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पांव में दर्द हो रहा है, तो क्या डॉक्टर आपको अंग्रेजी में पूछता है क्या? आपकी भाषा में पूछता है कि नहीं पूछता है? आप अपनी भाषा में बताते हैं तो वो समझता है कि नहीं समझता है? तो फिर डॉक्टर बनने के लिए अंग्रेजी जरूरी है क्या? इंजीनियर बनने के लिए अंग्रेजी जरूरी है क्या? ये मोदी है जिसको आपकी तकलीफ का पता है, और इसलिए मैंने तय किया अब गरीब माँ का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। जिस भाषा में वो पढ़ता है उसी भाषा में डॉक्टर बनेगा, उसी भाषा में इंजीनियर बनेगा। पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार आदिवासी परिवारों को
लाखों नए पट्टे दे चुकी है। 9 साल पहले तक जहां 23,000 सामुदायिक पट्टे दिए गए थे, सामुदायिक पट्टे, वहीं हमने 80,000 से अधिक नए सामुदायिक पट्टे दिए हैं। और इसीलिए हर छत्तीसगढ़ी एक ही बात कहता है, भाजपा आवत है, भाजपा, भाजपा। इसलिए सरगुजा ने भी हुंकार भरी है, अब की बार, अब की बार, अब की बार मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भी रही है। जब जब कांग्रेस सरकार में आती है, तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो, इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है, वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही है। बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी को गोली मार करके उसकी जीवन तबाह कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, क्या ये बम बंदूक के साए में जीना है क्या? ये बम बंदूक के साए में जीना है क्या? कितना ही पैसा क्यों न हो, बेटा शाम को घर न लौटे और बेटे की लाश घर पे आए, उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग? और इसलिए भाइयों बहनों, हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है। हटाओगे? बिल्कुल साफ कर दोगे? हर कोने में से हटाओगे? हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे? पक्का हटाओगे? जरा पीछे वाले हाथ ऊपर करके बताइए, हटाओगे? हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे? यहां सरगुजा संभाग में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस सरकार में सरगुजा क्षेत्र में मानव तस्करी और नशे का कारोबार बेतहाशा बढ़ गया है। यहां बहनों बेटियों को अपराधी निशाना बना रहे हैं। हमारे आदिवासी परिवारों की, गरीब परिवारों की अनेक बच्चियां गायब हुई हैं। बेटियां कहां गई, इसका कांग्रेस के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। यहां कांग्रेस द्वारा वोट के लिए अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण यहां तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो गया है। इसलिए पूरे सरगुजा से एक ही आवाज आ रही है, बच्चा बच्चा एक ही बात बोल रहा है, माता बहनें एक ही बात बोल रहे हैं। गांव हो या शहर हो, हर कोई एक ही बात कह रहा है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो,
बदल के रहिबो। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने दशकों तक दिल्ली में सरकार चलाई है। देश के कोने कोने में उन्हीं का राज था। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस के सिवाय किसी का झंडा ही नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को सिर्फ झूठे नारे दिए। अगर आज मेरे 10 साल के सेवा काल में इतना काम हो सकता है, तो उनको तो 5-5, 6-6 दशक मिले थे। वो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? लेकिन उनको अपने जेब भरना, घर भरने के सिवा कोई काम ही नहीं था। 5 दशक से कांग्रेस बोल रही है कि गरीबी हटाएंगे। 50 साल से क्या बोल रहे हैं? गरीबी हटाएंगे। तो फिर कब तक ये गाना गाते रहोगे? कहीं से तो हटाओ। गरीबी हटाएंगे कहते कहते कांग्रेस के नेता खुद हर साल और अमीर होते जा रहे हैं। पहले साइकिल पे चलते थे, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं। जबकि ये भाजपा सरकार है जो गरीबी हटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। आपका ये मोदी गरीबी से ही निकल करके आया है। एक गरीब के बेटे को आपने यहां तक पहुंचाया है। मैं गरीब का दर्द भली भांति समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी को जिया है। मैंने गरीबी को भाषण में नहीं सुना है, अखबार में नहीं पढ़ा है, किताबों में नहीं पढ़ा है। मैं गरीबी झेल करके आया हूं। जब कोरोना का संकट आया तो सारी दुनिया मौत से मुकाबला कर रही थी। दुनिया का कोई देश नहीं था जो लोग जिंदगी बचाने के लिए जूझते न हो। सारा दुनिया का जीवन ठप हो गया था। हमारा देश भी बचा नहीं था। और तब जाकर के मैंने तय किया था, मुसीबत बहुत बड़ी है। दिन रात दौड़ूंगा, जागूंगा, मेरे देश को बचाऊंगा, मेरे देश के लोगों को बचाऊंगा। याद कीजिए वो संकट के दिन, याद कीजिए अपने रिश्तेदार भी घर तक आने के लिए हिम्मत नहीं करते थे। उस समय ये मोदी दिन रात आपके लिए दौड़ता था, काम करता था। मैं सोचता था बाहर कारोबार नहीं है, लोग घर के बाहर जा नहीं पा रहे हैं, मेरे आदिवासी बच्चों का क्या होगा, मेरे गरीब बच्चों का क्या होगा। क्या मेरे देश में मेरा गरीब का बच्चा भूखा सो जाएगा? मेरे आदिवासी का बेटा बेटी भूखे सो जाएंगे? मैंने उसी दिन तय कर लिया था, सरकार के भंडार खोल दूंगा, लेकिन गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। अनाज के भंडार खोल दिए थे। इतना लंबा समय हो गया, आज भी गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। भाइयों बहनों, मुझे मेरे देशवासियों ने इतने आशीर्वाद दिए, इतने आशीर्वाद दिए, और जब गरीब के पेट में अन्न जाता है ना, गरीब का बच्चा जब भूखा नहीं सोता है ना, तो उसके आशीर्वाद हमारी जमीन पर भी नजर आते हैं, हमारी फसल में भी नजर आते हैं, और हमारा किसान भी पैदावार ज्यादा करता है। और इसलिए मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, बहुत बड़ा फैसला किया है। मैंने निश्चय कर लिया है, और ये मोदी की गारंटी है। ये योजना यूं तो दिसंबर में पूरी होने वाली थी,
80 करोड़ परिवारों को जो आज अनाज मिलता है वो दिसंबर में पूरा हो जाने वाला था, लेकिन ये आपका बेटा आपके लिए ही जीता है और इसलिए हमने तय किया है आने वाले 5 वर्ष के लिए उन सभी परिवारों को मुफ्त में राशन मिलेगा। आपके मोबाइल की लाइट चालू करके गरीबों के कल्याण के लिए आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। गरीबों के कल्याण के लिए आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए। सब लोग अपना मोबाइल निकालिए। ये गरीबों के कल्याण का निर्णय है। ये गरीबों के बच्चों को रात को खाने पिया न सो जाए इसके लिए निर्णय है। आप अपना लाइट चालू करके इसका समर्थन कीजिए। ये गरीबों की भलाई के लिए हुआ काम है भाइयों बहनों। आपका ये प्यार और ये गरीबों के लिए आपका प्यार, ये आपका गरीबों के लिए प्यार है, मेरे आदिवासी बच्चों के लिए प्यार है। आपका ये समर्थन यही मेरी ताकत है भाइयों बहनों। बोलो मेरे साथ भारत माता की, मेरे साथ बोलो भारत माता की। हमारे देश में अब किसी गरीब का बच्चा भूखा नहीं रहेगा। कोई मां बहन बेटी भूखी नहीं सोएगी। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। भाजपा ने कहा था हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। भाजपा ने कहा था हर घर में शौचालय बनाएंगे। भाजपा ने कहा था हर गरीब के घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देंगे। भाजपा ने कहा था महिला आरक्षण का कानून बनाकर दिखाएंगे। भाजपा ने कहा था 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाएंगे। हमने सारी गारंटी पूरी कर दी भैया, सारी गारंटी पूरी किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? यही तो मोदी की गारंटी होती है। और भाजपा ने कहा था अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाएंगे। और ये मोदी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनता है और 4 करोड़ गरीबों का घर भी बनता है। प्रभु श्री राम के ननिहाल, ये तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है और आपके लिए तो ये कई गुना अधिक खुशी का पल है। और मुझे पक्का विश्वास है इस बार प्रभु राम जी का ननिहाल भी मोदी को भरपूर आशीर्वाद देगा। साथियों, मोदी ने गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को उनका पक्का घर देने की गारंटी दी है। देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को इस गारंटी का फायदा मिल चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गरीबों को पक्के घर नहीं मिलने दे रही है। मैं जोर लगाता रहा, समझाता रहा, लेकिन वो नहीं किया। अब मैं आपको कहता हूं कि अब कांग्रेस की विदाई पक्की है, आपका घर भी पक्का है। आपके पास अभी तक पक्का आवास नहीं है, आप लिख लीजिए मोदी की गारंटी। यहां भाजपा सरकार बनते ही फिर से मेरा काम शुरू हो जाएगा। आपको पक्का घर दे करके रहने वाला।
घर पे जाके तुम गूगल कर लो, मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो. यू नो, दिस इज समथिंग दैट वी डू ऑन अ डेली बेसिस. मतलब हम सभी गूगल यूज करते हैं, हम सभी विकिपीडिया पे यूज करते हैं, बट डिड यू नो कि गूगल एक्चुअल में गूगल नहीं होना चाहिए था, वो होता गूगल. वहां से एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से गूगल बन गया. अब हुआ ये, जब स्टार्ट हुआ पूरा गूगल का आइडिया, आई टोल्ड यू पहले के एपिसोड में दैट द फर्स्ट नेम वाज बैकरब. अब बैकरब से नाम जब चेंज करना था तो द फाउंडर्स ऑफ गूगल, लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू टर्म, और उनको एक टर्म मिलती है गूगल. गूगल का मतलब क्या होता है इन मैथमेटिक्स? इट्स नंबर 1 फॉलोड बाय 100 zeros. तो आइडिया ये था कि अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम एक साथ दिखाने वाले हैं, इट क्लियरली सिग्निफाइज द वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. तो वहां से दिमाग में वर्ड आ गया गूगल. लेकिन जब डोमेन खरीदने गए तो उस टाइम पे गलती से GOOGOL की जगह GLE टाइप हो गया, और वहां से बना गूगल, जो आज हम सभी डेली बेसिस पे यूज करते हैं. बट डिड यू नो इट वाज अ स्पेलिंग मिस्टेक दैट एंडेड अस विद गूगल. A debate has many facets. Perhaps no one right answer. Left, right, and center. Conversations that get to the core of the debate. And there's too much talking but very little being said. Too many voices but hardly any being heard. You turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. From breaking news to in-depth analysis, covering the latest developments across politics, business and technology, bringing you stories that shape our nation and the world. अक्सर ऐसा होता है कि आपके फोन के स्क्रीन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. मे बी यू आर ऑन अ वेब पेज, या मे बी यू आर रीडिंग अ बुक लेट्स से, या अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, कई बार बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. समटाइम्स इट्स दिस लेजी फीलिंग, या समटाइम्स इट्स मोर कन्वीनियंट कि अगर कोई आपको वो सब चीज़ें पढ़ के सुना दे. लेट मी गिव यू अ टेक टिप. आपके फ़ोन में एक इनबिल्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू स्पीच का. Either you are using Android or iOS, फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा. You just need to dig deep into the accessibility settings, और वहाँ से you can even customize the output speech options कि आपको किस स्पीड में वो स्पीच चाहिए, या फिर किस टाइप की आपको वॉइस चाहिए, और आप बड़े आराम से जो भी आपके स्क्रीन पे है वो सुन सकते हैं. Text to speech is a feature that reads digital text aloud. Words on a computer or other digital device can be converted into audio using this. कभी कभी ये आलस के मारे आप करेंगे, कभी कभी करेंगे आप कन्वीनियंस के मामले में, बट इट्स अ नाइस टिप टू फॉलो कि आप आपके स्क्रीन पे जो भी है वो सुन भी सकते हैं, बिकॉज व्हाट यू आर यूजिंग इज नॉट अ डम फोन, इट्स अ स्मार्टफोन, सो मेक यूज ऑफ इट. This show isn't just about news from the southern states. It's one that looks at the rest of India and the world from a diverse South India point of view, because NDTV has always taken the southern view seriously. कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं. शर्म नाम की चीज नहीं है इनको. इनको साफ करना पड़ेगा भाइयों, साफ करना पड़ेगा. करोगे? हर पोलिंग बूथ में से सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए. आज आप देख रहे हैं कि यहां के मुख्यमंत्री, उन पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी उनसे किनारा कर लिया है. ये आरोप इतने गंभीर है, सबूत इतने सटीक है
कि कांग्रेस से अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। हो सकता है आज जब मैंने कहा तो हो सकता है कांग्रेस के नेता कुछ उनके बचाव में दो चार आधी अधूरी बात बोल करके खाना पूर्ति कर लें, लेकिन कांग्रेस का एक नेता इनकी पापों के पक्ष में एक शब्द बोल नहीं रहा है। सब चुप हो गए क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने अपने और अपने बच्चों की भलाई के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको मेरे विश्वास पे भरोसा है? आपको भरोसा है? आपको मैं गारंटी देता हूं, महादेव सट्टेबाजी घोटाले में भाजपा दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, कितना ही चमरबंदी क्यों ना हो, आपके बच्चों को बर्बाद करने वाले ऐसे लोगों को जेल जाकर के जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। आपके बच्चों के साथ खेला गया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के नेताओं को कभी आपके बेटे बेटियों की, आने वाली पीढ़ियों की परवाह नहीं रही है। कांग्रेस के नेताओं ने आपके बच्चों को नौकरी देने का भी वादा किया था, लेकिन पीएससी की भर्तियों में कांग्रेस के नेताओं ने अपने बच्चों को भर्ती कर लिया। आपके बच्चे बेरोजगार रहे, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तो यहां सरकारी कर्मचारियों की भी परेशानी पता चलती रही। यहां कांग्रेस ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर एक बहुत बड़ा उद्योग तैयार किया है, सरकारी कर्मचारियों को परेशान किया है। आज आप सब परेशान हैं और कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरती जा रही है। क्या इसलिए छत्तीसगढ़ में कहा जाता है? यही काम चर्चा है। हर कोई कहता है, कोई भी सरकारी दफ्तर से बाहर निकलता है पूछेगा तो यही कहता है 30% कक्का, तो आपका काम पक्का। ये एजेंट यही कह रहे हैं भाई, पहला 30% कक्का, आप देखिए फिर काम पक्का। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने तो यहां के किसानों को भी झूठ के कुचक्र में फंसा कर रखा है। कांग्रेस वाले दावा करता है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किया है, लेकिन सच्चाई यही है कि इसमें भी कांग्रेस ने घोटाला किया है। ये भाजपा है जो किसानों के छोटे छोटे खर्चों का भी ध्यान रखता है। पीएम किसान सम्मान निधि से छत्तीसगढ़ के लगभग 40 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में हमने सीधे पैसा भेजा है। यहां सूरजपुर जिले के भी 1.25 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ के धान किसानों को कांग्रेस ने हमेशा झूठी कहा है। यहां के धान किसानों से पूरा धान केंद्र की भाजपा सरकार ही खरीदती है। हमने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यहां के किसानों को दिया है। और अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने धान किसानों के लिए जो संकल्प लिया है, उससे आपको कांग्रेस की तुलना में कहीं अधिक पैसा मिलेगा। मक्का किसानों, कोदो कुटकी, दलहन तिलहन किसानों को भी भाजपा और अधिक लाभ देगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ भी तो कांग्रेस ने धोखा ही किया है। छत्तीसगढ़ की नई भाजपा सरकार अधिक से अधिक तेंदुपत्ता खरीदने वाली है, अधिक दाम भी देगी और उन्हें ज्यादा बोनस भी देगी। मेरे परिवारजनों, सूरजपुर का ये पूरा इलाका खनिजों के लिए, कोयले के लिए जाना जाता है। कांग्रेस की सरकार ने आपके कोयले में भी घोटाला कर दिया। कांग्रेस ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में भी घोटाला किया। खनिज का जो पैसा आपको मिलना था वो पैसे भी कांग्रेस ने चुरा लिया। लेकिन भाजपा इस कोयला क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित है। जहां कोयले के भंडार समाप्त हो गए, उन खदानों के लिए भाजपा सरकार ने एक योजना बनाई है। कोयला रहित भूमि पर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। सूरजपुर जिले में भी केनापारा को
इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ बटगांव में सौर ऊर्जा पार्क पर भी तेजी से काम चल रहा है। इससे यहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 3 दिसंबर को जैसे ही कांग्रेस सरकार जाएगी, वैसे ही यहाँ विकास की गति और तेज की जाएगी। यहाँ नए प्रोजेक्ट आएंगे, यहाँ का औद्योगिक विकास तेज किया जाएगा। भाजपा में सरगुजा संभाग में आधुनिक अस्पतालों के निर्माण पर भी बल दिया जाएगा। तब आपको बीमारी की स्थिति में इलाज के लिए दूर बनारस या रायपुर तक नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, भाजपा सबका साथ सबका विकास पर भरोसा करती है, इसलिए छत्तीसगढ़ भाजपा पर भरोसा कर रहा है। सरगुजा की हर सीट पर, हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए। खिलेगा? खिलेगा? गांव-गांव जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना बस मोदी जी आ गए, कार्यक्रम शानदार हो गया, चलो सो जाओ, ऐसा नहीं करेंगे ना। पक्का काम करेंगे, घर घर जाएंगे, हर पोलिंग बूथ को जिताएंगे। जरा हाथ ऊपर करके वादा करो, करेंगे? पक्का करोगे? अच्छा, ये तो आप भाजपा का काम करोगे, मेरा काम करोगे? मेरा खुद का काम। क्यों ठंडे हो गए भाई? भाजपा का तो करोगे, मोदी का नहीं करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? पक्का करोगे? ये मेरा काम है, लेकिन करना पड़ेगा। देखिए, आप यहां से जाने के बाद अपने गांव जाए, लोगों के घरों में जाए और उनको कहना कि हमारे मोदी जी अपने सरगुजा इलाके में आए थे और मोदी जी ने आपको जोहार कहा है। इतना कह देंगे, हर किसी को कह देंगे, मेरी इतनी बात पहुंचा देंगे, मोदी जी आए थे, आपको जोहार कहा है, कह देंगे। NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debate, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. टेक्नोलॉजी तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ NDTV नेटवर्क पे, हर रोज, हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When it comes to sports, we set the ball rolling. Because we have our eyes on the ball. Because we want to get you the best. Latest updates. Top interviews. And analysis. From around the globe. Election in 5 states, 679 seats, over 16 crore voters. A crucial semi-final before 2024. NDTV brings you the politics, the promises, the stories and backstories, every twist and turn of 5 high-stake battles. When it comes to elections, India trusts NDTV. फ्रेंड्स, इन दिस सेगमेंट मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं अबाउट योर गैजेट्स. यू नो, योर डिवाइस माइट बी एक्सपोज टू सम क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज, जिसके बाद में आपका डेटा, आपका इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करके रखा है उस फोन में, वो सब गलत हाथों में जा सकता है. अभी ऐसा ही कुछ हुआ व्हेन द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम फॉर इंडिया एक एडवाइजरी इशू करती है एंड वो बताती है कि मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड, टॉकिंग अबाउट एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 12L
एंड साथ में Android 13 भी, ये कुछ क्रिटिकल इश्यूज को पोज कर रहे हैं. देयर आर सम मेजर सिक्योरिटी फ्लॉज और इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि गूगल एक अपडेट इशू करेगा और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बाद में उस अपडेट को अपने अपने डिवाइसेस में पुश करेंगे एंड आपके पास जब वो अपडेट आए तो आपको उसे इंस्टॉल करना है. और आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके फ़ोन का जो डेटा है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने फ़ोन में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है वो कहीं गलत हाथों में चला जाए, कोई आपके फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल कर ले, कोई एक मलिशियस ऐप आपके फ़ोन में आ जाए. तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए द फर्स्ट स्टेप that you can do and you have to do is to update your devices. So make sure आज के बाद keep it like a regular habit. Once in a while, sometimes तो आपको notification खुद से मिल जाएगा, but if it doesn't come, once in a while, every 15-20 days, normally just check for updates for all your devices. For example, if you have a camera, अब आपने एक बार एक कैमरा खरीदा है जो 2 साल आपको हो चुके हैं उसको खरीदे हुए और आप 2 साल से इस कैमरा को यूज़ कर रहे हैं and you're just using it like normal. यू नेवर नो, क्या पता उसके लिए एक नया फर्मवेयर अवेलेबल हो जहां पे उस कैमरा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो गई हो या उसके अंदर कुछ नए फीचर्स मिल गए हो. इफ यू जस्ट दिस इज NDTV and you're watching NDTV 24/7. Good afternoon and welcome back. You're watching NDTV 24/7. I'm Rishika Barua. The big story today, of course, is the 5 state elections that have begun with polling in Chhattisgarh and in Mizoram. We will continue to get you all the very latest from ground zero as our team of reporters have fanned out across key constituencies in poll-bound Chhattisgarh and Mizoram. We will go to them and get you all the very latest on this big political story. First up, the headlines. It is the first phase of election in Chhattisgarh today. 20 of the 90 seats are being polled. Mizoram is voting in a single phase. It's a multi-cornered contest in the state this time. A CRPF jawan was injured in an ID blast in Sukma just as polling began in Chhattisgarh this morning. No other casualties have been reported. After failed attempt, Zoramthangma, the Chief Minister of Mizoram, finally cast his vote in a successful second attempt. He couldn't vote earlier because of EVM failure. We'll work from jail if needed, says Aam Aadmi Party leader Atishi. She's come out to say that Arvind Kejriwal will remain Chief Minister even if he is arrested by the Enforcement Directorate in the liquor policy case. She says we'll continue to hold cabinet meetings from jail if needed. Meanwhile, the air emergency in Delhi NCR and other parts of North India continues. There are big measures that have now been put in place in Delhi. The odd-even vehicle scheme will come into place from Diwali, will last for a week. All schools have been shut across Delhi NCR till the festival except for classes 10 and 12. The Gaza government, controlled by the Hamas, has said that the death toll in Gaza has crossed over 10,000 people. Over 4,000 children are among them. This as Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu says Israel is open to little pauses in the war. And voting has begun in the 5 state assembly elections today. Voting is taking place in 40 seats in Mizoram in a single phase and 20 key seats in Chhattisgarh in the first phase of the Chhattisgarh election. This officially marks the beginning of an exercise that has been billed as the virtual semi-final before the general elections. Chhattisgarh, which like I said is going to have elections in 2 phases, is polling in the first phase today, which is 20 assembly seats. Mizoram, of course, is seeing a single phase election, as are all of the other states of Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana that will be voting through the course of this month.
So all 40 seats in Mizoram are seeing polling as we speak. But it's crucial in Chhattisgarh because 12 assembly seats of the Naxal-hit Bastar division are among the 20 constituencies where voting is taking place. Special arrangements, of course, have been made to ensure law and order situation is maintained. About 60,000 security personnel have been deployed for the conduct of these polls in the sensitive zone. It is expected to be a close contest between the Congress and the BJP, as both parties are trying to win the support of tribal voters in the state. The grand old party, the Congress, is of course banking on its legacy of welfare schemes and support of for tribal rights, while the BJP is focusing on development and infrastructure. In 2018, the Congress won 17 of the 20 seats, while the BJP had won 2. That's, of course, talking about this particular phase. The second phase of voting in Chhattisgarh is going to take place on the 17th of November. Votes, of course, for all 5 states will be counted on the 3rd of December. Now, remember, Chhattisgarh has already seen a fair bit of, like I said, these are sensitive zones. There was an IED blast. It was reported from Sukma this morning. One CRPF Jawan has been injured in the blast and no other casualties, thankfully, have been reported. Polling across the sensitive zones in Chhattisgarh, for the benefit of our viewers, will be taking place from 7 a.m. to 3 p.m. Now, remember, polling usually continues till about 6 p.m. in the evening, but will end at 3 p.m. across the Maoist hit zone. In Mizoram, the contest is between the ruling Mizo National Front and the Zoram People's Movement, the ZPM, the Congress, and of course the BJP, with the Aam Aadmi Party that has also joined the race this time around. And joining us for more on what's happening in Mizoram, Ratnadeep Chaudhary joins us from Ground Zero. Ratnadeep, it's been quite a morning, hasn't it, with the Chief Minister, Zoramthangma, actually appearing to cast his vote at 7 a.m. sharp. And at the same time, it was a bit of a missed situation because the EVM where he was casting his vote malfunctioned. So he went back and then he came back to cast his vote. Now he's the Chief Minister. And, you know, I don't know if that luxury is really extended to other people. I don't know how many people have faced such an issue and whether they've actually had the chance to come back around and cast a successful vote the second time around. But that aside, get us a sense of where you are, what's happening, what is the voter sentiment, what are people at the polling stations saying. Let's hear from them as well. That's right. In fact, Chief Minister Zoramthangma actually came right at the beginning, before 7 a.m. and stood in the queue. He was the first man and he wanted to vote cast the first vote, but he was not fortunate enough to do that. The EVM malfunctioned and then he went out. He went to other polling booths in his constituencies and came back at around 9:30 to cast his vote. In fact, the polling process is continuing in a rather slow pace, although since morning there have been large turnout, and in fact at 11 a.m. the official figure that we got from the Election Commission of India is that about 26% polls have been casted. In fact, we can show here now 5-time former Chief Minister of Mizoram, Mr. Lalthanawala, has come to cast his vote. Sir, you have come to cast your vote. You were 5-time Chief Minister, yes, and now your party, the Congress, in the last election did not do well, but now this time you have a new leader, you have some new faces. How do you see this election, given the fact that apart from MNF, you have the ZPM, Zoram People's Movement, also in this fray? So this multi-corner fight, is it going to make difficult for the regional parties, or is there a scope of Congress revival? Well, for the Congress, there is always scope for growing and winning, because it's an old party, and today what we need is the religious freedom. So under the Congress, the religious freedom is there, and today in Mizoram also we have emerged very strong under the new leadership, and I fully support them. Therefore, we have a very good chance. We have a very good chance of winning. But how do you see the emergence of ZPM, who talks about a new way of governance? I see, but the new way of governance, but I don't know what is their old way of governance. Let them tell me.
They're kind of criticizing the way you ruled the state for 5 terms, or Mr. Zoramthanga had ruled the state for 3 terms. I have nothing to say about Mr. Zoramthanga. He's an incumbent chief minister. But whatever permanent, what should I say, assets that have been created in Mizoram have been created under the government of Congress. One last thing, the BJP... Name any permanent asset in Mizoram. Yeah. Which is not done by the Congress government. Right, sir. Also, one last thing that I want to ask you is that the BJP putting up 23 candidates, they're trying to push and make an entry. Now, how do you see this BJP's attempt in this election? Well, their attempt, I don't know anything about it, but then BJP will not win a single seat in Mizoram. And you're hopeful that your party will again retain power? Yes, of course, under the new leadership. It's now my party is under the leadership of a new, younger leadership, so we have very good chance of winning and forming the next government again. Yeah. So there you are, 5-time former Chief Minister of Mizoram, Mr. Lal Thanhawla, clearly saying that he sees a chance of a revival of his party, Congress. He has taken retirement from active politics and given the leadership to young leaders, and he feels that his party is going to revive in these elections, where his party is locked in a multi-corner fight with the ZPM and the MNF, the ruling party, and in some seats even the BJP. Right, Ratnadeep, it's going to be very interesting to see how the dynamics really change with that multi-cornered contest. Very interesting, because we asked you to speak with voters, and the person you actually saw walking right behind you was none other than a 5-time Chief Minister himself. We'll continue to track the details of this story with you, Ratnadeep. Let's also very briefly play out for our viewers the report you sent us a short while ago. Well, the problem in Myanmar, and then refugees and problem from Manipur and from Bangladesh. And here it will be a big plus factor for my party, the MNF, because these people, whether they are from Burma, from Manipur or from Bangladesh, they all have faith if the MNF form the government here in Aizawl. And therefore, in order to comfort them, in order to give them shelter, in order to give them food and shelter. So it needs MNF government here. That would be one of the biggest plus points in my coming election. Sir, how positive you are, because of the opposition parties out here, ZPM, are also saying that they are also strong and they are going to form the government out here? Well, I have a full confidence that we will be able to form the government with an absolute majority. Sir, almost all political pundits have predicted that it's going to be a hung assembly this time. How do you see your party from henceforth? Like, will you go into a coalition if required from the government? Well, it will not be a hung assembly. It will be a MNF government. I have a full confidence in that. Will BJP there as an alliance partner? BJP is not an alliance partner. NDA is there in the center. Here in the state, we don't have any alliance with BJP or any other party. Post-alliance, any chances, sir? Help from BJP? Would you approach BJP? Should you need the help from BJP? So far, they have not approached us. We have not approached them. We are only a partner of the NDA in the center. Here in the state, we support the NDA even on issue based only. And like I said, our team of reporters have fanned out across the key constituencies in both Mizoram and Chhattisgarh to bring us the very latest. In fact, those are pictures of the former Chief Minister, Raman Singh, offering prayers. He's, of course, the candidate from the BJP. But interestingly, the BJP hasn't projected him as the chief ministerial face this time around in the election, fighting the election under the leadership of Prime Minister Modi. But my colleagues Sunil Prabhu and Anurag Dwari are at Ground Zero in Chhattisgarh, and they've sent us these reports.
I'm joined by Dr. Raman Singh, who's contesting here from Rajnandgaon, who's just finished praying. So what were your wishes and prayers today? आज हमने भगवान से काली माँ के दरबार में आया, शीश झुकाया और काली माँ से प्रार्थना किया कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सुशासन देगा और शांति और समृद्धि विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आपने पूरा कैंपेन किया पूरा छत्तीसगढ़ में और भी करेगा, आपका क्या मुद्दा है इस बार से लोग? मुद्दा विकास का मुद्दा है, भूपेश बघेल का करप्शन का मुद्दा है, विकास को रोकने का मुद्दा है। और इस बार are you sure that you will be able to get a better majority in Rajnandgaon? 100% राजनांदगांव ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और आप लीड करेगा छत्तीसगढ़? इस बार सर्वाधिक वोटों से राजनांदगांव में पिछले 3 चुनाव से ज्यादा वोट से जीतेंगे। और एक आप मुख्यमंत्री बनेगा सर इस बार? अब ये तय विधायक दल होगा। क्या सर? विधायक दल की बैठक में तय होगा। So here you have it from Dr. Raman Singh, a very categorical statement in terms of the fact that what are the issues and he is made it very clear that it will ultimately be the BJP MLAs who will decide who will be the Chief Minister. With camera person Kanal Patra, Sunil Prabhu, NDTV. चुनाव के रंग हैं और छत्तीसगढ़ में दादा के साथ में उनकी मोपेड पे सवार हो गया हूँ बस्तर के इलाके में। दादा, आपका नाम क्या है? चेतन सिंह ठाकुर। चेतन सिंह ठाकुर, शंकर जी के मंदिर में हैं आप? हाँ जी, चित्रकूट शिव मंदिर में हूँ। अच्छा, तो ये बाल इतने सालों से क्यों बढ़ा है? कितने सालों से बढ़ा है पहले? ये मेरा 30-35 साल हो गया। 30-35 साल से कभी कटवाया ही नहीं? 3 बार कटवाया ना। मेरा बाप पिताजी खत्म हुआ, माँ खत्म हो गई। अच्छा। उतना समय संस्कार किया था ना इलाहाबाद में। अच्छा अच्छा। गया था पूरा इलाहाबाद, पूरी गंगा गोया सब ही गया था उधर। तो अभी परिवार में कितने लोग हैं आपके? अभी हम 7 लोग हैं। 7 लोग हैं? जी हाँ। और यहाँ शंकर जी के मंदिर में आप काम करते हैं? हाँ जी हाँ, मेरा 14 साल हुआ। अच्छा। घर से 14 साल वनवास निकल गया मैं। बाल को आप नाग देवता कहते हैं? हाँ जी हाँ। ये वैसी है ना, रंग रूप है, वेशभूषण है ना। अच्छा। हाँ। तो इसको मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होता है? नहीं, बाल को बांधने में? नहीं, वो तो दिक्कत अपना शक्ति रहता है ना है उसके पास। अच्छा, ये शक्ति है आपका? हाँ। क्या शक्ति है इसमें? इसमें शक्ति है जाने का, रेंगने का, बोलने का, सबका सब देने का भी शक्ति है। मतलब पूरी ताकत आप 3 बालों में? हाँ, 3 बालों में। तो हम लोगों को भी पूजा करनी चाहिए? हाँ चाहिए ना। जब किस्मत वाले को मिलता है, जट नाल नहीं मिलता है बाबा जी। अच्छा। हाँ, साधु जो तपस्या करता है ना, 14 साल वनवास जाके तपस्या करता है ना, तब वो राम को मिलता है। जी सही कह रहे हैं आप। तो पर ये जो तपस्या राजनीतिक चल रही है, चुनाव चल रहा है, तो यहाँ आपके लिए क्या मुद्दा है? क्या सोच के वोट देंगे? हम जमा वही सब साथ मिल के रहेंगे ना, साथ मिल के खाएंगे, साथ मिल के सब कार्यकर्ता करेंगे। यहाँ कुछ इधर उधर नहीं हो। जमा भक्त का रूप में, राम का रूप में, जब कंठ में राम है, इसका दुनिया में काम है। अच्छा, तो यहाँ पे तो कांग्रेस बीजेपी दोनों राम जी का नाम ले रही है। नहीं, दोनों बराबर ही है ना। दोनों बराबर है। वो दोनों बराबर हैं। किसको हीन करोगे? हीन किसी को नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये क्या कहते हैं, और क्या मुद्दा है यहाँ? सुरक्षा का, नक्सली है यहाँ, सड़क अच्छी नहीं है, ये सब मुद्दे हैं यहाँ पर। आपके लिए क्या मुद्दा है? नहीं, वो तो बनेगा ना, धीरे धीरे बनेगा ना। बनेगा। और बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बढ़िया, अस्पताल वगैरह सब है ना। सब है। चलिए, सब बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जब पहले रमन सिंह आया ना हमारे बस्तर में, उतना समय से पूरा शांति है। अच्छा, शांति है? जी हाँ। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों को इतना वक्त दिया, इतना गरीब को पूरा शांति कर दिया ना बाबा। शांति कर दिया जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हम बाबा आपसे इजाजत चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ। तो हमारे कैमरा सहयोगी बाबा, आप एकदम आप बोल सकते हैं, आपका पूरा नाम एनडीटीवी के लिए। हाँ, मन और चैतन्य है, वही पूरा कर देगा ना। मन और चैतन्य एनडीटीवी के लिए। जी हाँ, बोलिए ना एनडीटीवी के लिए। एनडीटीवी के लिए बोलेंगे। मन और चैतन्य, मन और चैतन्य दोनों बोलेगा। मन को पहचानेगा, मन को बोले, चैतन्य बोलेगा। बहुत शुक्रिया। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात की, मन को पहचानिए, चैतन्य को बोलिए, वोट दीजिए, मतदान का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जय बाबा, खुशी। All right. So that was Anurag Dwari there on that moped with the Baba, getting a sense of what the pulse really is this election. Well, from the Baba to the Prime Minister, they're all urging people to come out and vote. Prime Minister Modi just held a massive campaign rally in another part of Chhattisgarh, which is not going to the polls today, but is in fact going to the polls on the 17th. Prime Minister was speaking a short while ago in Surajpur, and he's also urged people to come out and vote. आज छत्तीसगढ़ में
पहले चरण का चुनाव भी हो रहा है और अब तक जो मुझे खबर मिली है, बड़े उत्साह उमंग के साथ भारी मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि बिना डरे, बिना हिचके मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र का उत्सव है, हर नागरिक का उत्सव है। कांग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भी रही है। जब जब कांग्रेस सरकार में आती है, तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो, इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है, वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। And while sitting Chief Minister Bhupesh Baghel has also spoken to the press on polling day. Now remember, Bhupesh Baghel is the Congress's face in this election. He is largely the person who revived the Congress after, remember, almost the entire top leadership of the Congress in Chhattisgarh was wiped out in one of those major Naxal attacks in 2018. So he's largely responsible for reviving the Congress party after that. He's also spoken out. He's facing corruption charges, but the Congress continues to maintain that it is nothing but the misuse of agencies. Listen in. आपको बोनस दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई में कोई शुल्क नहीं लगेगा, केजी टू पीजी पहली कक्षा से लेके अब पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपको पढ़ाई में कोई खर्च नहीं होगा। उसी प्रकार से 35 किलो राशन सभी परिवार को मिलेगा, चाहे एपीएल हो, बीपीएल हो। 500 रुपया गैस सिलेंडर, जितने भी जिसके पास भी गैस कनेक्शन है, चाहे उज्ज्वला हो या दूसरे, सबको उसका लाभ मिलेगा। All right, with that, we're going to slip into a very short break. We'll continue to get you all the top news on the other side. Stay tuned. A cup of hope, A cup of joy. can India lift it at home after 12 years? We will follow their journey through the length and breadth of the country Through every twists and turns. on Turning Point on NDTV 24/7. Okay, so we're coming towards the end और ये है मेरा favorite section, guys. You know about it. It's Ask TG, जहाँ पे आपके सवाल होते हैं, मैं जवाब देता हूँ। तो let's see इस हफ्ते हमारे पास में क्या-क्या सवाल आए हैं, because I am ready with all my answers. Hi TG, which mobile brands should we buy to support PM Modi's Make in India initiative? Okay, I'll tell you something very honestly. Any phone in the market, when you see the label that it is made in India or assembled in India or something like that, go ahead, get it. That's my honest answer. आज अगर कोई फ़ोन बनता है इंडिया में, तो हम देखते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स इंडिया से आते हैं, कुछ कंपोनेंट्स इंडिया के बाहर से भी आते हैं, और हम विद टाइम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स इंडिया से आने शुरू हो जाएं. बट दिस नंबर is very difficult, you know, to go to 100% because ये बहुत ज़्यादा मुश्किल एक प्रोडक्ट है जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स काम में आते हैं. Sometimes the protocol might not be supported. Sometimes this USB port is not sufficient to give you a display output. तो आप उस केस में Chromecast को यूज़ कर सकते हैं to cast your screen. I would say that would be an easier option. And if you can give more details about the exact model of tab that you're using, या फिर आप किस तरीके से रन करना चाह रहे हैं, I might give you some more insightful information. But as of now, I would say not all devices have the ports designed the same way. Sometimes the functionality is limited. तो आप ज़रूरी नहीं है कि उस डिस्प्लेस का आउटपुट ले पाएँ बाहर. You can use a wireless solution that way. Hi, Technical Guruji.
Is there any way at all to track my kids' smartphone usage? Yes, very easy and it's very important as well. आपको ये काम करना चाहिए. Any phone, iPhone हो या Android phone हो, सभी में आपको screen time का option मिल जाता है. अलग-अलग नाम से आपको मिलेगा. But yes, your phone has that option. You can not just track it, you can even put a limit to it. अगर आप चाहते हैं कि your kid should not be watching YouTube for more than 30 minutes a day, आप वहाँ पे एक limit लगा सकते हैं. Same goes for all the apps, the phone in general, and in fact, you know, at the weekend, let's say, या हर दिन शाम को, you can have a look कि उस दिन में फ़ोन में कितना यूजेज हुआ है और कौन सी ऐप को कितनी देर के लिए यूज़ किया गया है. It's very easy and you should do it. Hi, Technical Guruji. I have Well, let's now shift our focus to other news that we're tracking. The police had to use water cannons today to disperse Anganwadi workers protesting outside the Bihar Vidhan Sabha. Anganwadi workers, mainly women, as you can see there on your screens, surrounded the Vidhan Sabha today over their demands. They have a whole host of demands, including better payment and better wages and timely wages. The police had to use water cannons to disperse protesters. As you can see, there were thousands of protesters who were gathered. There were also pictures later that showed that several of these women were actually dispersed, even detained from outside the Vidhan Sabha as they tried to gherav the Vidhan Sabha in order for their demands to be heard. Dramatic pictures there coming in from Patna, where they were demanding a hike in wages and also timely wages. Now, Anganwadi workers speaking to the press have said who can survive in 5,000 rupees. They've demanded fair wages for work done. Well, let's now shift our focus from Bihar to the big story we're tracking from Uttar Pradesh, where a woman in Hardoi in Uttar Pradesh was sexually assaulted by 4 individuals for over a period of 5 months. The perpetrators initially raped her at gunpoint and recorded the act, later using it to blackmail her. The video went viral on social media, causing distress to the woman. She attempted suicide by hanging but was rescued and is currently receiving medical treatment. The police are investigating the case and arrests of the accused are expected soon. No arrests have been made just yet, but this is the latest that is in fact coming in. Horrific story there. Tanish joins us with the very latest. Tanish, what more details can you share with us? Well, yes, the incident took place in the neighborhood of Kotwali Shahbaz, where the victim's husband is an auto rickshaw driver. The culprits, identified as Pramod, Hariram, Rajiv, and an unknown person, entered the house during the daytime and threatened her with a gun and committed the heinous crime. They continued to sexually assault her whenever they called her to their homes and repeatedly blackmailed her with the viral video. Following the video circulation, the woman attempted suicide, but her family intervened and rushed her to the medical college. The police have been informed and an investigation is underway. The police has stated that the victim is in stable condition and the case is being actively pursued, with the arrest of the accused is expected very soon. So yes, this is a very shocking incident coming from Uttar Pradesh. The woman was subjected to sexual assault by 4 individuals over a period of 5 months. The perpetrators, as you mentioned, initially raped her at a gunpoint and recorded the act on the video, which they later used to threaten and blackmail her. After the video went viral on social media, the distressed woman attempted suicide by hanging herself inside her home, but then she's currently receiving medical treatment at a district hospital. Over to you. Thanks very much, Tanish. One sincerely hopes that arrests are in fact made very soon. We'll keep tracking the details of this story with you. We're going to slip into a very short break. We have more news coming up on the other side, including what the Supreme Court has said on the Delhi pollution. Stay tuned. घर पे जाके तुम गूगल कर लो, मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो. You know, this is something that we do on a daily basis. मतलब हम सभी गूगल यूज करते हैं, हम सभी विकिपीडिया पे यूज करते हैं, बट डिड यू नो कि गूगल एक्चुअल में गूगल नहीं होना चाहिए था, वो होता गूगल. वहां से एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से गूगल बन गया. अब हुआ ये, जब स्टार्ट हुआ पूरा गूगल का आइडिया, आई टोल्ड यू पहले के एपिसोड में दैट द फर्स्ट नेम वाज बैकरब. अब बैकरब से नाम जब चेंज करना था तो द फाउंडर्स ऑफ गूगल, लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू टर्म, और उनको एक टर्म मिलती है गूगल.
गूगल का मतलब क्या होता है इन मैथमेटिक्स? इट्स नंबर 1 फॉलोड बाय 100 zeros. तो आइडिया ये था कि अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम एक साथ दिखाने वाले हैं. इट क्लियरली सिग्निफाइज द वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. तो वहां से दिमाग में वर्ड आ गया गूगल. लेकिन जब डोमेन खरीदने गए तो उस टाइम पे गलती से GOOGOL की जगह GLE टाइप हो गया और वहां से बना गूगल, जो आज हम सभी डेली बेसिस पे यूज करते हैं. बट डिड यू नो it was a spelling mistake that ended us with Google. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right and center. Conversations that get to the core of the debate. And there's too much talking but very little being said. Too many voices but hardly any being heard. You turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. From breaking news to in-depth analysis, Covering the latest developments across politics, business and technology, bringing you stories that shape our nation and the world. Welcome back. Let's get you the latest from the Supreme Court. The Supreme Court has adjourned the matter for Friday as far as the pollution story is concerned, asking the Punjab government to tackle stubble burning. The Supreme Court was hearing a batch of petitions seeking a ban on firecrackers. The Supreme Court has said that they continue to reiterate their earlier order. The earlier order must be taken note of by all states and implemented. No additional orders are required. The Supreme Court, remember, has already pronounced a ban on green crackers as well as regular firecrackers. Air pollution, meanwhile, in Delhi is, of course, still in the severe category. This, of course, due to stubble burning, which saw its highest number of farm fires that took place, at least in Punjab, on Sunday. So it's been a particularly bad 48 hours as far as the national capital is concerned. Air pollution in Delhi can't become a political battle, is what the Supreme Court has said, stressing that the choking air quality is responsible for the murder of people's health. The court has said that the burning of crop residue in neighbouring Punjab and Haryana is the key factor behind the massive spike in Delhi's air pollution every winter. The air quality improved slightly this morning, moving from the severe to the very poor category after 5 long days of it being in the severe category. The air quality index in the national capital has dropped just below the 400 mark. Now, despite the dip in pollution, the PM 2.5 particles, which lodge deep inside the lungs, have, of course, soared 7 to 8 times that of the government's own safe limit. And currently, the air that we're breathing in Delhi NCR is 30 to 40 times higher than the World Health Organization's safe limit. Odd-even scheme will be implemented in Delhi starting 13th of November. That's after Diwali, and schools have been shut till then. All right, so that's the latest as far as the air pollution is concerned. We'll track that story very closely. Short break here. More news on the other side. अक्सर ऐसा होता है कि आपके फोन के स्क्रीन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. मे बी यू आर ऑन अ वेब पेज, या मे बी यू आर रीडिंग अ बुक, लेट्स से, या अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, कई बार बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. समटाइम्स इट्स दिस लेजी फीलिंग, या समटाइम्स इट्स मोर कन्वीनियंट कि अगर कोई आपको वो सब चीज़ें पढ़ के सुना दे. लेट मी गिव यू अ टेक टिप. आपके फ़ोन में एक इनबिल्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू स्पीच का.
Either you are using Android or iOS, फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा. You just need to dig deep into the accessibility settings और वहाँ से you can even customize the output speech options कि आपको किस स्पीड में वो स्पीच चाहिए या फिर किस टाइप की आपको वॉइस चाहिए, और आप बड़े आराम से जो भी आपके स्क्रीन पे है वो सुन सकते हैं. Text to speech is a feature that reads digital text aloud. Words on a computer or other digital device can be converted into audio using this. कभी कभी ये आलस के मारे आप करेंगे, कभी कभी करेंगे आप कन्वीनियंस के मामले में, बट इट्स अ नाइस टिप टू फॉलो कि आप आपके स्क्रीन पे जो भी है वो सुन भी सकते हैं, बिकॉज व्हाट यू आर यूजिंग इज नॉट अ डम फोन, इट्स अ स्मार्टफोन, सो मेक यूज ऑफ इट. This show isn't just about news from the southern states. It's one that looks at the rest of India and the world from a diverse South India point of view, because NDTV has always taken the southern view seriously. The Southern View with Veera Raghav, only on NDTV 24/7. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt, and that's how I like to roll. टेक्नोलॉजी तो आप सभी के पास है, बट व्हाट यू नीड इज एवरीथिंग एल्स. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूं एनडीटीवी नेटवर्क पे, हर रोज हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When it comes to sports, we set the ball rolling. Because we have our eyes on the ball. Because we want to get you the best. Latest updates. Top interviews. And analysis. From around the globe. The BJP is going all out in these elections in Madhya Pradesh. 3 union ministers, 4 MPs and a party general secretary have all been fielded as candidates. I am in Indore and I am now in conversation with Kailash Vijayvargiya. Kailash ji, क्या माहौल है? आप देख लीजिए माहौल क्या है. लोग बहुत प्यार करते हैं. इंदौर में मैंने काम किया है, इस मोहल्ले में भी जब मेयर था जब काम किया है, तो लोगों को विश्वास है कि काम करेंगे. और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया. मोदी जी के प्रति लोगों का अगाध विश्वास है. बंगाल में चुनाव लड़ा रहे थे, अब खुद लड़ रहे हैं यहाँ पर. पार्टी के आदेश का पालन करना है हमें. तो पार्टी ने कह दिया लड़ना है तो लड़ने लगे. और लड़ने के साथ लड़वा भी रहा हूँ. रोज़ दिन में 4-5 सभाएँ करता हूँ बाहर जाके, शाम को आता हूँ, फिर अपने क्षेत्र में घूमता हूँ. और बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, इसको कैसे टैकल करेगी भाजपा? हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, लोगों को रोजगार दिया. इंदौर में हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया. TCS कंपनी लाए हम, इंफोसिस कंपनी लाए हम, सोर IT कंपनी लाए. और इसलिए यहाँ पर हमने बहुत विकास किया है. फार्मास्यूटिकल कंपनी कम से कम हम 100 लाए यहाँ पर, जिसमें यहाँ के कम से कम 25,000 लोग काम करते हैं. तो बहुत काम किया है सरकार ने. और मैं खाली एक आंकड़ा बताता हूँ कि मैं उद्योग मंत्री था 2008 में, जब हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ मात्र 3% था, 4%, आज 24%. हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े. लाइट की जगमग देख रहे हैं आप. मैं ऊर्जा मंत्री था जब हमारा उत्पादन 5,000 मेगावाट था, आज 28,000 मेगावाट है. हर खेत में हमने बिजली पहुंचाई, हर खेत में हमने पानी पहुंचाया. 7 लाख हेक्टर में सिर्फ सिंचाई होती थी, आज होती है 45 लाख हेक्टर में. हमने सिंचाई के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाया. पर कैपिटा मध्य प्रदेश के किसानों की इनकम बढ़ी है. 18 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन इस बार चुनाव में कलेक्टिव लीडरशिप है. और अभी एक नारा मैंने सुना, आपके नाम पर भी था कि मुख्यमंत्री आप बनिए. देखिए, ये तो कार्यकर्ता हैं, नारे लगाते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं. बाकी आप जानते हैं हमारी पार्टी की पॉलिसी, हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है. विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा, फिर वह पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा, उसका नाम लगेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा. इसलिए हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा गणित करने की आवश्यकता नहीं है. बिल्कुल साफ साफ है. इंटरनल डेमोक्रेसी, विधायक दल नेता चुनेगा और नेता वही मुख्यमंत्री बनेगा. 3 तारीख को क्या होगा, नंबर बताइए.
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 150 से 160 सीट के बीच में सीटें आएंगी। चलिए हम 3 तारीख को फिर से आपसे बात करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, एनडीटीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग राजस्थान में हैं और राजस्थान में चुनावी माहौल है। लगातार जोधपुर में रहने के बाद 2 दिन के बाद अब हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को पकड़ने में आज कामयाब रहे। मेरे साथ बैठे हुए हैं। आज ही मुख्यमंत्री ने अपना नामांकन भरा है और दिन भर के बाद रात को हम देर रात को इंटरव्यू कर रहे हैं। चेहरे पे थकान बिल्कुल नहीं है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। इसकी राज क्या है, किस बात की खुशी है? देखिए, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ही होता है, हमेशा खुश रहता है। काम करने में बड़ा मजा आता है। आज की रैली अच्छी रही, इसीलिए तसल्ली है आपको? अध्यक्ष जी आए थे, खड़गे साहब की रैली अच्छी रही। खड़गे साहब का संबोधन भी बहुत शानदार रहा। मैसेज देने वाला होता है उनका हमेशा। जो भी वो बात कहते हैं वो बात पहुँचती है जहाँ पहुँचनी चाहिए। एक चीज़, मैं उस रैली में था गहलोत जी, उन्होंने कहा कि मैं 11 बार चुन के आया हूँ और आप 10 बार आ चुके हैं। 5 बार संसद में, 5 बार विधानसभा में। आप उनसे थोड़े ही छोटे हैं अनुभव के मामले में, उम्र में भले ज़्यादा छोटे हों, लेकिन आपको कैसा लगता है जब कांग्रेस पार्टी के इतनी सीनियर आदमी आप बन चुके हैं? 50 साल से आप ऑलमोस्ट राजनीति में हैं, इस कद पे आके, इस पद पे आके अब कैसा लगता है आपको? नॉर्मल लगता है। आपने एक बात कही थी, ये कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं है। वो मैंने एक बार बोला था, 2 बार बोला था। तो इतने सालों के बाद भी कुर्सी आपको प्यारी है? कुर्सी से आपको प्यार है? देखिए, मैं संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ देश के अंदर। मुझे पार्टी हाईकमान ने, सोनिया गांधी जी ने विश्वास किया, राहुल गांधी ने विश्वास किया और मैं इंदिरा गांधी जी के वक्त से केंद्रीय मंत्री रहा हूँ। राजीव जी के वक्त में मंत्री था, नरसिम्हा राव मंत्री था जी, तो डिप्टी मिनिस्टर बन गया था शुरू में ही। तो कहना मतलब मैं बिल्कुल, मुझे हमेशा चांस मिला है, विश्वास किया हाईकमान ने मुझ पर, कांग्रेस पार्टी विश्वास किया, इसलिए मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा हूँ। चाहे वो कहते 3 बार आप कैबिनेट मंत्री रहे दिल्ली में, 3 बार आप मुख्यमंत्री रहे, 5 बार विधायक, 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट, 3 बार एआईसीसी महामंत्री, 3 का आंकड़ा है। कब तक? और नहीं, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल पार्टी का सेवक हूँ। देखो जी, अब पार्टी ने आज सब कुछ मुझे दिया है तो पार्टी में निर्भर करता है मेरा उपयोग क्या किया जाए। पार्टी ने तो आपको दिल्ली बुलाया था इतना बड़ा दायित्व देने के लिए पिछले साल। वो पद तो देखिए, मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद था वो जी, बहुत बड़ा पद था जी, तो इसीलिए पूछा मैंने। हाँ नहीं, वो था, पर वो एक संयोग की बात है। घटना जो दुर्घटना समझ लीजिए हुई है, वो दुर्घटना ही थी। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं दुर्घटना उस चीज? अब वो एक लंबी कहानी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा। पर ये धारणा गलत है कि भाई मैं मुख्यमंत्री बने रहना चाहता था, इसलिए मतलब अच्छा, ये गलत है। ऐसी करनी बिल्कुल धारणा गलत है 100%। कौन कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद कितना बड़ा होता है? मैं जब 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूँ और सोनिया गांधी जी का विश्वास मेरे पर है, हाईकमान मुझ पर विश्वास करती है और इतना बड़ा पद मान लो मुझे अवसर मिल रहा है, तो कोई क्यों छोड़ेगा? मतलब तो आपसे लगता है अफसोस की गलती हो गई? नहीं, वो तो गलती नहीं, वो दुर्घटना है। बस दुर्घटना हुई। दुर्घटना किसने की? आपसे हुई कि किसी और ने कर दी? मैंने कहा दुर्घटना होती है किसी के साथ में, कोई होती है, सड़क पे हो या कहीं हो, दुर्घटना कब जब कोई आदमी 12 साल से चुनाव लड़ रहा हो, 10 बार का चुनाव हुआ प्रतिनिधि हो, तो उसके साथ कोई बात निकलवाना आसान काम नहीं हम लोगों के लिए भी। लेकिन अब चलिए आपके मुद्दों पे आते हैं, चुनाव पे आते हैं। गहलोत साहब, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है इन चुनावों में? क्योंकि आप इतने चुनाव लड़े हैं, इतने चुनाव जीते हैं, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? कितना आसान है, कितना मुश्किल है? बार मैं देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति कहेगा आपको सरकार विरोधी कोई लहर नहीं है, एंटी इनकम्बेंट नहीं है। ये आपको सुनने को मिलेगा पूरे प्रदेश के अंदर। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी उपलब्धि भी है कि हमारे कामों से लोग संतुष्ट हैं। वोट किसको दे नहीं दे, वो तो केस फैक्टर काम कर जाते हैं। माई बाप तो अल्टीमेटली जनता ही होती है, वो तो फैसला करती है। और जो काम हमने किए हैं, गवर्नेंस हमने दी है, IT बेस्ड गवर्नेंस दी है, कानून पास किए हैं, स्कीम हमने दी हैं, महंगाई से राहत दिलाई है लोगों को, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम हम लेके आए हैं, 3 लाख नौकरियाँ दे रहे हैं बच्चों को, नौजवानों को,
तो ये तमाम जो हमारी पॉलिसी जो है किसानों के लिए अलग से बजट मैंने पेश किया है, कई तरह के उनके लिए कानून पास कर दिए हम लोगों ने। किसानों के लिए वो ज़मीनें कुड़क नहीं हो सकती है, सुनवाई होगी, हाईकोर्ट का जज जो है रिटायर्ड, वो मतलब उनके अध्यक्ष में कमेटी बनेगी, ऐसे कानून बना दिए हमने। गिग वर्कर्स का कानून, ये सारी दुनिया में हो रही है हमारी। आर्टिकल मैंने पढ़े एक्सप्रेस के अंदर, जिसमें राजस्थान में कानून पास किया गिग वर्कर्स को लेके, वैसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। अगर हमें कोड करें राजस्थान को, तो आप सोच सकते हो कि हमारी पहल किस प्रकार की है। ये राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस वक्त में जो मिलने आए डेलीगेशन, उससे आइडिया निकला और हमने कानून पास कर दिया। आपकी तमाम कामों के बीच में, तमाम गारंटियों के बीच में, इन चुनावों में आपका मुकाबला नरेंद्र मोदी से हो रहा है। बीजेपी ने उनके चेहरे को आगे रखा हुआ है, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपके लिए आसान है या आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोदी साहब की लोकप्रियता इन 8, 9, 10 सालों में लगातार बनी हुई है? देखिए, अब वो बात नहीं रही, अब बहुत फर्क पड़ रहा है। उनको खुद को एहसास हुआ होगा, जो जिस पर वो दौरे करते लगातार। और मैं समझता हूँ कि वो जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करता था कि टोटली जो प्राइम मिनिस्टर एक देश का होता है, एक पार्टी का नहीं होता है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, कि एक पार्टी का नहीं हो सकता। पार्टी का है हम लोग, पर देश की इंटरेस्ट में क्या क्या है। आज जो राजनीति धर्म के नाम पे की जा रही देश के अंदर, वो हदें पार कर चुकी है, हदें पार कर चुकी है। क्या आपने कई बार कहा, कई इंटरव्यूज़ में पिछले 2-3 महीनों में, कि वसुंधरा जी को वो लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप अपनी तरफ से आप चाहते थे कि आपके सामने अगर कोई चेहरा आए तो वसुंधरा जी का आए। अब वसुंधरा जी का चेहरा नहीं आया औपचारिक तौर पर, अब तो हम चुनाव में आ गए हैं। तो ये आपके काम को आसान बना रहा है, मुश्किल बना रहा है? देखिए, ये तो उनके अंदरूनी मामला है पार्टी का जी, तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। हमारे लिए जब वसुंधरा जी आती तो हमें इसी जगह मेहनत करनी पड़ती जैसे आज मैं कर रहा हूँ, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव पार्टी लड़ती है, पार्टी के नीति हैं, उसके कार्यक्रम, सिद्धांत होते हैं, लोग उसको भी देखते हैं, हमारे काम को भी देखते हैं। पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम बीजेपी के नेता लगा रहे हैं कि आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार किया। वो तमाम भ्रष्टाचार के घोटाले, जल जीवन मिशन में घोटाला, भर्ती में घोटाला, बहुत सारे घोटाले गिनाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि 15 दिन बचे हैं वोट डालने में? बताएं, घोटाला सब काम लिया उन्होंने, तो घोटाला काय का भी तो बताएं कम से कम। जल जीवन मिशन में घोटाला कहते हैं। जल जीवन मिशन तो डिपार्टमेंट का स्कीम है, घोटाला उसमें क्या होगा बताइए। भर्तियों में घोटाला, आपने तो एक अधिकारी पकड़ा गया आरपीएससी का। देखिए, पेपर आउट 22 बार हो गए होंगे गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। जुडिशरी में पेपर आउट हो गए राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर, आर्मी में हो गए, एग्जाम में पेपर आउट हो गए। पेपर आउट पूरे कंट्री में हो रहे हैं। तो जो कार्रवाई हमने करी है, 200 लोगों को अरेस्ट कर दिया, बंद कर दिया जेलों के अंदर, कानून पास कर दिया, आजीवन कारावास होगा उनको, ये कोई नहीं देख रहा है। इनके पास कुछ कहने को है नहीं, इसलिए बात करते हैं। हमारे यहाँ कोई करप्शन जो माहौल बनाने की कोशिश करी, उसमें फेल हो गए लोग। हमारा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कंट्री में नंबर 1 काम किया उन्होंने। जो कार्रवाई हुई 5 साल में, ऐसी कहीं हुई नहीं होगी मेरे ख्याल, देश के अंदर नहीं हुई होगी। इतनी कार्रवाई हमने करवाई है। अभी जो छापे पड़ रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? डोटासरा साहब के यहाँ, उनके बेटे के यहाँ ईडी बार बार कह रहे हैं। अब खड़गे साहब ने कह दिया, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई इनके स्टार प्रचारक के रूप में, बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में है। ये आज खड़गे साहब कह के गए, वो आप देख लीजिए। चुनाव चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कल पोलिंग है वहाँ पर, हमारे प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिना कोई कारण के, बिना कोई शिकायत के, कोई खुद ही शिकायत करवाते हैं अपने मेंबर पार्लियामेंट से, आप छापे डाल रहे हो। किसी घर में घुसना बिना कोई क्राइम के, वो बड़ा क्राइम है। आप घुस गए, पूछे ही नहीं, बयान नहीं लिए दोतारा जी के, खाली बेटों का खुद का एक मोबाइल फ़ोन लेके चले गए, दिन भर में बैठे रहे। वैभव गहलोत जो है मेरे सन, उनका 1 रुपया दुनिया में कहीं नहीं लगा हुआ है,
और आप उसके बाद में भी मतलब नोटिस दे रहे हो आप लोग। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, मुझे चिंता हुई नहीं है, ये तो निपट जाएंगे, देख लेंगे, कानून अपना काम करेगा। इनका जवाब क्या है आपके पास? हमें चिंता दूसरी लगी हुई है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस हो रही है देश के अंदर, जिसके कारण मेहुल चौकसी या विजय माल्या या नीरव मोदी देश भाग के बैठे हुए, लंदन बैठे हुए हैं। क्या नए नीरव मोदी या विजय माल्या पैदा नहीं हुए देश के अंदर, या है नहीं? क्या इकोनॉमिक ऑफेंसेस खत्म हो गए देश के अंदर? आज ये एजेंसी इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसी हमारी है, ईडी, इनकम टैक्स, CBI, अगर ये काम करेगी, अपना जो इनका दायित्व करेगी, तो आज क्राइम रुकेगा देश के अंदर, वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे हमारे, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी देश की। आप उन सबको माफ़ किए हुए हो, उनकी तो ध्यान नहीं दिया रहा, ध्यान दे रहे हो आप पॉलिटिशियन को पकड़ने के लिए, झूठे आरोप लगा करके घरों में घुस रहे हो आप लोग, बच्चों को तंग कर रहे हो, और सरकार गिराने के लिए और सरकार बनाने के लिए काम दे रहे हो आप लोग इनकी एजेंसियों को। क्या हो रहा है देश के अंदर? पर ये कहना है बीजेपी के नेताओं के करप्शन पे तो हम 24 घंटे कार्रवाई करते हैं, 365 दिन कार्रवाई करते हैं, इसीलिए आप क्या कार्रवाई हो रही है? विपक्ष के ऊपर करते हैं। क्या कभी सुना आपने बीजेपी के नेता के यहाँ छापे पड़े हों? देश देख रहा है इनको, देश देख रहा है। तो आपके पास जो पुलिस है, अगर यहाँ बीजेपी के नेता गड़बड़ी कर रहे हैं, आपके पास जो पुलिस है, साधन है, जांच है, आप कार्रवाई करवा सकते हैं। होती है, जो ACB ने कार्रवाई करी है वो किसी को नहीं बख्शती, हो तो निष्पक्ष काम करती है। सर, एक दो मुद्दे और जो आपसे जानने थे। ये भी कहा गया बीजेपी के कैंपेन में कि जो गारंटियां आपने लेके आए हैं, ये चुनाव जीतने का हथकंडा है आपका। आपकी पुरानी गारंटियां जो थी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेरे साथ कहा आज इंटरव्यू में कि वो तो आप लागू कर नहीं पाए, उसमें तो आप फ्लॉप हो गए। अब आप ये नई गारंटियां देके केवल आप बातें कर रहे हैं। मैं उल्टी बात कह रहा हूँ। 10 गारंटियां में दी, वो लागू हो गई है, तभी तो लोगों को विश्वास जमा है कि ये सरकार जो कहती है वो करती है हमारे लिए। लागू हो गई, इम्प्लीमेंट हो गई है। 10 के नाम आपको देख लीजिए, उनकी गारंटी हो गई, लागू हुई नहीं हुई है, मालूम पड़ेगा आपको। चुनाव के बाद ये गारंटी इसीलिए नई गारंटी दी गई है कि जब विश्वास जम गए लोगों को, जो कहते वो करती सरकार। इतनी 7 गारंटी नहीं बताई है, सरकार आएगी तो हम इनको प्रायोरिटी देंगे। वैसे मैनिफेस्टो भी आएगा, और भी कई गारंटी होगी, कई वादे होंगे मैनिफेस्टो के अंदर। मैनिफेस्टो कब आ रहा है? जल्दी आएंगे। मैनिफेस्टो के रिलीज में राहुल गांधी आएंगे? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, जाते तो नहीं। हमने एक बहुत अच्छा कैंपेन देखा था हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में, पूरी पार्टी साथ दिखाई देती थी। यहाँ पर होगा एक साथ सब सारे राजस्थान के नेता एक साथ एक मंच पर, सब एक मंच पर, आप और सचिन पायलट साथ साथ, सभी एक मंच पर है। वहाँ पे खड़गे जी भी हैं, वहाँ पे राहुल गांधी भी हैं, वहाँ सोनिया गांधी भी हैं। सब देखिए, हमारे यहाँ सब एक मंच पर है। बीजेपी में बिखराव है, हमारे यहाँ नहीं है, वहाँ बिखराव है। विपक्ष में रह के चुनाव लड़ना आसान होता है या सत्ता में रह के चुनाव लड़ना आसान होता है? 18 में आप विपक्ष में थे तो आप चुनाव जीत गए, आपकी सरकार बन गई, आप मुख्यमंत्री बन गए। अब आप सत्ता में रह के चुनाव लड़ रहे हैं, और आप जब सत्ता में रह के चुनाव लड़े तो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है गहलोत साहब। आप ठीक कह रहे हो, पर ये भी देखना पड़ेगा आपको, इस बार जो है, इस बार माहौल दूसरा है। मैं आपको आइडिया में देता हूँ केरला का जी। केरला में 76 साल में लगातार एक बार लेफ्ट, एक बार कांग्रेस जीतती आई जी, जो उनका गठबंधन होता है। वो हमारे 30 साल परंपरा चली पड़ी है, वह 76 साल थी। कोरोना के अंदर अच्छा काम किया सरकार ने, इस नाम से सरकार को रिपीट किया जनता ने, वहाँ की जनता ने इस बार केरला के अंदर। तो हमने तो केरला में काम अच्छा हुआ कोरोना का, हमारे यहाँ भी उससे कम नहीं हुआ, अच्छा हुआ। हमारा भीलवाड़ा मॉडल तो WHO तक पहुँच गया। जी, आपके तो एक बार खुद प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी। प्रधानमंत्री ने तारीफ उनको भी करनी पड़ी, WHO ने तारीफ करी, और हिंदुस्तान भर में तारीफ हो रही है। शानदार मैनेजमेंट किया, ऑक्सीजन ने किसी को मरने नहीं दिया, इलाज शानदार हुआ। और उसके अलावा जो 25 लाख बीमा हम लेके आए, मान लीजिए हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं 5 लाख बीमा होता, वो भी 25 मिनट जनता के लिए होता है। हमारे यहाँ गरीब अमीर सबके लिए बीमा कर दिया राजस्थान के अंदर, एकमात्र राज्य राजस्थान ने। राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हम लोगों ने। तो आप सोचिएगा कि हमारी जो स्कीमें हैं, एक के बढ़ एक, कई क्षेत्र में हम लोग नंबर 1 है। और तो आर्थिक विकास दर में देश के अंदर बड़े राज्यों में जो है नंबर 1 तो है आंध्र प्रदेश,
और नंबर 2 राजस्थान 11.04% GDP, और उत्तर भारत में नंबर 1 हम लोग हैं, राजस्थान है। तो हमने भी प्रबंधन करके दिखाया है, तब जाके 30 स्कीम लेके आ रहे हैं। महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ये राज्य जनता जो है वो कई बार मोदी जी को बोलती है तो कई बार आपको भी कहती है। तो जनता तो जनार्दन है, उनकी बात सबको माननी पड़ती है। पर देखिए इनकी जो मेन तो पेट्रोलियम समझ लीजिए आप जी सेक्टर जो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तब क्या रेट हो गई थी, 112 रुपये तक चली गई थी मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतें। तब तो समझ में आती थी कि भाई महंगा पेट्रोल डीजल है। इनके वक्त में आधा हो गया, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, कम नहीं किया। और इंटरेस्टिंग बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जो एक्साइज ड्यूटी बेसिक होती है उसमें हिस्सा राज्यों का होता है, उसको तो कर दिया जीरो के बराबर कर दिया, मैंने बहुत कम कर दिया। और एक नया लगा दिया स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस 3, उसमें हिस्सा राज्यों का नहीं होता है। लूट मचा रही इन लोगों ने, जनता समझती नहीं इन बातों को। तो समझाइए ना, चुनाव में है आप। यही बात है, यही समझाते हैं हम लोग। चुनाव में है, अभी समझाना पड़ेगा। समझाते भी हैं, हमारा फर्ज बनता है। पर ये बताऊँ मैं आपको कि ये तमाम जो है उसमें हिस्सा नहीं होता राज्यों का, उसमें हिस्सा खाली केंद्र का होता है। तो पूरा केंद्र ले रही है रेवेन्यू, उससे अपना काम चला रही है। एक आखिरी सवाल, इसके बाद मैं जानता हूँ आपका वक्त ज़्यादा हो रहा है, अगले मुख्यमंत्री आपके होंगे जीते तो, इसमें कोई शक व शुबा तो नहीं है? मैं कह चुका आपको, मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ। मुझे पार्टी ने इतना विश्वास किया मुझ पर, और सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी कांग्रेस प्रेसिडेंट, उसके बाद पहला फैसला उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का किया था जी 98। तो मुझे अगर विश्वास करके 98 में मुख्यमंत्री बनाया तो मेरी ख्वाहिश ये रहेगी कि भाई 2 बार हम जिता नहीं पाए, चाहे मोदी जी की हवा चल गई हो एक बार, 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट का बदनामी करा के लोकपाल लेके आएंगे, अन्ना हजारे साहब को बैठा दिया, सब काम इन्होंने किया, RSS बीजेपी ने किया उस वक्त में, और मोदी जी हवा चला दी, जीत गए वो, हम लोग हार गए बुरी तरह से। उसके पहले भी कुछ कारण ऐसे थे कि मैं उन कारणों नहीं रहना चाहता, पर उस पर भी शानदार हमने काम किया था। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि सोनिया गांधी जी ने मुझ पर विश्वास किया पहली बार 98 के अंदर, तो आज कम से कम मैं एक बार उनको सरकार आके दिखा दूँ, बस ये मेरी ख्वाहिश है। विनिंग नोट पे जाना चाहते हैं आप? इसलिए मैं जो है चाहूँगा किसी भी तरह से मैं दिन रात काम करूँ, जो कुछ मैंने संभव था 5 साल मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मैंने कोरोना के वक्त में, 3.5 रोज के अंदर खाली कोरोना के लिए थी 500 ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और पूरे 200 MP MLA हमारे पार्टी में बीजेपी सब मिला करके सबसे मैंने 22 घंटे बात करी, धर्म गुरुओं से बात करी, एक्टिविस्ट से बात करी, NGO से बात करी। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, मेरा ये नारा था, और वही हुआ। मतलब तो मैंने बहुत बारीकी से उसकी मैनेजमेंट किया, ढूंढवाए लोगों को, ठेले वाले थे, ठेले बंद हो गए क्योंकि लोग लॉकडाउन में बंद थे, तो घर पे वो क्या खाए। जो लोग रात दिन सो जाते हैं, स्टेशन पर सो जाते हैं, रन बेसन रहते हैं, ढूंढा के 35 लाख लोगों को उनको मैंने DBT करवाई, बैंक में खाते खुलवा करके। कलाकार तो घर बैठे हुए, कला कौन देखे उनकी, उनको 15,000 रुपये मैंने भेजे, तो हर एक चीज़ को मैंने खुद देखा उस सब। तो आप बनेंगे ना मुख्यमंत्री, विनिंग नोट पे जाएंगे ना? ये सब हाईकमान और कांग्रेस विधायक दल तय करता है, और मुझे उसमें विश्वास है बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद NDTV से बात करने के लिए। ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और क्या होगा ये तो खैर नतीजे बताएंगे, लेकिन ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इन दिस सेगमेंट मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं अबाउट योर गैजेट्स। यू नो, योर डिवाइस माइट बी एक्सपोज टू सम क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज, जिसके बाद में आपका डेटा, आपका इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करके रखा है उस फोन में, वो सब गलत हाथों में जा सकता है। अभी ऐसा ही कुछ हुआ
when the Computer Emergency Response Team for India एक एडवाइजरी इशू करती है एंड वो बताती है कि मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड, टॉकिंग अबाउट एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 12L एंड साथ में एंड्रॉयड 13 भी ये कुछ क्रिटिकल इश्यूज को पोज कर रहे हैं. देयर आर सम मेजर सिक्योरिटी फ्लॉज और इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि गूगल एक अपडेट इशू करेगा और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बाद में उस अपडेट को अपने अपने डिवाइसेस में पुश करेंगे एंड आपके पास जब वो अपडेट आए तो आपको उसे इंस्टॉल करना है. और आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके फ़ोन का जो डेटा है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने फ़ोन में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है वो कहीं गलत हाथों में चला जाए, कोई आपके फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल कर ले, कोई एक मलिशियस ऐप आपके फ़ोन में आ जाए. तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए द फर्स्ट स्टेप that you can do and you have to do is to update your devices. So make sure आज के बाद keep it like a regular habit. Once in a while, sometimes तो आपको notification खुद से मिल जाएगा, but if it doesn't come, once in a while, every 15-20 days, normally just check for updates for all your devices. For example, if you have a camera, अब आपने एक बार एक कैमरा खरीदा है जो 2 साल आपको हो चुके हैं उसको खरीदे हुए और आप 2 साल से इस कैमरा को यूज़ कर रहे हैं and you're just using it like normal. यू नेवर नो, क्या पता उसके लिए एक नया फर्मवेयर अवेलेबल हो जहाँ पे उस कैमरा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो गई हो या उसके तो कुछ नए फीचर्स मिल गए हो. इफ़ यू जस्ट कनेक्ट दैट कैमरा विद कंप्यूटर एंड वहाँ पे अगर आप चेक करते हैं फॉर अ न्यू सॉफ्टवेयर, हो सकता है आपको एक नया सॉफ्टवेयर मिल जाए और आपके कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड हो जाएं. सो जस्ट एज अ नॉर्मल हैबिट, डू इट विद ऑल योर गैजेट्स, वंस इन अ वाइल, एवरी 3 weeks, every. This is NDTV, and you're watching NDTV 24/7. Hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Gargi Raut. Coming up ahead, we'll bring you all the latest from Chhattisgarh and Mizoram as polling is underway. And this is the start of the polling month of November, where you see 5 states going for elections. It's been called the semi-final ahead of 2024. So we'll get you all the details. Our reporters are on the ground. But first, the headlines. The first phase of elections is underway in Chhattisgarh with 20 of the 90 seats that are polling today. And so far till 9 a.m. the voter turnout has been nearly 10%. Voting also underway in a single phase in Mizoram. It's a multi-cornered contest in the state. Will it be a hung assembly as is being speculated? The 20 seats polling in Chhattisgarh, 12 of them are in Maoist areas, and this morning there was an IED blast that took place in Sukma on polling day, and one CRPF Jawan on polling duty was injured. The Supreme Court has slammed state governments over politics over pollution crisis. They have called it the murder of people's health, asking the states to come together and work on this issue. The next hearing will take place on Friday. The Aam Aadmi Party says even if Arvind Kejriwal is arrested by the ED, they will work from jail. Arvind Kejriwal will remain the chief minister, will hold cabinet meetings in jail if needed. And the Gaza Authority says over 10,000 people have now died, including 4,000 children who have been killed in Israeli airstrikes in the Gaza Strip. Meanwhile, Benjamin Netanyahu says Israel open to little pauses in war. So voting is underway in Mizoram and Chhattisgarh. This is the start of the 5 state assembly elections as voting is taking place in the 40 seats in Mizoram in a single phase. That election is taking place, and in 20 constituencies in Chhattisgarh's first phase. The second phase will be in 10 days' time. Now, this marks the beginning of an exercise which is being touted as a virtual semi-final before the general elections in 2024. Now, till 11 a.m., Chhattisgarh had recorded
recorded nearly 23% voter turnout. In 2018, in the state polls had seen over 77% voting. Mizoram has recorded 26.4% turnout till 11 a.m. In fact, Mizoram started on a very slow note. There was a huge crowd at the polling booths, but the polling was happening very, very slowly. In fact, Chief Minister of Mizoram, who arrived to cast the first vote of the day, found himself unable to do so as there was a problem with the voting machine. So now Mizoram picking up there with 26.4% voter turnout being reported. Let's go across to NDTV's Sunil Prabhu now for more. And Sunil, huge security as 12 of these seats in the Bastar division are in the Naxal hit area of Chhattisgarh. The voters are coming out. Give us all the very latest that you're hearing. Well, as you rightly pointed out, I think they have left no stone unturned, from using drones to, over 60,000 paramilitary forces and security personnel to ensure a free and fair election in these 20 assembly constituencies that are going to the polls in the first phase in Chhattisgarh. As I speak, you can see the crowds continuing, people continuing, those who have sake or have disabilities, provisions are being made. Women continue to wait in line and cast their ballot. I think that's the beauty of the Indian democratic spirit. Across wherever I've been visiting, all the polling booths, there has been a semblance of that determination amongst voters to exercise their right and really participate in the democratic exercise that India is part of. So it's definitely, as you rightly said, semi-final. It's where the Congress and the BJP are on a one-to-one in the state of Chhattisgarh. There are other parties here, but their presence is marginal, and it's in that backdrop we'll have to wait and see how this plays out. So far, the reports that have taken place has been by and large peaceful, especially in the Maoist affected areas. We haven't yet got any reports of any untoward incident, barring one unfortunate incident of a security personnel in the Sukma district. Right, and Sunil, the polling is only till 3 p.m. in the sensitive booth, so that is something also, to take into account. The Congress really hoping to return. In fact, they're quite optimistic in returning in Chhattisgarh and building that mahal, as they say, before 2024. But let's go across to Ratnadeep now to find out what the polling is like in Mizoram there. And Ratnadeep, there is, it's a many-cornered contest. You even have the Aam Aadmi Party contesting these elections. And though we have seen in Mizoram that that they usually return a party for 10 years at a time, so it'll be interesting to see this time around. And everybody is speculating, however, on a hung assembly, and then the possibility of the Zoram People's Movement playing a key role there of a kingmaker. That's right. In fact, as we speak, around 12 noon, already over 36% polling has been recorded in Mizoram. Right from the morning, we did see, good turnout in Aizawl. We have been to different, polling stations in Aizawl, and behind me is, entrance to one polling station. You can see people, political party supporters here, sitting here. And the most interesting, part of the polling here is that all political parties supporters from different parties actually sit close to each other, but there is no animosity. They are, there is a like a festival. They come and cast their votes. We have some young voters also. If I can get your name. My name is Benjamin. Benjamin, this time when I was covering the campaign and now the polling, there's a lot of youngsters who have got involved in campaigns, as well as you have some young candidates. 62% of the voters are between the age group of 18 to 40. Correct, very correct. And how big this factor is, the young voters factor, and what the young voters really want? Yes. See, basically the political party here, there this MNF, as of now the present government, and the Congress are old parties, okay? This ZPM is a new party. So people who are in the new party want a change. Okay, whatever happening, they didn't like the politics right now.
So we have a very vibrant candidates from this party. So people are aligned to that, and they want a change and they want development for the state. So for that, this party is preaching for the development of the state. So all the people are very, very much, interested in getting this party elected in the government. You are talking about basically ZPM and youths, youths here, particularly in urban areas, have been talking about a possible change. Yes. But what about rural areas? Because if you see in the last elections, ZPM did well as independent candidates in the urban areas in and around Aizawl. But in the rural areas, those are the strongholds of MNF and at one point of time were strongholds of Congress. Would ZPM be able to convert this buzz into numbers, into votes? Yes, I like to say here because see, previously ZPM is a very new party, very newly organized party. So they didn't have their roots in the rural areas. Now, for a political party to be successful, they have to have the roots in the rural areas in terms of units, block units like that. Right now, ZPM has units all over the districts, all over rural areas. So we are expecting the party to gain big momentum, big leap from the last year elections. And they have pitched very, very famous people like JJ football player who used to play for India also. Then you have very, very famous gospel preacher, gospel singer, Malal Sailawa are there. You have a radio jockey. Yeah, radio jockey is also there. So keeping the the need of the young people who want to change in the government structure. So I think this party will have a huge. And in this constituency, media tycoon is also contesting. Yes, correctly. Mr. Sabdanga is a media tycoon, and my father was the previous candidate for 2018 election. So he just lost for only 400 votes with the current MLA. But now with the change, with the atmosphere, with the vibe in the society, in the state, I think we'll have this party will have a huge margin in coming up. So there you are, this young man who who is saying that ZPM is going to really come up well. But what is important here to note is that, as he was pointing out, many of the seats in Mizoram are decided in narrow margin, from 300 to less than 1,000 votes. And in a multi-cornered fight where you have the MNF, which is the ruling party, it has a legacy, it was born out of the Mizo movement, and then you have the Congress, which also has a committed vote bank. Remember, last time they could not translate it into numbers, but they did get 30% vote share. And then you have this new force in the form of ZPM. So between these three parties, there is a fight. So in some seats it is Congress versus MNF, in some seats it's MNF versus ZPM, and in fewer seats, about 3 to 4 seats, even BJP has strong candidates. So that would, if this is the scenario, that might lead to a situation where for the first time in Mizoram, none of the parties might be able to get the absolute majority, but all the political parties. We did speak to Chief Minister Zoramthanga. He is very confident. We spoke exclusively to former 5-time Chief Minister from Congress, Lalthan Haula. He was very confident that they are going to get absolute numbers, and obviously you can see here the supporters of ZPM also clearly saying that they had lost many seats last time in a narrow margin, but now they are an organized party, and therefore they feel that they would be able to actually counter the MNF and form a government of their own. Ratnadi, very briefly, the effect of Manipur, in the Mizoram elections. Tell our viewers about that. Definitely, in the run-up to the elections, in the campaigns, the fallout of the Manipur violence was part of the narrative of the campaign of almost every party. For the MNF, which is ruling party, remember when thousands of people got displaced from Manipur, particularly tribals, they provided them shelter, and therefore the MNF and its top leader, the Chief Minister Zoramthanga, had been projected as the guardian of the larger, Kuki, Zo, Mizo tribes in Northeast. So that is one image which is going to help. On the other hand, the
ZPM also came out with a campaign saying that, well, what they have done was not good enough. We'll do more for the community. The Congress really, went in a different tangent, saying that, the tribals and their religions, because, many of the tribal groups in Northeast are Christians, and Mizoram is a Christian majority state. So therefore, the Congress said that your secularism, your religion is protected with us. So therefore, the Manipur violence fallout had a direct impact in these elections, and perhaps a kind of challenge for the BJP to break its jinx in Mizoram, and perhaps it will also play out in the 2024 general elections as well, as because this issue will come up in the campaigns at that point of time as well. All right, Ratnadeep, thanks so much for joining us. With that, and let's take a look at that exclusive chat that you did with former Chief Minister Lal Thanawala. You have come to cast your vote. You were 5-time Chief Minister, and now your party, the Congress, in the last election did not do well, but now this time you have a new leader, you have some new faces. How do you see this election, given the fact that apart from MNF, you have the ZPM, Zoram People's Movement, also in this fray? So this multi-corner fight, is it going to make difficult for the regional parties, or is there a scope of Congress revival? Well, for the Congress, there is always scope for growing and winning, because it's an old party, and today what we need is a religious freedom. So under the Congress, the religious freedom is there, and today in Mizoram also we have emerged very strong under the new leadership, and I fully support them. Therefore, we have a very good chance. We have a very good chance of winning. But how do you see the emergence of ZPM, who talks about a new way of governance? I say, but the new way of governance, but I don't know what is their old way of governance. Let them tell me. They're kind of criticizing the way you ruled the state for 5 terms, or Mr. Zoram Thanga had ruled the state for 3 terms. I have nothing to say about Mr. Zoram Thanga. He's an incumbent chief minister. But whatever permanent, what should I say, assets that have been created in Mizoram have been created under the government of Congress. One last thing, the BJP... Name any permanent asset in Mizoram, which is not done by the Congress government. Right, sir. Also, one last thing that I want to ask you is that the BJP putting up 23 candidates, they're trying to push and make an entry. Now, how do you see this BJP's attempt in this election? Well, their attempt, I don't know anything about it, but then BJP will not win a single seat in Mizoram. And you're hopeful that your party will again retain power? Yes, of course, under the new leadership. It's now my party is under the leadership of a new, younger leadership, so we have very good chance of winning and forming the next government again. All right, and Ratnadeep also spoke to Zoram Thanga, who said that he will win a majority. Well, the problem in Myanmar, and then refugees and problem from Manipur and from Bangladesh, and here it will be a big plus factor for my party, the MNF, because these people, whether they are from Burma, from Manipur or from Bangladesh, they all have faith if the MNF form the government here in Aizawl. And therefore, in order to comfort them, in order to give them shelter, in order to give them food and shelter, so it needs MNF government here. That would be one of the biggest plus points in my coming election. Sir, how positive you are, because of the opposition parties out here, ZPM, are also saying that they are also strong and they are going to make from the government out here? Well, I have a full confidence that we will be able to form the government with an absolute majority.
Sir, almost all political pundits have predicted that it's going to be a hung assembly this time. How do you see your party from henceforth? Like, will you go into a coalition if required from the government? Well, it will not be a hung assembly. It will be an MNF government. I have a full confidence in that. Will BJP there as an alliance partner? BJP is not an alliance partner. NDA is there in the center. Here in the state, we don't have any alliance with BJP or any other party. Post-alliance, any chances, sir? From BJP, would you approach BJP? Should you need the help from BJP? So far, they have not approached us. We have not approached them. We are only a partner of the NDA in the center. Here in the state, we support the NDA even on issue-based only. All right, issue-based support, as Thanga said there. Let's return now to Chhattisgarh, where we spoke to former BJP Chief Minister in the state, Dr. Raman Singh, who said the party is going to return to power. I'm joined by Dr. Raman Singh, who's contesting here from Rajnandgaon, who's just finished praying. So what were your wishes and prayers today? आज हमने भगवान से काली माँ के दरबार में आया, शीश झुकाया और काली माँ से प्रार्थना किया कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सुशासन देगा और शांति और समृद्धि विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आपने पूरा कैंपेन किया पूरा छत्तीसगढ़ में और भी करेगा, आपका क्या मुद्दा है इस बार से लोग? मुद्दा विकास का मुद्दा है, भूपेश बघेल का करप्शन का मुद्दा है, विकास को रोकने का मुद्दा है। और इस बार are you sure that you will be able to get a better majority in Rajnandgaon? 100% राजनांदगांव ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और आप लीड करेगा छत्तीसगढ़? इस बार सर्वाधिक वोटों से राजनांदगांव में पिछले 3 चुनाव से ज्यादा वोट से जीतेंगे। और एक आप मुख्यमंत्री बनेगा सर इस बार? अब ये तय विधायक दल होगा। क्या सर? विधायक दल की बैठक में तय होगा। So here you have it from Dr. Raman Singh, a very categorical statement in terms of the fact that what are the issues, and he is made it very clear that it will ultimately be the BJP MLAs who will decide who will be the Chief Minister. With camera person Kanal Patra, Sunil Prabhu, NDTV. Well, let's go across now to Anurag, who joins us from a polling booth there in Dantewada. And Anurag, in this first phase of polling in Chhattisgarh, the 20 seats that are going to elections, 12 of them are in the Maoist area. These are tribal seats as well, and this is where the Congress managed to win 17 of the seats last time around, and they'll be hoping that they still hold that ground in this area. Yes, Gargi, but we moved quickly. Now we're inside the SP's office in Dantewada. Remember, Dantewada is the district where last time during Lok Sabha elections, the lone BJP legislator, Bhima Mandavi, was killed. Doordarshan crew was attacked in Nilavaya. And by and large, this time, the election process is peaceful. We are joined by the SP of Dantewada, Gaurav Rai. Gaurav ji, hopefully it's peaceful as of now. No untoward incident from any polling booths in your district? No, as of now, yes, the election process has been very peaceful. No untoward incidents has been reported as of now. Can you just tell us the preparations? About the preparations, how many companies of CRPF or other forces from other states? Yeah. In terms of preparation, I have Dantewada district has received 47 companies which has been deployed from outside the district, and rest 22 companies which were in situ. Total 69 companies has been deployed. Apart from this, we have our special forces, which is DRG, Buster Fighter, STF, CoBRA, Young Platoon. So they have also been deployed strategically. They have in fact been deployed 2 days back prior to the election process, so that the Naxals cannot hamper the election process, which is apart from this, as compared to 2018 election, we have been very concerned about our VIP movements, protective movements. So we have been continuously tracking them down, taking the intelligence input, so that no such incident can take place. So my last question is about when the polling party comes. We are really sorry for the disturbance, but when the polling party comes after conducting the elections, that is usually very challenging. So are you prepared? Yes, both induction and de-induction. And
more from induction, de-induction when the polling party comes, that becomes very challenging because it is very, very predictable. But yes, our preparation is up to the mark. I hope that no such incident take place, and we are very confident that we'll be able to handle if any such incident takes place. Also, I would like to say that as compared to 18 election, we had 21 polling stations that were shifted at that time, but this time we have reduced it by 67%, so that only 7 polling stations are remaining, which are being shifted. Otherwise, all the polling stations are being taken place at that same place. But there was some issues in your neighboring districts of Sukma. Some Naxal movement was there, and they also did some firing and all. Yeah, there is an input of IED blast wherein soldier has been injured, inspector has been injured. His medical care is being taken care of. We are getting the inputs and we are reacting accordingly. We as a buster. And there was also some firing in some polling booth in Sukma only. Yeah, that has not been confirmed yet because that is of another district. I cannot confirm. But in Dantewada, the election process till now has been very peaceful. Thank you for talking to NDTV. So, Gargi, in Dantewada election so far is peaceful, but this is the district where last time the lone BJP legislator, Bhima Mandavi was killed and the Doordarshan crew was also attacked. So, it's a very sensitive district, Gargi. Right, that's right, Anurag, and a challenge for the young officer there. Thank you so much for joining us and, getting us the officer talking about the security situation. Earlier, as Anurag said, he was at a polling booth and he managed to speak to some people there. He sent us this report. चुनाव के रंग हैं और छत्तीसगढ़ में दादा के साथ मैं उनकी मोपेड पे सवार हो गया हूँ बस्तर के इलाके में। दादा, आपका नाम क्या है? चेतन सिंह ठाकुर। चेतन सिंह ठाकुर, शंकर जी के मंदिर में हैं आप? हाँ जी, चित्रकूट शिव मंदिर में हूँ। अच्छा, तो ये बाल इतने सालों से क्यों बढ़ा है? कितने सालों से बढ़ा है पहले? ये मेरा 30-35 साल हो गया। 30-35 साल से कभी कटवाया ही नहीं? 3 बार कटवाया ना। मेरा बाप पिताजी खत्म हुआ, माँ खत्म हो गई। उतना समय संस्कार किया था ना इलाहाबाद में। अच्छा अच्छा। गया था पूरा इलाहाबाद, पूरी गंगा गोया सब ही गया था उधर। तो अभी परिवार में कितने लोग हैं आपके? अभी हम 7 लोग हैं। 7 लोग हैं? जी हाँ। और यहाँ शंकर जी के मंदिर में आप काम करते हैं? हाँ जी हाँ, मेरा 14 साल हुआ। अच्छा। घर से 14 साल वनवास निकल गया मैं। बाल को आप नाग देवता कहते हैं? हाँ जी हाँ। ये वैसी है ना, रंग रूप है, वेशभूषण है ना। अच्छा। हाँ, तो इसको मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होता है? बाल को बांधने में? नहीं, वो तो दिक्कत अपना शक्ति रहता है ना है उसके पास। अच्छा, ये शक्ति है आपका? हाँ। क्या शक्ति है इसमें? इसमें शक्ति है जाने का, रेंगने का, बोलने का, सबका सब देने का भी शक्ति है। मतलब पूरी ताकत आपके इन बालों में? हाँ, 3 बालों में। तो हम लोगों को भी पूजा करनी चाहिए? हाँ चाहिए ना, जब किस्मत वाले को मिलता है, जटनाल नहीं मिलता है बाबा जी। अच्छा। हाँ, साधु जो तपस्या करता है ना, 14 साल वनवास जाके तपस्या करता है ना, तब वो राम को मिलता है। जी, सही कह रहे हैं आप। तो पर ये जो तपस्या राजनीतिक चल रही है, चुनाव चल रहा है, तो यहाँ आपके लिए क्या मुद्दा है? क्या सोच के वोट देंगे? हम जमा वही सब साथ मिल के रहेंगे ना, साथ मिल के खाएंगे, साथ मिल के सब कार्यकर्ता करेंगे। यहाँ कुछ इधर उधर नहीं हो। जमा भक्त का रूप में, राम का रूप में, जब कंठ में राम है, इसका दुनिया में काम है। अच्छा, तो यहाँ पे तो कांग्रेस बीजेपी दोनों राम जी का नाम ले रही है। नहीं, दोनों बराबर ही है ना। दोनों बराबर है। वो दोनों बराबर हैं। किसको हीन करोगे? हीन किसी को नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये क्या कहते हैं, और क्या मुद्दा है यहाँ? सुरक्षा का, नक्सली है यहाँ, सड़क अच्छी नहीं है, ये सब मुद्दे हैं यहाँ पर। आपके लिए क्या मुद्दा है? नहीं, वो तो बनेगा ना, धीरे धीरे बनेगा ना, बनेगा। और बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बढ़िया, अस्पताल वगैरह सब है ना, सब है। चलिए, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जब पहले रमन सिंह आया ना हमारे बस्तर में, उतना समय से पूरा शांति है। अच्छा, शांति है? जी हाँ। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों को इतना वक्त दिया, इतना गरीब को पूरा शांति कर दिया ना बाबा। शांति कर दिया जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हम बाबा आपसे इजाजत चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ। तो हमारे कैमरा सहयोगी बाबा, आप एकदम आप बोल सकते हैं, आपका पूरा नाम एनडीटीवी के लिए। हाँ, मन और चैतन्य है, वही पूरा कर देगा ना। मन और चैतन्य एनडीटीवी के लिए। जी हाँ, बोलिए ना एनडीटीवी के लिए। एनडीटीवी के लिए बोलेंगे। मन और चैतन्य, मन और चैतन्य दोनों बोलेगा। मन को पहचानेगा, मन को बोले, चैतन्य बोलेगा। बहुत शुक्रिया। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात की, मन को पहचानिए, चैतन्य को बोलिए, वोट दीजिए, मतदान का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जय बाबा, खुशी।
All right, Anurag, getting a ride there and doing an interview at the same time. Now, Prime Minister Narendra Modi was also in Chhattisgarh. He was campaigning for the second phase of elections in the state, and he asked people to turn out in big numbers and cast their vote. We also spoke to Bhupesh Baghel, who said that he spoke about the benefits that have been promised to the people of the state. आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव भी हो रहा है और अब तक जो मुझे खबर मिली है बड़े उत्साह उमंग के साथ भारी मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि बिना डरे बिना हिचके मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र का उत्सव है, हर नागरिक का उत्सव है। आपको बोनस दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई में कोई शुल्क नहीं लगेगा। केजी टू पीजी पहली कक्षा से लेके अब पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपको पढ़ाई में कोई खर्च नहीं होगा। उसी प्रकार से 35 किलो राशन सभी परिवार को मिलेगा, चाहे एपीएल हो बीपीएल हो। 500 रुपया गैस सिलेंडर, जितने भी जिसके पास भी गैस कनेक्शन है, चाहे उज्ज्वला हो या दूसरे, सबको उसका लाभ मिलेगा। All right, with that, time for us to slip into a short break. On the other side, the Supreme Court and what it had to say on the Delhi pollution crisis, calling it a murder of people's health. We'll get you the details. A cup of hope. A cup of joy. Can India lift it at home after 12 years? We will follow their journey through the length and breadth of the country. Through every twists and turns. On Turning Point, on NDTV 24/7. Okay, so we're coming towards the end और ये है मेरा favorite section, guys. You know about it. It's Ask TG, जहाँ पे आपके सवाल होते हैं, मैं जवाब देता हूँ। तो let's see इस हफ्ते हमारे पास में क्या-क्या सवाल आए हैं, because I am ready with all my answers. Hi TG, which mobile brands should we buy to support PM Modi's Make in India initiative? Okay, I'll tell you something very honestly. Any phone in the market, when you see the label that it is made in India or assembled in India or something like that, go ahead, get it. That's my honest answer. आज अगर कोई फ़ोन बनता है इंडिया में तो हम देखते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स इंडिया से आते हैं, कुछ कंपोनेंट्स इंडिया के बाहर से भी आते हैं और हम विद टाइम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स इंडिया से आने शुरू हो जाएं. बट दिस नंबर is very difficult, you know, to go to 100% because ये बहुत ज़्यादा मुश्किल एक प्रोडक्ट है जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स काम में आते हैं. Sometimes the protocol might not be supported. Sometimes this USB port is not sufficient to give you a display output. तो आप उस केस में Chromecast को यूज़ कर सकते हैं to cast your screen. I would say that would be an easier option. And if you can give more details about the exact model of tab that you're using या फिर आप किस तरीके से रन करना चाह रहे हैं, I might give you some more information. But as of now, I would say not all devices have the ports designed the same way. Sometimes the functionality is limited. तो आप ज़रूरी नहीं है कि उस displays का output ले पाएँ बाहर. You can use a wireless solution that way. Hi, Technical Guruji. Is there any way at all to track my kids' smartphone usage? Yes, very easy and it's very important as well. आपको ये काम करना चाहिए. Any phone, iPhone हो या Android phone हो, सभी में आपको screen time का option मिल जाता है. अलग-अलग नाम से आपको मिलेगा. But yes, your phone has that option. You can not just track it, you can even
Welcome back. Very strong words from the Supreme Court on Delhi's air pollution crisis, saying air pollution in Delhi cannot become a political battle, the top court said, stressing that the choking air quality is responsible for the murder of people's health and that the burning of crop residue in neighboring Punjab and Haryana is a key factor behind the massive spike in Delhi's air pollution every winter. Let's go across to Arvind, who joins us for more. And Arvind, now there has to be a meeting that will take place between all the states. The cabinet secretary convening that meeting between, Punjab, Haryana, Rajasthan, UP, as well as Delhi, and the hearing in the court will be on Friday next? Yeah, Gagi, Supreme Court has directed that the stubble burning should be immediately stopped in Punjab and also in Haryana, and that's why Supreme Court has also said that the Union Cabinet Secretary should convene a meeting between the states of Punjab, Haryana, Rajasthan, UP, and also Delhi in order to control the stubble burning. And also Supreme Court has also made it very clear that the concerned SHO or the station house officer or the inspector should be held responsible if at all if there is any stubble burning, and wherever there is stubble burning, the administration should immediately act and then should prevent or should stop the stubble burning. That was the direction that was passed by the Supreme Court while hearing pleas over air pollution in the National Capital Region. And also Supreme Court has said that the Union Cabinet Secretary should convene the meeting tomorrow either physically or virtually, and all the 5 states should be in attendance in this meet, and that's where some of the decisions should be taken in order to control the air pollution in the National Capital Region. Along with that, Supreme Court has also said that though this is a short-term solution that the Supreme Court is giving, but also the centre and also Punjab government should come together to look for long-term solution in this particular case, because Punjab government has told Supreme Court that almost 31 lakh hectares is the paddy cultivation in the state of Punjab, and that's why Supreme Court taking note of the fact that almost 20% of the air pollution is caused due to the stubble burning in the state of Punjab, and that's why Supreme Court has asked Punjab and also central government to look into any other alternative crop that can be cultivated in the state of Punjab. That was long-term solution that the Supreme Court has given, but on short-term solution, Supreme Court has said that immediately all the stubble burning should be stopped. For that, a meeting has to be convened tomorrow, and Supreme Court will again hear the matter on Friday. All right. Thanks so much, Arvind, for joining us. So very key issue. And once again, the Supreme Court having to come in and, cut through all the politics that's taking place between Delhi and Punjab and Haryana over this issue of the pollution crisis and asking for the crop burning to be resolved. All right, Prime Minister Narendra Modi is in poll-bound Madhya Pradesh, where he's addressing a rally in Siddhi. Let's listen in. 2 लाख करोड़ रुपए कितने जरा माताएं बहनें बताइए कितने 2 लाख करोड़ रुपए। इससे 80 करोड़ देशवासियों को कोरोना के संकट काल से लेकर के अब तक मुफ्त राशन सुनिश्चित हुआ, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहा। ये मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मैंने निश्चय लिया है, मन बना लिया है, क्योंकि ये योजना मुफ्त राशन वाली दिसंबर महीने तक ही है। लेकिन मोदी तो आपके दिल की बात जानता है, और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना को आने वाले 5 साल के लिए बढ़ाने का निश्चय कर लिया है। अगर हम एक परिवार में 4-5 लोग भी मान लें, तो ऐसे हर परिवार को मुफ्त राशन योजना की वजह से हर महीने
700, 800, 900 रुपया बचने वाले हैं। साथियों, गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, गरीब के लिए खर्च हो और कोई बिचौलिया बीच में वो पैसे लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। अब आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की गारंटी कार्ड दिया है। अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों को बीमारी में अगर कोई खर्च की जरूरत होती तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया ये मेरे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार की जेब से जाता। वो पैसा बच गया। भाजपा सरकार ने देश में सस्ती दवाओं वाले 10,000 जन औषधि केंद्र भी खोले हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाइयां दी जा रही हैं। और इतनी बड़ी माताएं बहनें हैं, अगर कहीं पर भी बोर्ड लिखा है ना 10% डिस्काउंट, तो पहले वहीं लेने जाएगी। ऐसा ही होता है ना, साड़ी लेने जाएं और एक दुकान पर लिखा है 10% डिस्काउंट, तो चलो भाई उधर नहीं जाना है, पहले यहां जाएंगे। ये मोदी दवाई में 80% डिस्काउंट दे रहा है, 80%। और इससे भी गरीबों के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। और मेरे परिवारजनों, जब इलाज पर खर्च बचता है तो इसका मतलब सिर्फ पैसे की बचत होती है, ऐसा नहीं है। एक तो गरीब, और हमारे यहां तो हमने देखा है, परिवार में कोई मां कोई बहन बीमार हो जाए तो घर में किसी को पता ही नहीं चलने देती है। कितना ही दर्द होता हो, को काम करती रहती है, बताती नहीं है। क्यों? उसके मन में रहता है कि अगर परिवार में बच्चों को बीमारी का पता चल जाएगा, अस्पताल जाएंगे, लाखों रुपया खर्च हो जाएगा, बच्चों के सर पे कर्ज चढ़ जाएगा, तो मां सोचती है कि मुझे बच्चों के सर पे कर्ज नहीं होने देना है। भगवान जितने दिन जिंदा रखेगा रह लूंगी, मुसीबत झेल लूंगी, दवाई भले ना हो लेकिन बच्चों को मुसीबत में नहीं डालूंगा। ये मेरे देश की माताओं बहनों का स्वभाव है। लेकिन मेरी माताएं बहनें, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है, वो आपकी पीड़ा को समझता है। मेरी कोई मां, कोई बहन बीमारी झेलती झेलती जिंदगी काटे, ये उसका बेटा सह नहीं सकता। और इसलिए आयुष्मान योजना से सिर्फ पैसे बचते ऐसा नहीं, पूरा परिवार बच जाता है। परिवार के सपने फिर से जिंदा हो जाते हैं। परिवार फिर एक बार खुशहाल हो जाता है, नई जिंदगी जीना शुरू कर देता है। साथियों, देश भर के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिले, ये गारंटी भी मोदी ने दी है। पीएम आवास की इस योजना पर ही अभी तक 4 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है।
आंकड़ा याद रहेगा आपको? कितना? जरा बोलना पड़ेगा भाई। कितना? इधर वाले बोलो ना, कितना? जो पत्रकार है उनको बोलने की जरूरत है, वो तो लिख लेंगे। जो पत्रकार नहीं है वो बोले। कितना? 4 लाख करोड़ रुपया। लोग राम मंदिर बन रहा है उसकी तो चर्चा कर रही है, 4 करोड़ लोगों के घर भी बन रहे हैं दोस्तों। लाखों करोड़ खर्च करके घर बन रहे हैं। शौचालय हो, उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन हो, इस पर भी हजारों करोड़ रुपयों का निवेश सरकार ने किया है। हाल में उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपया तक सस्ता कर दिया गया है। यानी हमने गरीबों को सुविधाएं भी दी है और उनका पैसा भी बचाया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का इतिहास डगर डगर पे झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और बिल्कुल चेहरे पर कोई असर ही नहीं, इतना आराम से झूठ बोल लेते हैं। उन्होंने गरीबों से जितना झूठ बोला है ना पिछले 50-60 साल में, आप कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस ने गरीबों से झूठ बोला, महिलाओं से झूठ बोला, नौजवानों से झूठ बोला। कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी के वादे किए। झूठ बोलने की हिम्मत देखिए इनकी। और उनको लगता है देश की जनता पहले की तरह ऐसी है, भली बोली है। अब तो मेरे देश का नौजवान जाग चुका है, उसके मोबाइल में सारी जानकारियां होती है। वो परिवार को कहता है ये कांग्रेस वाले झूठे हैं। भाइयों बहनों, आज भी कांग्रेस यही कर रही है। इन लोगों ने 5 साल पहले 2018 में कहा था 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, लेकिन 15 महीने में भी उनको सरकार से चलाने का मौका मिला, कुछ भी नहीं किया। वहीं घर पे जाके तुम गूगल कर लो, मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो। यू नो, दिस इज समथिंग दैट वी डू ऑन अ डेली बेसिस। मतलब हम सभी गूगल यूज करते हैं, हम सभी विकिपीडिया भी यूज करते हैं, बट डिड यू नो कि गूगल एक्चुअल में गूगल नहीं होना चाहिए था, वो होता गूगल। वहां से एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से गूगल बन गया। अब हुआ ये, यू नो, जब स्टार्ट हुआ पूरा गूगल का आइडिया, आई टोल्ड यू पहले के एपिसोड में दैट द फर्स्ट नेम वाज बैकरब। अब बैकरब से नाम जब चेंज करना था तो द फाउंडर्स ऑफ गूगल, लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू टर्म, और उनको एक टर्म मिलती है गूगल। गूगल का मतलब क्या होता है इन मैथमेटिक्स? इट्स 1 नंबर 1 फॉलोड बाय 100 zeros। तो आइडिया ये था कि अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम एक साथ दिखाने वाले हैं, इट नो क्लियरली सिग्निफाइज द वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तो वहां से दिमाग में वर्ड आ गया गूगल। लेकिन जब डोमेन खरीदने गए तो उस टाइम पे गलती से GOOGOL की जगह GLE टाइप हो गया, और वहां से बना गूगल, जो आज हम सभी डेली बेसिस पे यूज करते हैं। बट डिड यू नो it was a spelling mistake that ended us with Google. A debate has many facets, perhaps no one right answer. Left, right and center. Conversations that get to the core of the debate. And there's too much talking but very little being said. Too many voices but hardly any being heard. You turn to a show that puts you front and center. A show that headlines the stories of the people, by the people, for the people. From breaking news to in-depth analysis,
covering the latest developments across politics, business and technology, bringing you stories that shape our nation and the world. अक्सर ऐसा होता है कि आपके फोन के स्क्रीन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. मे बी यू आर ऑन अ वेब पेज, या मे बी यू आर रीडिंग अ बुक, लेट्स से, या अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, कई बार बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. समटाइम्स इट्स दिस लेजी फीलिंग, या समटाइम्स इट्स मोर कन्वीनियंट कि अगर कोई आपको वो सब चीज़ें पढ़ के सुना दे. लेट मी गिव यू अ टेक टिप. आपके फ़ोन में एक इनबिल्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू स्पीच का. Either you are using Android or iOS, फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा. You just need to dig deep into the accessibility settings और वहाँ से you can even customize the output speech options कि आपको किस स्पीड में वो स्पीच चाहिए, या फिर किस टाइप की आपको वॉइस चाहिए, और आप बड़े आराम से जो भी आपके स्क्रीन पे है वो सुन सकते हैं. Text to speech is a feature that reads digital text aloud. Words on a computer or other digital device can be converted into audio using this. कभी कभी ये आलस के मारे आप करेंगे, कभी कभी ये करेंगे आप कन्वीनियंस के मामले में, बट इट्स अ नाइस टिप टू फॉलो कि आप आपके स्क्रीन पे जो भी है वो सुन भी सकते हैं, बिकॉज व्हाट यू आर यूजिंग इज नॉट अ डम फोन, इट्स अ स्मार्टफोन, सो मेक यूज ऑफ इट. Welcome back. Let's get to the latest on the Israel-Gaza war. And Gaza authorities say over 10,000 people have died so far, 4,000 of them children. The UN Security Council has once again failed to agree on a resolution on the Israel-Hamas war. As we mentioned, 10,000 people have died since it began 4 weeks ago, on the 7th of October. NDTV's Parmeshwar takes us through the latest developments and also what the UN had to say. We talked about humanitarian pauses, and we're interested in pursuing language on that score, but there are disagreements within the Council about whether that's acceptable. We call for an urgent humanitarian ceasefire. The Secretary General just made the same call this morning, a humanitarian ceasefire now. Israel may govern Gaza for an indefinite period after this war ends. This is what Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has suggested. In fact, asked in an interview with US broadcaster ABC who should govern the territory after the war ends, the Israeli Prime Minister said he actually suggested Israel could have the overall security responsibility for an indefinite period. Netanyahu claimed when we don't have that security responsibility, what we have is the eruption of Hamas terror on a scale that we couldn't imagine. I'm quoting him here in an interview with US broadcaster ABC. Now, US President Joe Biden had previously said it would be a mistake for Israel to occupy Gaza, while last month the Israeli defense minister had said one key objective of the military campaign was to sever Israel's responsibility for life in the Gaza Strip. This, as Netanyahu has once again rejected the idea of a ceasefire in Gaza unless hostages are released, but suggested a series of tactical little pauses may be possible. Israeli forces meanwhile said they had severed northern Gaza from the rest of the besieged territory and pounded it with intense airstrikes just yesterday, setting the stage for an expected push into the dense confines of Gaza City and an even bloodier phase of the month-old war. As we speak, more than 10,000 Palestinians have been killed by Israeli military action in Gaza, according to figures released by the health authority within the territory. And the total number of deaths now stands at 10,022, which much to our dismay actually includes 4,104 children. The UN chief has warned that Gaza is becoming a graveyard for children, and the need for a humanitarian ceasefire becomes more urgent with every passing hour. The Israel Defense Forces has said it is carrying out airstrikes against sites belonging to Hezbollah, meanwhile, in southern Lebanon. And Prime Minister Modi had spoken to the Iranian president over the telephone just yesterday, where both leaders had exchanged views on the difficult situation in West Asian region and the Israel-Hamas war as well. Now, over the past few days, Mr. Modi has spoken with the leaders of Israel, Jordan, Egypt,
the United Kingdom and the UAE to discuss this ongoing situation in West Asia. The Prime Minister had first spoken with the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to reiterate solidarity with the Israelis back in October, on the 10th of October to be precise. But unlike most countries in the global south, India has refrained from explicitly advocating for a ceasefire up to this point. However, the mention of an early resolution has appeared to signify a shift towards that position of ours. And finally, election news from Madhya Pradesh. We leave you with this report on the campaign trail with former Indore Mayor Kailash Vijayvargiya, who is fighting this election. The BJP is going all out in these elections in Madhya Pradesh. 3 union ministers, 4 MPs and a party general secretary have all been fielded as candidates. I am in Indore and I am now in conversation with Kailash Vijayvargiya. Kailash ji, क्या माहौल है? आप देख लीजिए माहौल क्या है. लोग बहुत प्यार करते हैं. इंदौर में मैंने काम किया है. इस मोहल्ले में भी जब मेयर था जब काम किया है. तो लोगों को विश्वास है कि काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया. मोदी जी के प्रति लोगों का अगाध विश्वास है. बंगाल में चुनाव लड़ा रहे थे, अब खुद लड़ रहे हैं यहाँ पर. पार्टी के आदेश का पालन करना है हमें. तो पार्टी ने कह दिया लड़ना है तो लड़ने लगे और लड़ने के साथ लड़वा भी रहा हूँ. रोज़ दिन में 4-5 सभाएं करता हूँ बाहर जाके. शाम को आता हूँ फिर अपने क्षेत्र में घूमता हूँ. और बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है. इसको कैसे टैकल करेगी भाजपा? हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, लोगों को रोजगार दिया. इंदौर में हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया. TCS कंपनी लाए हम, इन्फोसिस कंपनी लाए हम, सोर IT कंपनी लाए और इसलिए यहाँ पर हमने बहुत विकास किया है. फार्मास्यूटिकल कंपनी कम से कम हम 100 लाए यहाँ पर, जिसमें यहाँ के कम से कम 25,000 लोग काम करते हैं. तो बहुत काम किया है सरकार ने. और मैं खाली एक आंकड़ा बताता हूँ कि मैं उद्योग मंत्री था 2008 में, जब हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ मात्र 3% था, 4%, आज 24%. हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े. लाइट की जगमग देख रहे हैं आप. मैं ऊर्जा मंत्री था जब हमारा उत्पादन 5,000 मेगावाट था, आज 28,000 मेगावाट है. हर खेत में हमने बिजली पहुंचाई, हर खेत में हमने पानी पहुंचाया. 7 लाख हेक्टर में सिर्फ सिंचाई होती थी, आज होती है 45 लाख हेक्टर में. हमने सिंचाई के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाया. पर कैपिटा मध्य प्रदेश के किसानों की इनकम बढ़ी है. 18 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन इस बार चुनाव में कलेक्टिव लीडरशिप है. और अभी एक नारा मैंने सुना, आपके नाम पर भी था कि मुख्यमंत्री आप बनिए. देखिए, ये तो कार्यकर्ता हैं, नारे लगाते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं. बाकी आप जानते हैं हमारी पार्टी की पॉलिसी, हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है. विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा, फिर वह पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा, उसका नाम लगेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा. इसलिए हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा गणित करने की आवश्यकता नहीं है. बिल्कुल साफ है. इंटरनल डेमोक्रेसी, विधायक दल नेता चुनेगा और नेता वही मुख्यमंत्री बनेगा. 3 तारीख को क्या होगा, नंबर बताइए. भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. 150 से 160 सीट के बीच में सीटें आएंगी. चलिए हम 3 तारीख को फिर से आपसे बात करेंगे. थैंक यू. This show isn't just about news from the southern states. It's one that looks at the rest of India and the world from a diverse South India point of view, because NDTV has always taken the southern view seriously. The Southern View with Veera Raghav, only on NDTV 24/7. NDTV for news you can trust. No sensationalism, no ugly debates, no agenda. We strive to be transparent and unbiased in our reporting so you can get news that you can rely on. That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt. And that's how I like to roll. टेक्नोलॉजी तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ एनडीटीवी नेटवर्क पे, हर रोज हर हफ्ते, अब आपके और पास. Go beyond the now. When it comes to sports,
we set the ball rolling. Because we have our eyes on the ball. Because we want to get you the best. Latest updates, Top interviews and analysis from around the globe. Election in 5 states, 679 seats, over 16 crore voters. A crucial semi-final before 2024. NDTV brings you the politics, the promises, the stories and backstories, every twist and turn of 5 high-stake battles. When it comes to elections, India trusts NDTV. फ्रेंड्स इन दिस सेगमेंट मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं अबाउट योर गैजेट्स. यू नो योर डिवाइस माइट बी एक्सपोज टू सम क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज जिसके बाद में आपका डेटा, आपका इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करके रखा है उस फोन में, वो सब गलत हाथों में जा सकता है. अभी ऐसा ही कुछ हुआ व्हेन द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम फॉर इंडिया एक एडवाइजरी इशू करती है एंड वो बताती है कि मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड, टॉकिंग अबाउट एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 12L एंड साथ में एंड्रॉयड 13 भी, ये कुछ क्रिटिकल इश्यूज को पोज कर रहे हैं. देयर आर सम मेजर सिक्योरिटी फ्लॉज और इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि गूगल एक अपडेट इशू करेगा और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बाद में उस अपडेट को अपने अपने डिवाइसेस में पुश करेंगे एंड आपके पास जब वो अपडेट आए तो आपको उसे इंस्टॉल करना है. और आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके फ़ोन का जो डेटा है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने फ़ोन में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है वो कहीं गलत हाथों में चला जाए, कोई आपके फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल कर ले, कोई एक मलिशियस ऐप आपके फ़ोन में आ जाए. तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए द फर्स्ट स्टेप that you can do and you have to do is to update your devices. So make sure आज के बाद keep it like a regular habit. Once in a while, sometimes तो आपको notification खुद से मिल जाएगा, but if it doesn't come, once in a while, every 15-20 days, normally just check for updates for all your devices. For example, if you have a camera, अब आपने एक बार एक कैमरा खरीदा है जो 2 साल आपको हो चुके हैं उसको खरीदे हुए और आप 2 साल से इस कैमरा को यूज़ कर रहे हैं and you're just using it like normal. यू नेवर नो, क्या पता उसके लिए एक नया फर्मवेयर अवेलेबल हो जहाँ पे उस कैमरा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो गई हो, आपको उसके अंदर कुछ नए फीचर्स मिल गए हो. इफ यू जस्ट कनेक्ट दैट कैमरा विद कंप्यूटर एंड वहाँ पे अगर आप चेक करते हैं फॉर अ न्यू सॉफ्टवेयर, हो सकता है आपको एक नया सॉफ्टवेयर मिल जाए और आपके कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड हो जाएं. सो जस्ट एज अ नॉर्मल हैबिट, डू इट विद ऑल योर. This is NDTV and you're watching NDTV 24/7. In the first phase election of Chhattisgarh today, 20 of the 90 seats polling today, while in Mizoram, the votes in a single phase. It's a multi-cornered contest in the state. Bihar government to table caste survey data in the assembly. Insights into poverty, status of education expected. The Supreme Court slams state governments for politics over pollution, stressing that choking air quality is responsible for the murder of people's health. Schemes like odd even are mere optics, is what the Supreme Court has gone on to say. Will work from jail if needed, is what the Aam Aadmi Party has gone on to say, that Arvind Kejriwal will remain the Chief Minister even if he's arrested. We will hold cabinet meetings in jail if needed. And the latest from the Gaza Strip, and the death toll is now over 10,000 in the Gaza Strip, according to the government there. Over 4,000 are children who've been killed, and Netanyahu has gone on to say that Israel is open to little pauses in the war.
A very good afternoon. You're watching NDTV 24/7. I'm Divya Vadwa. Let's get to your top story. And voting is underway in the 5 state assembly elections today. Voting is taking place in 40 seats in Mizoram in a single phase and in 20 constituencies in Chhattisgarh's first phase. This marks the beginning of an excise bill as a virtual semi-final before the general elections. And we have, in fact, as far as the 20 assembly seats go to polls in Chhattisgarh, while Mizoram will vote for the 40-member assembly in a single phase today. 12 assembly seats of the Naxal-hit Bastar division are among the 20 constituencies where voting will be held. About 60,000 security personnel have been deployed for the smooth conduct of the polls in the sensitive areas. It's expected to be a close contest between the Congress and the BJP as both parties are trying to win the support of tribal voters. The Grand Old Party is banking on its legacy of welfare schemes and support for tribal rights, while the BJP is focusing on development and infrastructure. In 2018, the Congress won 17 of the 20 seats, while the BJP had won 2. The second phase of voting will take place on the 17th of November, while votes will be counted on the 3rd of December. In Mizoram, the contest is between the ruling Mizo National Front and the Zoram People's Movement. The Congress and the BJP, Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party, has also joined the race. In 2018, the MNF returned to power in Mizoram after a decade, defeating the Congress in its last bastion. This election, the MNF has contested the polls on its own, and the Chief Minister hitting out at the centre for its alleged mishandling of the violence in neighbouring Manipur. While the MNF, Congress and also the ZPM are contesting all 40 seats, the BJP has put up candidates in 23. And the Prime Minister put out a tweet saying, "I call upon the people of Mizoram to vote in record numbers. I particularly urge the young and the first-time voters to exercise their franchise and strengthen the festival of democracy," is what the Prime Minister has put out in a tweet, while urging people to come out in large numbers and vote, particularly the ones who are voting for the first time and the young. And so that's the latest, and of course this comes at a time where this is the first phase of voting as far as Chhattisgarh is concerned. My colleague in this big semi-final ahead of 2024 Lok Sabha polls, 2 of the 5 state elections have begun today, and my colleague Sunil Prabhu has in fact spoken with Raman Singh. Let's just listen in. I'm joined by Dr. Raman Singh, who's contesting here from Rajnandgaon, who's just finished praying. So what were your wishes and prayers today? आज हमने भगवान से काली माँ के दरबार में आया, शीश झुकाया और काली माँ से प्रार्थना किया कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सुशासन देगा और शांति और समृद्धि विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आपने पूरा कैंपेन किया पूरा छत्तीसगढ़ में और भी करेगा, आपका क्या मुद्दा है इस बार से? मुद्दा विकास का मुद्दा है, भूपेश बघेल का करप्शन का मुद्दा है, विकास को रोकने का मुद्दा है। और इस बार are you sure that you will be able to get a better majority in Rajnandgaon? 100% राजनांदगांव ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और आप लीड करेगा छत्तीसगढ़? इस बार सर्वाधिक वोटों से राजनांदगांव में पिछले 3 चुनाव से ज्यादा वोट से जीतेंगे। और एक आप मुख्यमंत्री बनेगा सर इस बार? अब ये तय विधायक दल होगा। क्या सर? विधायक दल की बैठक में तय होगा। So here you have it from Dr. Raman Singh, a very categorical statement in terms of the fact that what are the issues, and he is made it very clear that it will ultimately be the BJP MLAs who will decide who will be the Chief Minister. With camera person Kanal Patra, Sunil Prabhu, NDTV. And my colleague Anurag Dwari spoke with Dantewada's SP Gaurav Rai. Let's listen in. We moved quickly and now we're inside the SP's office in Dantewada. Remember, Dantewada is the district where last time during Lok Sabha elections, the lone BJP legislator Bhima Mandavi was killed. Doordarshan crew was attacked in Nilavaya, and by and large this time the election process is peaceful. We are joined by the SP of Dantewada, Gaurav Rai. Gaurav ji, hopefully it's peaceful as of now. No untoward incident from any polling booths in your district? No, as of now, yes, the election process has been very peaceful. No untoward incidents has been reported as of now. Can you just tell us the preparations? About the preparations, how many companies of CRPF or other forces from other states? Yeah.
In terms of preparation, I have Dantewada district has received 47 companies which has been deployed from outside the district, and rest 22 companies which were in situ. Total 69 companies has been deployed. Apart from this, we have our special forces, which is DRG, Buster Fighter, STF, CoBRA, Young Platoon. So they have also been deployed strategically. They have in fact been deployed 2 days